Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.
ആഘോഷിക്കുവാൻ 14 ടീമുകളുമായി 6 ദിവസത്തെ ക്രിക്കറ്റ് ഉത്സവത്തിന് വേണ്ടി മണ്ണംകുഴി മൈതാനത്തിന് മനോഹരമായി ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആവേശം, ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആനന്ദം, ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആഹ്ലാദം, ആരവങ്ങളെല്ലാം അണ്ടർ
എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓപ്പണർമാരായി ഷഫീഖ് ചൻ, മറുവശത്ത് ഐക്കോൺ താരം സന്തു ബണ്ടുവാൽ. രണ്ട് പ്രഗത്ഭ താരങ്ങളെ തന്നെയാണ് ബിച്ച് ബോയ്സ് കളത്തിലിറക്കിയതെങ്കിൽ ആദ്യ പന്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് മാത്രമാണ് MPL 10ാം പതിപ്പിൽ അവശേഷിക്കുന്നത്.
दोस्तों आए हुए सभी दर्शकों को स्वागत करना चाहता हूं एमपीएल 10वीं सीजन के लिए आए हुए सभी दर्शकों को और इस टूर्नामेंट में आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। और मेरे साथ कमेंटेटरों के रूप में डार्विन माइकल मौजूद है और उसी तरह प्रीतम कुंबला मौजूद है। स्कोर कार्ड पर, स्कोर बोर्ड पर, मैनुअल स्कोर बोर्ड पर हमारी एचएन फ्रेंड्स हिदायत नगर के सदस्य बाकी एचएन और इसी तरह डिजिटल स्कोरिंग पर महरूफ पीएम कलील, सभी को स्वागत करना चाहता हूं। और अंपायरों के रूप में हरीश पटेल और मोहन नैयारी मैदान पर मौजूद है। इसी तरह पहली ओवर के रूप में गेंदबाज भी तैयार हो चुके हैं। आइकॉन खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए तैयार हुए, तब स्ट्राइक पर आइकॉन खिलाड़ी दोनों दक्षिण कन्नड़ जिला की महत्वपूर्ण योगदान यहां पर एमपीएल सीजन 10वीं के लिए तैयारी होते हुए बहुत खूबसूरत योगदान के रूप में दिख रही है एमपीएल सीजन 10। और इस मैच को के आंखों की हाल लाइव टेलीकास्ट में देखने वाली सभी लोगों को स्वागत करना चाहता हूं। शाइन स्पोर्ट्स पुतुल के यूट्यूब के जरिए देखने वाले सभी लोगों को स्वागत करना चाहता हूं। रंजीत पहली ओवर के पहली गेंदे लेकर तैयार है बायर के कंबर ओडेन से। जमीन पर हल्के हल्के टपकाने के बाद रंजीत तैयार है। पहली गेंद को जाने दिए और एमपीएल के 10वीं सीजन की पहली स्कोर अतिरिक्त के खाते पर जोड़ा गया है। ऑप्शन के बिल्कुल बाहर थे, इस गेंद को जाने दिए, तब तक वाइड का इशारा किए। फिर एक बार रंजीत उन्हीं की शैली पर, बहुत खूबसूरत शैली के साथ इन्होंने शुरुआत ही करते हैं। देखिए जमीन पर टपकाने के बाद और विकेट बहुत खूबसूरत था। ये देखिए अंपायर की पैड पर टकराई, तब तक का निश्चित रूप में एक रन के लिए अवसर भी मिले हैं और इस एक रन की मदद से खाता खोल चुके हैं संतू बंटवाल। एक गेंदों पर 2 रन। अब आए हैं स्ट्राइक पर उपला की बादशाह यानी कि शफीक उपला स्ट्राइक पर आ चुके हैं बिच्छू बॉयज मन्नमकुझी के लिए रंजीत को सामना करने के लिए। दूर वाली चोट से विकेट जमीन पर टपकाने के बाद उन्हीं की शैली पर रंजीत फिर एक बार तैयारी करते हुए। अच्छी गेंद हवा पर गेंद है और इसी के साथ शफीक के विकेट के पतन, बिच्छू बॉयज के लिए पहली झटका। देखिए कितनी ऑप्शन के बिल्कुल बाहर से गेंद अंदर की तरफ घूम गई थी, जो गेंद की गति को जल्द समझ नहीं पाए शफीक ने। बिल्कुल सावधान के साथ इन्होंने बल्ले खींचे और सामना किए गेंद को। टॉप एज हुए सीधे मिड ऑफ सर्किल के अंदर फील्डर थे, उनके हाथ पर सुरक्षित थे और इसी के साथ विकेट पतन हुए हैं। फिर एक बार रंजीत तैयारी करते हुए 2 गेंदों पर 2 रन बटोर लिया गया है। 1 रन के साथ खाता खोले हैं संतू बंटवाल और शफीक 0 पर आउट हुए। अब नए बल्लेबाज के रूप में कुंबला की राजा यानी कि प्रदीप कुंबला नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। केएफसी कुंबला की योगदान है प्रदीप कुंबला, उनके लिए रंजीत को सामना करने के लिए मौका मिले हैं। रंजीत तैयार है उन्हीं की शैली पर और उठा करके ला है लोंगोन की तरह गेंद जाते हुए तेज रफ्तार से, तब तक फील्डर जाकर पहुंचे हैं। तब तक का 2 रन के इजाफा और इस 2 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 4 ऑन द बोर्ड। प्रदीप खाता खोल चुके हैं, संतू खाता खोल चुके हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में अगर अच्छी साझेदारी बन जाएंगी तब वो बिच्छू बॉयज के लिए बहुत खूबसूरत स्कोर बनने की इरादा है। अब तैयार है। चौथी बार रंजीत और चिकन ब्यूटीफुल डिलीवरी, अपील 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 अपील, लेकिन अपील को इनकार किए हैं मोहन यारी ने। आत्मविश्वास के साथ अपील किए थे लेकिन उतनी आत्मविश्वास नहीं थी जो अंपायर को। बिल्कुल अच्छी गेंद, प्रदीप तो देना पहर को पीछे की तरफ खींचे थे और सामना करने के लिए कोशिश किए। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क तो नहीं हुए मेरे ख्याल में। 4 गेंदों पर 4 रन। फिर एक बार दूर वाली चोट से विकेट अंपायर को कोशिश करते हुए तैयार है।
प्रदीप कुंबला के लिए ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, उठा रही है गेंद को, प्रदीप कुंबला के बल्ले से निकलता हुआ एमपीएल सीजन 10वीं की पहली छक्के, यहां पर टन छक्का। कुंबला की राजा यहां पर मन्नमकुझी की मैदान पर शुरुआत कर चुके हैं छक्के लगाकर। रंजीत तैयार है, फिर एक बार रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 10 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार रंजीत, फिर एक बार उठा दिए, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं थी। एक बॉल के बाद सीधा सीमारे के बाहर टन चौका। फिर एक बार देखिए कितनी शानदार कमबैक की है प्रदीप ने। 3 गेंदें सामना किए, 12 रन बनाकर खेल रही है। बिल्कुल अच्छी शुरुआती के साथ प्रदीप कुंबला। संतु 1 रन बनाकर खेल रही है, 12 रन बनाकर यहां पर खेलते हुए प्रदीप कुंबला भी। हिंदुस्तानी स्कूलन से गेंदबाजी में बदलाव दिख रही है, तो वो चम्मी वो संगाड़ी यानी कि कप्तान के योगदान दिख रही है गेंदबाजी में। हिंदुस्तानी एंड से, हिंदुस्तानी स्कूलन से गेंदबाजी करने के लिए मौका मिले। 14 ऑन द बोर्ड, 14 रन पर 1 विकेट। शफीक के विकेट पतन हुए। चम्मी वो संगाड़ी दुर्बाली चौसर ऑन द विकेट और उठाकर खेलने के प्रयास किए। उल्टा बल्ले के उपयोग करना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर सही संपर्क नहीं हुए। हरीश पटेल ने कह रहे कि पैड पर खेले हैं, इस वजह से 1 रन तो निश्चित रूप में मिले हैं। और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 15 ऑन द बोर्ड, 15 रन। अच्छी साझेदारी दिख रही है प्रदीप कुंबला और संतु बंटवाल के बीच में। अंडरआर्म क्रिकेट के कासरगोड जिला के प्रमुख खिलाड़ी हैं प्रदीप कुंबला, और इसी तरह दक्षिण कन्नड़ जिला के प्रमुख बल्लेबाज हैं संतु बंटवाल। फिर एक बार चम्मी अराउंड द विकेट। उल्टा बल्ले में खेलने के प्रयास किया, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थे गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को विकेट कीपर भी छोड़ दिया। तब तक हरीश पटेल ने कह रहे हैं कि वाइड +1 यानी कि 2 रन यहां पर फ्री में मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए 17 पर पहुंच चुके हैं, 17 रन पर। चम्मी सिर्फ एकमात्र गेंद पे के हैं। फिर एक बार दूरवाली चौसे अराउंड द विकेट। चम्मी और संगाड़ी उनको सामना करने के लिए संतु बंटवाल। संतु उठाकर खेले हैं, शॉर्ट फाइनल पर गेंद जाते हुए सीमा के बाहर, कोई मौका नहीं फील्डर को। टन चौका। संतु के बल्ले से निकलता हुआ जबरदस्त चौका निकले हैं। रनों की संख्या देखिए रेस की घोड़े के जैसी दौड़ रही है। 21 पर पहुंच चुके हैं, 21 रन पर। सिर्फ 2 मात्र गेंद पे के हैं चम्मी और संगाड़ी ने हिंदुस्तानी स्कूलन से गेंदबाजी करते हुए। फिर एक बार दूरवाली चौसर ऑन द विकेट। फिर एक बार फील्डर मौजूद है, स्क्वायर लेग पर फील्डर थे सर्किल के अंदर। उन्होंने गेंद को सही सलामत वापस दिए, तब तक कोई रन नहीं, कोई खतरा भी नहीं। फिर एक बार तैयारी करते हुए चम्मी व संगाड़ी संतु बंटवाल के लिए एकमात्र बाउंड्री लगाकर खेलते हुए। एक सिंगल भी मौजूद है उनके खाते पर। आप देखिए कितनी शानदार गेंद, उल्टा बल्ले पकड़े, जबरदस्त शॉट के लिए कोशिश किए, नो बॉल के इशारा किए। नो बॉल मतलब आने वाली गेंद तो बिल्कुल फ्री हिट, वो भी फ्री हिट के जैसे बल्लेबाज है प्रदीप कुंबला, उनके लिए मौका मिले हैं फ्री हिट को सामना करने के लिए। चम्मी व संगाड़ी फ्री हिट गेंद, प्रदीप कुंबला एक छक्के चौके एक डबल शामिल है उनके इनिंग्स में। 12 रन बनाकर खेलते हुए दूरवाली चौसर ऑन द विकेट। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। फ्री हिट में बहुत अच्छे कमबैक किए, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। रनों की संख्या अभी भी 23 ऑन द बोर्ड, 23 रन।
फिर एक बार तैयार है चिम्मी प्रदीप कुंबला के लिए अपनी शैली पर लंबे कदमों के साथ। बहुत अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। ये देखिए विकेट कीपर तो फ्री में एक रन दिए, नो सेकंड पर रन आउट करना चाहते थे लेकिन बढ़िया कदमों के इस्तेमाल कर रही थी चिम्मी, तब कुछ आगे निकले थे, वापस आ नहीं सके स्टंप के करीब, उस वजह से एक रन तो मिले। फिर एक बार दूर वाली चौसर ऑन द विकेट। इनती के सोच अच्छी थी, अगर मिले तो बड़े मछली, थ्रो किए थे इन्होंने, अच्छी गेंद, अपील हल्के आवाज से, तब अंपायर ने नकारा और लेग बाई के इशारा भी किए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। रनों की संख्या टोटल 25 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर। पावर प्ले खत्म हो चुके हैं, तब 25 रन यहां पर शुरुआत ही की है। लाजवाब शुरुआत है। शुरुआत में झटका जरूर मिले थे लेकिन कोई निराश नहीं दिखाए प्रदीप ने, कोई दबाव नहीं दिखाए प्रदीप और संतू ने, बहुत अच्छी साझेदारी। 2 रन पर पहले विकेट पतन हुए थे और उसके बाद 25 यानी कि 23 रन के साझेदारी, तो बहुत अच्छी साझेदारी दिख रही है। अब तीसरी ओवर के रूप में बायर कई कंबर उड़न से नए गेंदबाज की आगमन दिख रही है। रंजित कंटिन्यू जारी रखते हुए बहुत अच्छे ऑलराउंडर स्ट्राइक पर मौजूद है संतु बंटवाल और इसी तरह प्रदीप कुंबला विकेट कीपर कम बैट्समैन और दक्षिण कन्नड़ जिला के प्रमुख टीम के सदस्य और प्रमुख खिलाड़ी रंजित गेंदबाज के रूप में अपनी खोटे की दूसरी ओवर, एकमात्र खिलाड़ी को 2 ओवर फेंकने के लिए मौका मिलते हैं, रंजित ने इस्तेमाल कर रही है इस ओवर। रंजित तैयार, पावर प्ले हटा दिए, तब फील्डिंग में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। शॉर्ट लेग पर सर्कल के अंदर फील्डर थे, इनको शॉर्ट मिड विकेट पर लाया जा रही है और फाइनल लेग डीप में एक फील्डर को खड़े किए। वर्ड मिड विकेट में 6 खड़े हुए हैं, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है, लॉन्ग ऑफ है और स्ली मिड ऑफ और थर्ड मैन डीप है और बैकवर्ड है। फिर एक बार तैयार है दूर वाले छोर से रंजीत, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को सामना किया संतु बंटवाल और रंजीत एक दूसरे से जानने वाले खिलाड़ी हैं, एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं, अच्छे बुरे जानते हैं, दोनों सही सलामत खेले हैं, कोई जल्दबाजी नहीं की। 1 रन और इसी 1 रन के मध्य से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 26 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार दूर वाले छोर से वध विकेट। तैयार है रंजीत, प्रदीप कट करना चाहते थे गेंद को, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गए, अंपायर ने कहा कि अतिरिक्त गेंद है, कोई अच्छी गेंद नहीं थी, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गए, हल्के बल्ले से मुंह खोलना चाहते थे लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुए। रियाज बरपू गुड्डे स्वागत करना चाहता हूं दक्षिण कन्नड़ जिला से, यहां पर इस टूर्नामेंट को आनंद उठाने के लिए आए हैं। रियाज स्वागत जी, रियाज जी। अब तैयार 1 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 28 ऑन द बोर्ड। रंजीत तैयार है, तीसरी ओवर को सामना कर रही है। पहली ओवर के दूसरी गेंद पे झटका जरूर थे लेकिन उसके बाद व्हाट अ कमबैक प्रदीप कुंबला और संतू ने मिलकर। अब अगली गेंद रंजीत उल्टा बल्ले में प्रहार की है, तब फील्डर मौजूद, तीनों ने गेंद को तेजी के साथ वापस दिया, तब तक 1 रन और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 29 ऑन द बोर्ड। 29 रन पर पहुंच चुके हैं। तीसरी ओवर की मुकम्मल जा रही है। तीसरी ओवर की प्रगति पर एमपीएल सीजन 10 की पहली मैच आप देख रही है। ओवर द विकेट उठा रही है प्रदीप, फील्डर मौजूद और इसी के साथ प्रदीप की पारी समाप्त। फाइनल लेग पर बिल्कुल हवा की सहारा लेना चाहते थे लेकिन उतनी तेज हवा नहीं भी मिली और शॉट में उतनी दम भी नहीं थी, ताकत भी नहीं लगाए थे, हल्के बल्ले से मुंह खोले थे, घुमाए थे बल्ले को, लेकिन यहां पर बहुत बड़े पार्टनरशिप यहां पर टूट गई। ब्रेक थ्रू की बिल्कुल अवश्य थे, लेग ब्रेक गेंद के साथ इन्होंने बड़े शॉट के लिए कोशिश की, तब अपने आप को गवा दिया गया। 29 लॉस ऑफ 2 विकेट।
दरमा का सरगोड़ की आगमन दिख रही है। एमपीएल सीजन 10 पहली मैच आप देख रही है। बहुत खूबसूरत मैदान के कोने कोने में चमकते हुए अलग अलग मकानों की जो फ्लेक्स बोर्ड बहुत बड़े रंगीन बनाए हैं इस एमपीएल सीजन 10वीं को। बहुत खूबसूरत जो फ्लड लाइट के साथ डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट अभी अभी शुरुआत हुए हैं। आप देख रही है तीसरी ओवर फिर एक बार अपनी शैली में ओवर द विकेट धर्मा व्हाट ए डिलीवरी, लेकिन फील्डर के हाथ पर गेंद नहीं रुके हैं तब तक एक रन हासिल किए। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 30 ऑन द बोर्ड। रंजीत कम बैक तो बहुत अच्छी की इन्होंने, ब्रेक थ्रू लाए हैं इन्होंने अपनी टीम के लिए। बहुत खूबसूरत विकेट प्रदीप कुंबल आके। हारिफ जी स्वागत। हारिफ एचन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, कुछ ही दिनों के बाद उनको दिख रही है। अब तैयार है रंजीत, उल्टा बल्ले की कोशिश यहाँ पर पैड पर टकरा है मेरे ख्याल में। जी नहीं, विकेट कीपर ने छोड़ दिया। तब तक का एक रन बाई के रूप में स्ट्राइक अपने पास रखते हुए संतु बंटवाल। स्कोर इज 31 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन तो बिल्कुल बड़े स्कोर थे, लेकिन तीसरी ओवर में बहुत अच्छे कमबैक किए बायार के कम्बार उड़न से। गेंदबाजों के लिए बहुत बड़े खतरनाक जोन है, उस जोन से उन्होंने कितनी अच्छी वापसी लाए देखिए। अब हिंदुस्तानी स्कूल से नए गेंदबाज के इंतजार कर रही है। 3 ओवर समाप्त हुए हैं, 31 यानी कि 31 रन। बिल्कुल लाजवाब क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है एमपीएल सीजन 10। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के पीछे एक ही इंसान है, एकमात्र इंसान है ऑर्गेनाइजिंग में पूरी तरह बंदोबस्त करने में, हनीफ उम्मंगा। उस नाम सुनते ही जो मन्नमकुझी की नहीं, जो सारी अंडरआर्म क्रिकेट की याद आना चाहिए, क्योंकि उम्मंगा की समान उम्मंगा हनीफी है। अब तैयार है अपने, उनके सपना थे, उनके ड्रीम थे कुछ ही साल से ऐसे बहुत बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट लाना है। पिछले साल में 10 लाख के क्रिकेट टूर्नामेंट लाए थे, जीतने वाली टीम को 10 लाख रुपया इनाम दिए थे। इस बार देखिए 15 लाख, 15 लाख, 7 लाख, बहुत बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट। यहां पर इंटी की आगमन दिख रही है हिंदुस्तान स्कूल एंड से। ऑफ कटर, लेग कटर, कैरम, गूगली ऐसे मिक्सर गेंदबाज है। उनके सामने संतु बंटवाल दूर वाली चोट से मध्य विकेट अंपायर को कोशिश करते हुए तैयार है। बिच्छू बॉयज के सामने इंटी रक्षात्मक तरीके के साथ इस गेंद को सामना किया। तब तक शॉर्ट फाइन लग पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए। तब तक एक रन के मध्य से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 32 ऑन द बोर्ड। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब देख रही है चौथी ओवर पहले इनिंग्स की। अब तैयार है इंटी के सामने धर्मा, दूर वाली चोट से ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए। धर्मा का सरगोड़ कप्तान है बिच्छू बॉयज की, उनके सामने इंटी ओवर द विकेट। व्हाट ए डिलीवरी, देखिए कितनी शानदार गेंद थी, पैड पर हल्के टकराए तब विकेट कीपर के ग्लव्स पर नहीं रुके हैं। गेंद तो स्लिप मिड ऑफ पर गए। तब तक एक रन दौड़कर चोर बदल दिए, स्ट्राइक बदल दिए। संतु बंटवाल वापस स्ट्राइक पर आ चुके हैं। दूर वाली चोर से मध्य विकेट इंटी संतु बंटवाल के लिए अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है। ड्राम क्रिकेट में कंजूसी गेंदबाजी कहते हैं इनको। व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी। इंटी देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी कर रही है। 2 रन खर्च किए, एक तो लगबाई में, एक तो संतु बंटवाल के खाते पर है। 3 गेंदें फेंक चुके हैं, चौथी गेंद लेकर तैयार है। दूर वाली चोट से मध्य विकेट अंपायर को कोशिश करते हुए इंटी हिंदुस्तानी स्कूल से गेंदबाजी कर रही है। इनिंग्स की चौथी ओवर इंटी और स्टंप के बिल्कुल बाहर जाने दिए विकेट कीपर की तैनात पर। तब अंपायर कह रही कि दूर जाकर गिरे हैं, इस वजह से वाइड के करार दिया गया है। वाइड के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 34 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार इंटी उल्टा बल्ले में खेला गया है, जबरदस्त शॉट, AK-47 से निकलता हुआ गोली की तरह टन 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 बाउंड्री।
संतू बंटवाल के बल्ले से निकलता हुआ इनिंग्स की दूसरी बाउंड्री देखिए आप, लाजवाब चौका। गेंद के सामने करने पर कुछ शिक्षण उनके सामने मिले, इंतजार किए गेंद आने में, पूरी तरह शॉट पे डिलीवरी थी, उल्टा बल्ले में जबरदस्त शॉट। 38। फिर एक बार ओवर द विकेट। विकेट कीपर साथ नहीं दिए यहां पर, लेकिन कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। रनों की संख्या अभी भी 38। 1 मोर बॉल टू गो। आखिरी गेंदे बचे हैं। इंती अच्छी गेंदबाजी की मजारा करते हुए देखे, शानदार गेंदबाजी की है। एक डॉट बॉल पे के हैं, एक वाइड भी पे के हैं इन्होंने, एक चौका उल्टा बल्ले में खेला गए थे संतू बंटवाल ने। फिर एक बार ओवर द विकेट, उल्टा करे हैं, लेफ्ट हैंडर बने। ये है संतू बंटवाल। उल्टा खड़े होने में समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ उनके बल्ले से आने वाले हैं। लाजवाब शॉट, तुरंत लेफ्ट हैंडर बनने वाले बहुत कुछ लोग हैं दक्षिण कन्नड़ जिला में, समझ नहीं पाते हैं गेंदबाज कब घूम कर खड़े होंगे, कब लेफ्ट हैंडर बन जाएंगे, कब राइट हैंडर बनेंगे, ये तो कोई भी नहीं जानते हैं। देखिए संतू बंटवाल, कुछ ही सालों से उनके खेल देख रही है, किसी को भी जल्दी समझ नहीं पाते हैं। 6 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 44 ऑन द बोर्ड। 44 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। 11 की प्रतिशत यहां पर रन बने हैं। रंजीत के तीसरी ओवर बिल्कुल अच्छी ऑप्सी लाए थे, लेकिन इंती की चौथी ओवर में हिंदुस्तानी स्कूल एंड से गेंदबाजी किए थे, एक छक्के चौके लगाए थे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर 44 ऑन द बोर्ड। അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറ, ക്ഷമിക്കുക, BSC ബപ്പായി തൊട്ടി, RK സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എച്ചൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ. RK സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മുളിയെടുക്ക വേഴ്സസ് എച്ചൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് അടുത്ത മത്സരം. തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 44-ന് 2 വിക്കറ്റ്. മികച്ച കൂട്ടുകെട്ടുമായി ധർമ്മൽ കാസർഗോഡ് എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ, അതേപോലെ സന്തു ബंटवाल എന്ന ഐക്കോൺ താരം ബിച്ചു ബോയ്സിന് ഇവിടെ മികച്ച രീതിയിൽ ബാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. दोस्तों 5वीं ओवर यहाँ पर अजय पीरियड का उनको योगदान मिले हैं 5वें ओवर के रूप में। दुर्बाले 14 ओवर विकेट, अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। यहां पर रनों के लिए खतरा हो सकते थे, लेकिन उनके रडार पर स्टंप नहीं दिखे हैं, इस वजह से 1 रन के जगह पर 2 रन, वो भी लगबाई में, लगबाई के मसारा 2 रन तो मिले हैं फ्री में। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 46 ऑन द बोर्ड, 46 रन। फिर एक बार धर्मा के लिए उठाकर के लिए हैं, मिड विकेट पर गेंद जाते हुए तेज रफ्तार से वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ वापस दिए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 47 ऑन द बोर्ड। अजय अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं संतू बंटवाल के लिए, जो पिछले ओवर में इनके बल्लेबाजी तो देखे हैं, खतरनाक शॉट के लिए हैं 2 भी, एक चौके एक छक्के लगाए थे इंती फुसोड को सामना करते हुए। फिर एक बार अजय पीरियड का गली में फील्डर लाए और थर्डमैन सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद है और गली पे फील्डर मौजूद है, स्लिम मिड ऑफ है। फिर एक बार कट करना चाहते थे, गेंद तो सीधे विकेट कीपर के पीछे की तरफ गए हैं, तब तक अंपायर ने कहा कि वाइड, वाइड +1। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 49, 1 शॉट 49 पर पहुंच चुके हैं। फिर एक बार ओवर द विकेट और इस गेंद को उठा करके लहे मिड विकेट की तरफ गेंद जाते हुए फील्डर मौजूद, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक दूसरी रन, व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट, संतू बंटवाल और धर्मा 1 शॉट, फिर भी 50 रन पूरा हो चुके हैं। 1 रन कम दौड़े हैं संतू,
लेकिन अंपायर के रडार पर देखे हैं तब अंपायर ने कहा कि 1 रन कम दौड़े हैं, 50 रन पूरा हो चुके हैं बिच्छू बॉयज के। फिर एक बार दूर वाले 64 विकेट अजय पेरेड का, उनके सामना करते हुए धर्मा। और अच्छी गेंद उठा करके लहे लॉन्ग ऑन के तरफ गेंद जाते हुए फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाया, तब तक 1 रन, 51 ऑन द बोर्ड। अजय अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार है संतू बंटवाल के लिए। संतू बंटवाल ओपनिंग बैट्समैन, आरंभिक खिलाड़ी है। यहां पर देखिए वाइड, फिर एक बार बहुत बड़े वाइड +1 रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 53 ऑन द बोर्ड, 53 रन पर पहुंच चुके हैं अजय। फिर एक बार तैयारी करते हुए धर्मा का रिकॉर्ड के लिए अच्छी गेंद उठा करके ले हैं, मिड विकेट पर गेंद जाते हुए चमी मौजूद है, एक ही हाथ पर गेंद उठाए और रन के लिए खतरा, लेकिन थ्रो फेंकने में कुछ देर हुए, उस वजह से दूसरे रन के लिए यहां पर मौका भी मिले है। देखिए कितने साल से उनके बल्लेबाजी देख रहा हूं, अभी भी उनके जो रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज है। संतू बंटवाल धर्मा का सरगोर, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। फिर एक बार तैयार है और इस गेंद को भी खेला गया है, लॉन्ग ऑन पर गेंद गई, तब तक हल्के से चकमा का है फील्डर ने, 2 रन आसानी के साथ, और 2 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 57 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5। आखिरी ओवर भी बचे हैं। संतू बंटवाल काफी थक चुके हैं मेरे ख्याल में, जो अपनी डकआउट की तरफ मुड़कर देखते हुए इन्होंने पानी मांग रहे हैं। 12वां खिलाड़ी पानी लेकर जा रही है। अब दिख रही है एमपीएल सीजन 10, जूनियर उमंगा आए हैं मैदान पर, और इसी तरह इस मैच के आनंद उठाते हुए बहुत कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं। निसार पिचिंगला आखिरी ओवर के रूप में गेंदबाजी के लिए तैयारी करते हुए, हिंदुस्तानी स्कूलन से इनको मुकाबले हैं गेंदबाजी के लिए। संतू बंटवाल स्ट्राइक पर मौजूद है, नो स्ट्राइक पर धर्मा, सिर्फ 2 मात्र विकेट गवा दिए हैं बिच्छू बॉयज में। पहली विकेट तो जल्द पतन हुए थे शफीक उपला, और दूसरी विकेट अच्छी पार्टनरशिप के बाद प्रदीप कुंबला के विकेट पतन हुए। अब तो संतू बंटवाल के लिए फील्डर रखे हैं गली डीप में, और स्क्वायर लेग बॉर्डर के करीब है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है। पहली गेंद निजार, अच्छी गेंद उठा करके ले हैं, हेलीकॉप्टर शैली में शॉट के ले हैं, तब तक डायरेक्ट हिट और अपील, जबरदस्त अपील किए थे अंपायर ने, तीसरे अंपायर के मदद मांगे। नोट आउट के इशारा,
Thank you very much, Abdurrahman Bekur, the voice of Anram Cricket. Thank you for making this tournament standard one in the starting session with your fabulous voice. And we are running the first innings of MPL 10, a fabulous cricket tournament. Exceptional energy radiating the front line. You have seen Shafiq Etchen, the Badshah of Uppala, gone in the very first ball without scoring, and here is another wicket. Dharma, the very well settled batter, is going back. In the tail end of the innings, the captain of Bichu Boys Mannamkuzhi is whacking back. On the other side, what a controlled cricket that showcasing by Sandhu Bandwal, the genius from Mangalore, just making the innings. He's on 22 from 17, including 2 boundaries and 1 6. And here comes the last one from the innings. Sandhu Bandwal on strike. Steps it down the ground and plays it that one nicely. Not gets the right connection, but he wanted second. Excellent replay on the other side by Sachin Periodika. Couple of runs completed by the batters, and that's the end of the innings number 1. The innings avasanikkunnu. A decent score that built by the team Bichu Boys Mannamkuzhi. 65 runs on card in the end of first innings, and 66 is a target for the team Alif Star Musodi. 65 റൺസുകൾ എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോർ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുകയാണ് ബിച്ചു ബോയ്സ് മണ്ണങ്കുഴി. മറുഭാഗത്ത് ടോസ് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഐക്കൺ പ്ലെയറുടെ കൃത്യമായ തുടക്കം ഷഫീഖിനെ റാഞ്ചിക്കൊണ്ട് ഇന്നിംഗ്സ് ആരംഭിക്കുന്നു. അതിഗംഭീരമായി ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ ഈ ഈവനിംഗിൽ they were end the innings number 1 with 65 runs, 66 to chase. We have seen 2 excellent over from Ranjit, the icon player. Grabbed 2 wickets by Ranjit. Fabulous bowling performance that showcased by the icon player. MPL 10 രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ കളിക്കേണ്ട RK സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മുളിയെടുക്ക HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ ഇരു ടീമുകളുടെയും കളിക്കാർ സൈനപ്പിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പിനുള്ള സമയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. RK സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മുളിയെടുക്ക ആൻഡ് HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ. Sign up time is started. I welcome the players from RK Strikers Muliadika and HN Friends Hidayat Nagar for the proceedings. അതിരുകളില്ലാതെ ആവേശം അലയടിക്കുന്ന കാസർഗോഡിന്റെ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ്, ദക്ഷിണ കർണാടകയുടെ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ്, ജനമനസ്സുകളിൽ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് ഒരു വികാരമാണെങ്കിൽ അത് മണ്ണങ്കുഴിയിൽ എന്നും ആവേശത്തിന്റെ തീജ്വാല കത്തിക്കുന്ന അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഉത്സവമാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയേറ്റം MPL സീസൺ 10 സെലക്ടഡ് മണ്ണങ്കുഴിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഉത്സവത്തിന്റെ പകൽ രാത്രി പൂരം. 6 ദിവസങ്ങൾ കാസർഗോഡിന്റെ കായിക മേഖലയിൽ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈസ് മണി 22 ലക്ഷം രൂപ എന്നത് സ്വപ്ന സമാനമായ ഒരു പ്രൈസ് മണി ഫൈനലിസ്റ്റുകൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന MPL സീസൺ 10. 14 ടീമുകൾ, പ്രഗത്ഭരായ കാസർഗോഡിന്റെ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് താര പ്രജാപതികൾ, ഒപ്പം മാംഗ്ലൂർ ദക്ഷിണ കർണാടക ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഐക്യൻ താരങ്ങളുമായി ടീമുകൾ കൊമ്പുകോർക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന പോരാട്ട വീര്യം തുളുമ്പുന്ന മണ്ണങ്കുഴിയുടെ മണ്ണിനെ പുകളം കൊള്ളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന 6 ദിനങ്ങൾ. Bichu Boys versus Alif Star Musodi, match number 1. Ladies and gentlemen, you are watching Shine Sports YouTube channel telecasting this event.
Warm welcome to the second innings of the match number 1. Double six, a fancy number to chase in 6 overs of second innings. All 6, they need some sixes. Here is the opening batters, Chammi and Mustafa. Captain comes straight away as a striker along with Mustafa. Chammi Hossangadi, Mustafa Miyapada. On the other side, Sachin Periodika, the man from Kasaragod, ready to start the bowling operation of Bichu boys. Oh, very well delivered the first ball. Nicely carrying the pace variation on the carpet by Sachin, started in super way. Just placed through the offside and off the mark straight away by Chammi Hossangadi. First run on the board for the team Alif Star Musodi while chasing the target of 66. Andram cricket extravaganza here in Mannamkuzhi. Absolutely eccentric vibe in the afternoon. Sandhu Bandwal was the huge run scorer, a contributor, was made the innings, and that's a typical tremendous lofted shot over the covers, and very well judged over there by Sandhu Bandwal. He just comes and grabs it nicely. Couple of runs comfortably completed by the batters of Alif Star Musodi. Good start for the openers. Good piece of a start, really good connection from both batters. Sachin once again directed nicely. There is Dharma inside the circle, having that one nicely, but there is plenty of time to complete a single between the wicket. A very good call and response by the batters. These two are played lot of tournament together and against, having a very good understand straight away. That showcasing by the openers of Alif Star Musodi. They were ready to making the innings. Lovely delivery straight back to the bowlers and cuts it that one really nice way by the bowling side. First dot ball, they demand some dot ball. Incredible cricketing action here in Mannamkuzhi. Crowds are coming slowly to the different parts of Kasaragod to entertain and exploring this cricket tournament. Oh, looks to be a tight, but in the end it's all safe and clear. Really good piece of a call from the senior. Chammi Hossangadi just completed. It was looks to be very tighty, but easy completed. Last ball of the over number 1. 5 balls in a fabulous way by Sachin. 5 runs on card as well. Last ball, plays it through the onside region. There is 2 fielders. Oh, little bit fumbles, my goodness. Just a casual effort from Dharma. Need a little bit attacking approach, but that cost 2 runs between the wicket. End of the over number 1. A special over from strike bowler Sachin comes to 1 and 7 without loss. You have seen a very good strategy by Alif Star Musodi, bringing left and right hand combination inside the power play. Chammi just started in a very conscious way. On the other side, Mustafa just opened the blade and ready to play a free license of game for the team Alif Star while chasing a big target. Good tactics, but Sachin, who just holds the nerve and complete the over in style while just allowing just 7. Here comes Dharma. Moving to the over number 2, Dharma, the captain, coming into the attack. On the other side, the captain of Alif Star, who is on the striker end for the team. Interesting start, a balancing start we can say here in Mannamkuzhi for the second innings. Dharma is ready to comes it over the wicket in front of the right hand, Chammi Hossangadi.
What a beauty of a delivery. It looks to be phenomenal pace, furiously fast Dharma special that implements straight away to bringing some extra bit of boost of confidence to the camp of Bichu boys. Absolute cricket at its level best here in Mannamkuzhi when all the time Sandra meets. Here is the man going back to load the action again. Chammi is just planning to making the innings. Chammi is a very, very experienced cricketer, a truckload of experience in Andram cricket by Chammi Osangadi. Batting genius, a mind-blowing hitter. On the other side, Dharma. That's a shot of authority. What a shot that is! Through the long of region, makes it powerfully. The wind was playing a slow way that reduced the power. In the end, just landed safely just in front of the boundary line. Couple of runs comfortably taken by Chammi Osangadi. Here comes Dharma. Not gets the right connection over there. This is perfect planning and execution from Dharma. Keeps it tight and away from Chammi and restrict that one. Previous one was in the slot of Chammi that was slotted out of the circle and he grabs two. But this time, what a way the man plans to execute away from the arc of Chammi. Dharma is the architect on that occasion. Here comes again. That's a shot down the ground and that's a big one. Looks to be phenomenal effort by the fielder but not saving the things inside the ground. It's a boundary for 4. First boundary from Alif Star Musodi. Chammi Osangadi, the king of sixes in Andram cricket. He was trying on to the straight region in consecutive time and this time he won the battle against Dharma. Captain versus captain is the competition right away in the middle. Chammi won on this occasion. Directed nicely from the seat part. When Chammi gets some timing perfection in the starting session, he is unstoppable. The story knows very well by all the Andram cricket lovers. Here comes Dharma. That's a shot. Wow, wow, majestic, magnificent. Over the main stage, absolutely fabulous by Chammi Osangadi into the mid-wicket fence. What a stroke it was. What an absolute connection from Chammi. 19 on card. One more ball to go from the over number second. 19 runs on card and Chammi just opened the face in the previous time and this time dispatched out of the mid-wicket while crossing the face of the bat. The man who just sitting in the driving seat of the game, making the innings in the starting session for Alif Star Musodi by the star Chammi. Moving to the last ball of the over. 19 runs is a productive runs by Alif Star Musodi. Absolutely a fabulous entertainment. Chammi is ready to clever cricket and straight to the fielder, tighty but no, it was easy, looks to be in the end for the batters of Alif Star Musodi. End of the over number second. A fruitful over this is for the batting side of Alif Star. 21 card. 20 റൺസുകളുമായി 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. പവർ പ്ലേ അത് ഗംഭീരമായി ചെമ്മി ഒസങ്കടി തന്റെ പതിവ് ശൈലിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുമായി അലിഫ് സ്റ്റാർ 66-നെ ചേസ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സിക്സർ അടിച്ചുകൊണ്ട് ആറുകളുടെ പടയോട്ടവുമായി അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിനെ ആവേശഭരിതമാക്കാൻ 2 ഡെക്കേഡുകളുടെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ചെമ്മി ഒസങ്കടിയുടെ ചിറകിലേറിക്കൊണ്ട് പവർ പ്ലേ ഡൺ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ബൈ ദ ടീം അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡി ഇൻ സ്റ്റൈൽ. .46 required in 24 balls of cricket.
യൂട്യൂബിലൂടെ കളി കാണുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് സ്കോറിംഗ് അത് കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ആപ്പിന്റെ ചെറിയൊരു ലാഗിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൂടെ സ്കോറിംഗ് തത്സമയം കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം we will solve it soon. 20 runs already on card after 2 overs, 46 required from next 4 overs. Naufal Cheragoli coming with the over number 3. That's a lovely stroke and lofted over there and one bounce and over the row for a boundary for 4. That's an exquisite timing by an exclusive Chenmi's type of stroke. Beautiful way the man picks up the length and very well placed over the infield and raises away towards the fence for a boundary. Absolutely well. Chammi just playing a counter attack of cricket here in front of Bichu boys, controlling everything. The traffic is really well controlling by Chammi inside the ground. Here comes the ball number 2. Straight down the ground, straight to the fielder in deep and just takes a single on this occasion. Much better one from Naufal Cheragoli on this occasion. But having all the complete domination by Chammi. Setting the right fielders in the right position. When the batting team gets a driving seat early, it's very difficult to set the field placement when Chammi is in 100 kilowatts of energy. Mustafa on strikers end on this occasion. Mustafa lofted shot, there is no field. Oh, Dharma comes close. My goodness, he was electric cook on the boundary line. It comes under it, but it's landed safely with a little bit of fingertips and gone for a boundary for 4. Such a superb start for this over by Alif Star Musodi. By both the right and left hand batters, Chammi Hossangadi and Mustafa Miyapadav. Both are making it superbly. It was the opportunity for sure. Drops it by the captain, feeling for it and making the changes in the field. 4-1-4, what a start for this over. That's a big one, appeal allowed and that's a surgical strike by the bowler. Naufal Cheragoli grabs a wicket, absolutely plumb right in front of the wicket, says by Harish Padil. Looks to be an easy one without taking any other. The man who just lofted his threaded finger into the sky of Mannamkuzhi, and that brings up the wicket of very well settled Mustafa. Is need to back. Well, what a scenery. What an incredible way the man is back and produced the breakthrough. 29 for the loss of 1 while chasing the target of 66. Mustafa is slowly walking with shaking the heads, but it was absolutely a gorgeous delivery from Naufal Cheragoli. ആദ്യ പന്തിൽ 4 റൺസ് ചെമ്മിയുടെ ബാറ്റിൽ നിന്ന്, മൂന്നാമത്തെ പന്തിൽ കൃത്യമായൊരു ബൗണ്ടറി പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള മുസ്തഫയുടെ ശ്രമം അതും വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പന്തിൽ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് Bichu boys, they were needed a much needed breakthrough, and the man Naufal Cheragoli brings the breakthrough with a wicket of Mustafa. Ranjit is coming. The icon player joining in the middle. The man from Karnataka. Lot of experience with the 2 batters of Alif Star Musodi. Straight away the new batter into the striker's end.
the right-hand all-rounder cricketer. Makes it all the way perfect. What a back by the bowler, Naufal Cheragoli. 2 more balls to go from this over. Oh, that's a beautiful way. The man taking the reverse action to find his first run. Right-hander just switches it nicely and making the run straight away off the mark with that single by Ranjit, the icon player from Alif Star Musodi. Moving to 30 runs and moving to the last ball of the over, number 3. Jimmy back to the striker's end. Gets an edge, oh, just past the wicket keeper. It was a half a chance, but quickly it passed, not giving any kind of chance to grab that one. Successful over for the bowling side. By Naufal Cheragoli grabs a wicket, but there is runs are producing in a fluency way by the team Alif Star. 31 on card after 3 overs. $35 required from next 3 overs. That's the target. The moon over half a stage. A balancing one looks to be in the middle of Mannamkuzhi, between Alif Star Musodi and Bichu Boys Mannamkuzhi. To huge fan base cricket club of Andram Cricket, the all dust face. And they were fighting to register the first victory of the historical, the mega an extravaganza of MPL season 10. What an initiative by Hanif Umanga and party. Selected Mannamkuzhi. They were ready to making a party in 6 days of complete extravaganza of Andram cricket. Looks to be a balancing one, I can say, right in the middle when we pass the 3rd over. 3 overs. Gets a wicket of the left-hander. Both right-handers are in the middle, taking their own time to discuss and make the plan. Harish Patel and Mohan Yadi, very experienced umpires, are controlling the first match of this MPL 10, Mannamkuzhi Premier League Edition 10. Here comes the captain, Dharma, with his 2nd over. You have seen his first over that produced 13, that makes excellent way by Chamio Sangadi, just produced some boundaries. And this time Dharma back into the attack. One bowler can bowl 2 and captain takes the attack. Comes again, and this time perfectly placed it, that one. Chami is very well aware of the field placement, and what a way the man directing. It was the delivery, keeps that one way outside from Chami's arc and nicely bats it by open the face of the bat. Very controlled cricket that showcasing by Chami. As we see, the man is so perfect and precision right in the middle while making the innings. The kind of innings that makes by Santu Bandwal in the previous innings, that was the opening innings of MPL, who stand and makes the score for the team Bichu Boys. The similar way, Chamio Sangadi doing the work, doing the party. Trying for a safe shot, not gets a right connection on this occasion by Ranjit. Is quickly moving between the wicket. Ranjit is electric quick when we watching him in between the wickets. Takes a first run quickly. There is no chance for coming back on this occasion. 2 singles to start this over.
Really good one for Dharma, the bowler. Here comes again. Ball number 3 of the over. Very well placed, just over the head of the bowler. Nicely takes a single. Little bit things are tightening by Dharma. With an exceptional line, keeping it away from the batter's arc. That's a very, very good strategy in the middle overs of this second innings. Dharma once again. Always love to comes it over the wicket in front of the right-handers. Lovely delivery, that's a fiery faster one from Dharma. Such a beauty of an execution at this occasion by Dharma. Making no excuse over there. Absolute marvelous. It looks ridiculous. A dot ball that gives lot of authority to coming back in the action for the team. Bichu boys Mannamkuzhi. Captain is making the scenes perfectly to coming back for the team Bichu boys. He is creating a way. Oh man, on this occasion, gone way outside the first extra, far away from the off stump. What a disciplinary bowling we have seen so far from the bowlers of Bichu boys. This is the first one, costing way outside the off stump. Nicely played, beats infield. Takes a single, looks to be a tighty process in this over by Dharma. The man making the noise. Absolutely well controlling, tightening all the screws and bolt of Mannamkuzhi to set a plan for Bichu boys. But Chemmi Hosangadi, the genius, standing on the other side. This looks cool as a cucumber in this hot afternoon of Mannamkuzhi. Easy way, but not gets the right timing, but they can coming back for second. Easy call and easy replay on the other side. 2 runs completed without any trouble by the batters. End of the over. Over number 4 completed. 38 on card. 2 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 28 വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 28 required for the victory from 2 overs of cricket. അടുത്ത മത്സരത്തിനുള്ള ടോസിന്റെ സമയമാണ്. I request the captain of RK Strikers മുണിയെടുക്ക and HN Friends Hidayat Nagar. Captains, please report for toss. Requesting the captain of HN Friends Hidayat Nagar, please join for the toss. Well, the match is traveling in an interesting way. It's all looks to be giving a favor to both the teams to get a chance to register a dream of MPL season 10. Everybody is loved to start with a victory, this kind of a big occasion. Bichu boys Mannamkuzhi versus Salif Star Musodi, expecting a nail-biting encounter. 2 overs, 28 required. Vinny is coming. Comes as a new batter, just gets an edge and gone past the wicket keeper. Protection there, Rashi Kapala. It was there in the deep. Inside the circle, just grabs a single by the batter. Ranjit is a strong reverse stroke player, but not get the right timing in consecutive time when he trying to play a reverse stroke. We need straight away won the battle in front of the batter. Chemmi Osangadi on strike. Important phase of the game you are watching.
Important dot ball. Every dot ball is just like a gold and diamond in this scenario. "39 runs on card. Vineet comes again. Coming with over the wicket in front of Chamia Sangadi. Lovely delivery, absolute cracker of a delivery on the track by Vineet, just exploring his variety of a rolling delivery, little bit cutter, that not giving any kind of chance to cut some runs for the team Alif Star. Absolute things are tightening by the bowlers in the Thailand. We have seen a tighty over from Dharma in the previous one, and this time Vineet, the man who started superbly. 2 runs മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു ആദ്യ 3 പന്തുകൾ വിനീത് ഈ ഓവറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. Here comes the ball number 4. Premeditated for the reverse stroke. Oh my goodness, that was gone just far away, but it was a very good plan from Vineet. Asking for the review. Wide is the call from the on-field umpire. Immediately review taken by the fielding side. It goes upstairs. റിവേഴ്സ് സ്ട്രോക്കിന് വേണ്ടി കൃത്യമായി ഒന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനോഹരമായി അത് ബാറ്ററുടെ ആർക്കിൽ നിന്ന് അകറ്റിയെറിയാനുള്ള വിനീതിന്റെ ആ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് എ വൈഡ്. ബട്ട് വി നീഡ് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. റിവ്യൂ ടേക്കൻ ബൈ ദ ഫീൽഡിംഗ് സൈഡ് ഓഫ് ബിച്ചു ബോയ്സ് മണ്ണങ്കുഴി. We are checking it, and Shine Sports YouTube channel 6 ദിവസത്തെ ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം തത്സമയമായി യൂട്യൂബിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Shine Sports, the team from Puttur. We are in the very important time of opening match. Wide, the confirmation from the third umpire. Yes, wide. The confirmation given by the third umpire. That means one more run. Always trying for a reverse attempt, but always making an absolute magic of deliveries by Vineet Kasaragod. Hitting on the very good surface, and that not giving any kind of chance to freeze the arm for the batter. Fantastic bowling. Just clicks that one from his pads, but there is a protection there. Coming back for second by the batters in an easy way. Doubles without any troubles, but there will be a huge piece of perfection that's showcasing by Vineet. 43 on card. 7 balls, 23 is a target. That's a lofted shot straight down the ground. Not clears the distance, but it's landed. Oh, very good footwork over there. That is a game-changing save from the field. Naufal Cherugoli, football valangamennu prakhyapikkunnu. Absolutely a thriller one to save over there. End of the over number 5. 45 for the loss of 1. Ladies and gentlemen, 21 required in the final 6 balls. 21 റൺസുകളുടെ ലക്ഷ്യമാണ് അവസാന 6 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡിക്ക് ബിച്ചു ബോയ്സ് മണ്ണങ്കുഴിക്കെതിരെ മത്സരം വിജയിക്കാൻ. ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരം അതിന്റെ അവസാന ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിലെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗുമായി നിറഞ്ഞു നിന്ന ചെമ്മിയ സംഘടിയെ സ്ട്രൈക്കർ എൻഡിൽ നിന്ന് വളരെ നേരം അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്ന ബിച്ചു ബോയ്സ് മണ്ണങ്കുഴിയുടെ മാസ്മരികമായ പ്ലാനിംഗ് അത് വർക്കാകുന്ന കാഴ്ചയുമായി മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു.
Siraj is coming with the final over of this thriller. What an exceptional game of cricket. In an extravaganza of Mannam Cricket Festival, MPL Season 10. 21 required in the final over. First ball, nicely ball. Looks to be a perfection. By the signal received, no connection on this occasion. Excellent start by Siraj. Just ready to make a noise. Unbelievable energy that radiates in the camp of bleeding blood. Off color by Bichu Boys Mannamkuzhi. Cleverly changes the length and Chemmi desperately wants a strike. Oh, throw it to the striker and it will be nothing there. Easy way Chemmi crossed between the wicket. That well allocated time is over. Need to stand. Need to stand one more fielder inside the ring. Innings എറിഞ്ഞു തീർക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിച്ചതായി അവരുടെ സിഗ്നൽ നമുക്ക് സൂചന നൽകുകയാണ്. One more fielder coming inside the ring. That will help the chasing side a lot. 4 balls of cricket, 19 required. Expecting a vintage Shammi or Sangadi type of innings by the team, Alif Star Musodi. Lovely delivery, that's an absolute perfection once again by Siraj, is not giving any kind of loophole to search. Well, it's gone past and finally hits on the stumps or what? No. It is all done by the batters. But what a delivery, what an impactful start that given by the extraordinary bowler who just holds a nerve and treating it really well by the very well settled Chemmi and Ranjit. 3 പന്തുകൾ 17 റൺസുകൾ. Game is still giving a chance. 1-6 will break the shackles. Shot, not gets the right power behind that stroke. It's sent into the hands of Sachin, who makes no mistakes over there. Fabulous piece of bowling by Siraj, who just making the entertainment. The dream for Bichu boys. They were started a long journey with a wonderful way. Chemmi Sangadi, who played an entertainment cricket in the starting session but not controlling in the end towards for Alif Star. But a very well controlled innings of Chemmi comes to an end, but in the end it's all working in favor of Bichu boys Mannamkuzhi. In just close game expected by the cricket lovers of Kasaragod. Now 2 balls of formalities that remain to close the encounter. Absolute magnificent piece of a bowling. What an exceptional piece with some fabulous control by Siraj, who just making it is superb on the track of Mannamkuzhi, that not giving any allowance to freeze the arm. Moving to the curtain falling delivery of the opening match of MPL Season 10. That's a rocket all the way out of the ground for 6 runs. They were reduced a little bit run margin with a typical shot towards the mid-wicket fence. But in the end, what a victory by the team. Bichu boys Mannamkuzhi started and they will register the victory with an unbelievable proud and pride. They were controlled in this track and making and register the first victory. Congratulations, Bichu boys. Better luck next time for the team Alif Star. You played really good fighting innings.
Ladies and gentlemen, good evening, and we are heading to the post-match presentation of MPL 10 opening match. It was a thriller between Bichu Boys versus Alif Star. Bichu Boys was scored as 65 runs of target, and they were defended it really well. And now I am requesting and welcoming Altaf, the team owner of RK Strikers Muliyadika. Please join to give away the player of the match award from the opening game. Snehathodugudi Altaf, team owner of RK Strikers Muliyadika, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് player of the match award സമ്മാനിക്കാൻ. And the player of the match award from the opening match goes to the icon player of Bichu Boys, Santu Bandwal. What an innings! A splendid knock in the first innings that gives a better score to fight for the team Bichu Boys. Welcome Santu Bandwal to receive the player of the match award from the opening match of the Cricket Carnival. MPL season 10 ആദ്യ മത്സരത്തിലെ player of the match award goes to Santu Bandwal. Icon from Bichu Boys, who registered its signature strokes of authority that produced a 65 runs of wonderful start in the first innings. Many congratulations. Bichu Boys done it really well, and they were defended it really well, and we are remembering and we are holding all the bowlers' effort, but the player of the match award in the end goes to Santu Bandwal. Congratulations. That's it from the opening match. Well, Bichu Boys മത്സരം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ Bashir Kodugoti, the sponsor, and there is a special award and also 2,000 cash award that offered by the team owner of 1,000 cash award for Santu Bandwal. Azhar Bichu Boys, the team owner, 1000 രൂപയുടെ ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസ് കൂടി പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് വിന്നറായ സന്തു ബണ്ട്വാളിന് സമ്മാനിക്കുകയാണ്. വിജയിക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ അത് ബിച്ചു ബോയ്സ് തനത് ശൈലിയിൽ ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പ്രകടന മികവിന് പ്രതിഫലം എന്നും നൽകിക്കൊണ്ട് പ്ലേയേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അസർ ബിച്ചു ബോയ്സ് is giving a prize money for Bichu Boys icon player Sandu receiving it. That's it from the presentation. Wonderful way we conclude the opening match. Good evening, ladies and gentlemen, once again, and we are moving to the match number 2. And there is a change in voice. Abdurrahman Bekur, who has started the match, and it's me, Darwin Michael, and we have one more young and energetic voice. It is Preetham from Kumbala. Welcome you. Good evening, Preetham. Yes, very good evening, Darwin Michael, and warm welcome for all of you gathered here in this particular tournament of 2026. That is MPL Season 10. We have completed the first match of MPL Season 10, and winner of that first match between Bichu Boys versus Alif Star Masodi. Bichu Boys plays very perfectly for their team, and they won the match of day number 1. Winner of first match, that is Bichu Boys Mannamkuzhi. Yes, we are moving towards the second match of day number 1. That is the match between RK Strikers Muliyadika takes HN Tigers here. RK Strikers HN Tigers are on the toss and elected to field first here. We have started this day with the voice of Abdul Rahman Ji Bekura. That is not only the voice of Kasaragod, it is international voice. All the fan followers throughout the all Tigers is having in Antram cricket that which gives goosebumps for the players, that which gives the strength, energy, strategy for the Antram player. That is very perfect voice of Antram. That is none other than Mr. Abdul Rahman Jibeku, the introduction voice of MPL Season 10. And we have another young man, young talent, that is Mr. Darwin Michael. We enjoyed a lot in this last second innings, which is analyzed by Mr. Darwin Michael here. Yes, we are moving towards the second match of
this MPL season 10. Very good strategy, very good setup, which is built by selected Mannamkuzhi. It is not just a game, it is a festival of Antam cricket. It is a festival for the people of Kasaragod. The people are gathering here for this wonderful stadium of Mannamkuzhi in this particular 27th of this day. And definitely we are going to enjoy this particular match between those teams. That is Arcade Strikers, Mulyarka versus HN Tigers. We have the openers, that is Atif Annam as well as Siddhakutan. The Atif icon player from the side of Arcade Strikers and Siddhakutan on the non-strikers end. Both the teams are having very good batting as well as bowling lineup. Yes, here we go. Here we go with the first over. The bowler, Mr. Harris on mark. The captain introduced the new bowler, Harris, with the bowling mark to bowl first over in the second match between those teams. Yes, Harris taking the guard off right hand around the wicket to Atif Annam. Yes, first delivery of first over Harris to Atif Annam, taking the guard off right hand over the wicket for this time. Atif rolling delivery, just flicked the delivery towards the covers region and taken comfortable single here. Very good start from the hands of Atif, not rushing for the ball and just flicking the deliveries to the covers region and taking comfortable single here. That is what good start by the batter here, not rushing towards the big shot in the initial stage of over number 1 here. Once again for the new batter, so Dakutan facing first delivery of first over here. Nicely flick. There is a bumble by the fielders and taking advantage of that, taking couple of runs. Very good running between the wicket here. Sensible cricket by the batter here, Atif as well as Siddhakutan. Have a look at the understanding between the batsmen is perfectly out there for the couple of runs here. Just slightly moving towards 3 on the board. The first over is in progress right now. Definitely that small mistake will definitely going to make a big damage for the fielding side here. So everything we have to restrict from the fielders, bowlers and to tackle the batting team over here. Once again for Siddhakutan. Nicely delivered. There is no chance for the batter to connect the ball, and meanwhile the first dot delivery of first over here is very good. Have been placing very good line and land towards the stick was perfectly placed by the bowler here. Once again nicely driven towards the fine third man reaching and fielder fixed perfectly there. There is no chance for the couple of runs here. Meanwhile, lightning running we can see from the both batsmen. A very good stroke it was, and very good running between the wickets by the young players of Arcade Strikers, Mulyarka. Very good start from the hands of Harris here in this first initial over itself. Captain brings Harris into the attack in the over number first here. Once again for Atif here. Nicely driven. There is a bumble with the point fielder. Meanwhile, stroke goes towards the boundaries, and the first boundary of this second match by Atif. Nicely placed towards the covers region and collected 4 more runs to the scorecard here. Very good stroke that was blazed by Mr. Atif, and this was a magnificent stroke towards the covers region and collected 4 more runs over here. The scorecard moves to 8 on the board after completion of 5 deliveries. Last 1 more to go in this particular over number first. Once again Harris come to Atif here. Third of right now, this stands for Atif. Nicely flick deliveries to the third man, and this time a single satisfied with the batsman. Fielder fixed perfectly in the third man reach, and after completion of over number 1, the scorecard is 9 on the board. There is no damage from the side of batting here. Very good start in the batting as well as bowling. Mark just left 9 runs in the first initial over from Harris here for the team like Team HN Tigers, and very balancing start it was from the batting end.
but there we have seen a fumble by the fielder who is placed in the short cover point region, and he couldn't able to collect that perfect ball that which moves to towards the boundary line and gets 4 runs for the batting mark over here. Slightly changing the fielding mark. The fielders are set in the third man region, short third man, deep. Yes, moving towards match here. What a good hit from the hands of Siddharth, plays nicely towards the over the fence for the maximum. The first 6 from the hands of Siddharth here for the bowler for Vizia. Big up this time. Finger rising over there. Siddharth, the big man from the side of Hockey Strikers, walking towards the dugout here after hitting a maximum for his team, and soon after that the forwards have been placed nice deliveries towards the sticks, and this time what an appeal from bowlers as well as keepers, and this time crossing fingers, and Siddharth walking back to the dugout. Have a look at the face of Siddharth. Disappointment not only for the batter but also for the team RK Strikers Mulialka here. This was the first blow from the side of RK Strikers. Forwards have been placed a very perfect delivery to Siddharth here. Meanwhile, the first wicket have been bowled from the side of RK Strikers Mulialka. Yes, Fuvis with the ball mark to the new batter here. Nicely driven the captain of RK Strikers. This time once bounce bowling, 4 more addition. What a play by Ranjit. The captain itself took an initiative to lead his team as a one-down player for team like team RK Strikers. Faced the first delivery and lofted nicely towards the deep region for 4 runs here. 4 more addition to the scorecard in the form of boundary here in the hands of Ranjit for RK Strikers. Very good start from the hands of Ranjit, the captain of RK Strikers. Once again, Farvis to Ranjit, this time going for big shot. Meanwhile, just lick the delivery and fumble by the fielder and call for a couple of runs. Satisfied with single here. 1 more addition in the form of a single run here. The second over is in progress. Farvis, we have completed over number 2nd. After completion of over number 2nd, the scorecard is 21 on the board. Loss of 1 wicket. Yes, Siddharth walks back to the dugout in the second over. Farvis have been spelled nicely in the second over for Siddharth, and meanwhile that is the disappointed for a team like team RK Strikers Muliarka, and that was a very good wicket for Farvis here in the second over itself.
Very good start from both sides. Just left 21 runs after completion of second over 6-over match. One bowler can bowl 2 overs here in this particular match between those teams, having both the teams having very qualified, very talented players in the bowling as well as batting mark over here. And we are moving towards third over of first innings. The ball is with Nitish here, and the captain brings Nitish in the bowling marker for over number 3. Ranjit as well as Atif still is on crease. Just given 1 wicket from the side of RK Strikers. Now Nitish comes to an attack facing Ranjit here. Yes, a little bit of changing moments we can see in the fielding mark over here. Yes, Fergus is setting up the fielding. Beg your pardon, Dikshita as well as Atif ends crease right now. Nitish with the bowling mark taking the guard of right and over the wicket here for this time. Very funny delivery from the hands of Nitish here. Very fancy delivery have been placed by Nitish. Completely beaten by the batsman Dikshit here. Went for big shot, but there was no connection between ball and bat. Once again for Dikshit. Nicely flicked the delivery towards the mid-wicket region. Now fielder fixed perfectly. Meanwhile crossed a single run here. One more addition to the scorecard in the form of a single. Very good start in the third over. First dotted delivery, second delivery nicely flicked towards the mid-wicket region and taken comfortable single here by Dikshit, the captain of RK Strikers Mulyadka, and the first time Atif facing Nitish here. Looking for the reverse sweep, this time nicely placed, and meanwhile very good footwork in the deep square leg region and collected comfortable couple of runs. Have a look at the running filling by the fielder of Action Tigers here. Beautifully minimized 2 runs for their team. Atif looked for a big shot in the form of sweep shot, but he was not able to go between the ropes over there in the boundary line. Meanwhile fielder perfectly caught at that one and given right throw here. Once again going for your sweep and this time completely dotted one. Nitish is doing very perfect job here. Very good consistency in ball, line and length towards the stick was placing perfectly by Nitish here in the over number 3 here. Looking for the same shot towards the same fielder. Meanwhile crossed here, single run. There is no chance at all for the batter to go for a couple of runs and satisfied with single run. Have a look at the stroke. From Atif. Same stroke have been placed towards the deep square leg region and there is only 1 run have been collected. So far very good bowling performance from Nitish here for Hatchin Tigers. This time another one dotted delivery from the hands of Nitish. What an terrifying over number 3 completed here. After completion of over number 3, the scorecard is 25 on the board. Loss of 1 wicket. Superbly bowled by Nitish here for Hatchin Tigers. We have completed 21 run when the finishes of second over. Just 4 runs have been left by Nitish here in the third over. What a comeback from the hands of Nitish for Hatchin Tigers. Have been placed nicely. Beautiful deliveries towards the sticks. Have a look at the consistency towards the stick. That was the strategy. That was the performance which is built by Hatchin Tigers in this particular MPL season 10. Definitely we are enjoying this particular match between those teams. That is RK Strikers Mulyadka versus Hatchin Tigers. Beautiful completion of 3 overs, lost 1 wicket and collected 25 runs on the board. Very good match number 2 of MPL season 10 is definitely we have to salute selected Mannamkuzhi Arts and Sports Club, Mr. Anif Imanga, the MPL season 10, the sponsors of this particular match, the backbones of this particular match. This is not
at all easiest thing to do, conduct such kind of tournament in this such beautiful stadium, and lots of effort which have been placed by selected Mannamkuzhi, Misrani, Vimanga. Once again, all the sponsors, supporters, those who supported for this particular tournament. Yes, over number 4, captain brings new man, that is Harris, once again in the bowling mark, taking the guard of right and round the wicket. This time nicely placed towards onside region and taken a comfortable single. Yes, that's what captain having that credibility on the bowlers had, because captain brings back the same bowler Harris who placed first over for his team and left just 9 runs in the initial over, and same person have been bowling the 4th over here for the batters. Nicely driven, there's a catch, chance of call, and this time perfect catch in the deep of mid-wicket region, and collected perfectly. One more blow from the side of the strikers, Mulyadka. Dixit walks back to the dugout. The big man, the tramp card, the captain of RK Strikers, Dixit walking back to the dugout. Dixit innings comes to an end. This particular over number 4, Harris, the one only name from the side of HN Tigers. That's what have been mentioned in the initial of over number 4. The captain brings back the name same, that is Harris, into the attack, because he knows that he having that confident he can do something magical deliveries in the bowling mark. Same thing have been showed for captain of HN Tigers. One more wicket have been fallen in the form of catch. What a brilliant in the deep region, deep mid-wicket region. The fielder fixed perfectly, and there is no miss chance at all to drop the catch over here. Yes, the second wicket have been fallen from the side of RK Strikers, Mulyadka. Once again, Harris taking the guard off right and over the wicket for the batter here. Nicely the deliveries towards the covers region. Meanwhile, rushing towards the couple of runs and a completed single. There was a chance of going for a couple of runs. Meanwhile, the fielder comes to into attack and save that couple of runs over there. Yes, satisfied with single. One more addition to this scorecard here. Harris with the bowling marker, taking the guard off right and over the wicket for the batter. This time slightly away from the leg stump region. Extra have been placed by Harris here, slightly away from the leg stump region. Never mind. And quite good deliveries have been spelled in the beginning of 4th over, slightly away from the leg stump region this time, and going for this time, nicely stroked, given towards the deep region, and one more boundary for the account of Atif. And here, what a stroke it was towards the deep mid-wicket region, and there is no perfection with the fielder. Very good gap between each fielder. That is what Atif is doing for RK Strikers over here. Beautifully placed towards the deep mid-wicket region, where there is no fielder, fixed perfectly in the deep region and collects 4 more runs over here. Once again, Hatif to NM. This time looking for the same stroke. Meanwhile, nicely hit. Very good running between the wickets. And there is a chance for the run out. Meanwhile, completed couple of runs. That is what very good running between the both the players. That is Atif Annam as well as Mohit is doing, working, running like deer in the ground. Yes, that is what runs have been collected to get a good target which is praised for the against team like HN Tigers here. Both the teams are working perfectly. Both the teams are struggling. Both the teams are working for their victory in this particular match between those teams. Yes, taking the guard of right now with the stamps for Atif here. This time nicely driven towards the extra covers region and taken a couple of runs. What a massive stroke. Have a look at the pick up towards the extra cover region and safely
safely placed towards the extra covers and taken comfortable couple of runs. That is what magnificent batting performance from Atif and came as a opener and still is on a strike now after completion of over number 4. The scorecard is 36 on the board. Very phenomenal, very sensational game which is played by Atif over here. So far perfect from both the teams and they are doing very good job for a particular team, that is RK Strikers Muliarka versus HN Tigers here. The scorecard is 36 on the board, balancing 2 more overs are remaining, 12 deliveries are remaining in this wind up this first innings of the second match of MPL season 10. Yes, I would like to welcome Mr. Kadla Siddiq. And there is a request for all the spectators, all the cricket lovers, please support Kadla Siddiq. He is working for his daily bread and definitely our support is much needed for Kadla Siddiq. Yes, sir. Moving towards the match here, 36 on the board after completion of 4 overs. 2 overs are remaining in this particular, to wind up this particular innings. Number 1 and 2 wickets have been already fallen from the side of RK Strikers Muliarka, that is Sadakutan as well as Dikshit, the captain of RK Strikers, and slightly changes in the failing marker by the captain here. This time Mohit is on strike. Siraj with the bowling mark. The captain introduced the new bowler Siraj to Mohit. There is a beautiful delivery from Siraj, slightly flicked towards the region and taking a comfortable single here. The fine delivery placed by Siraj. There is no chance for the big shot for the batter like Mohit here. And meanwhile crossed, rotated to strike and given strike to Atif here. A very intelligent game from Mohit because Atif, well settled down batsman, came as openers, already lofted 2 boundaries for his account. He knows that he was settled already and he can go for maximums as well as boundaries over here. Yes, looking for the big shot. Meanwhile, slightly edge, and this time fingerized from the main umpire. One more blow from the hands of Siraj here. Atif, the trump card, the icon, man of RK Strikers Muliarka, walking back to the dugout. Atif's innings comes to an end and is 5th over. Siraj, the new man, the newcomer from the side of HN Tigers, have taken the trump card's wicket over here. What a wicket! What a bowling performance from Siraj here. Beautifully placed by Siraj, and this time the disappointment, the sad moment for Atif as well as RK Strikers Muliarka. The 3rd wicket have been blown from the side of RK Strikers. The scorecard still 37 on the board. We are in the 5th over of this particular match between those teams. Very good match so far. 5th over is in progress right now. Siraj with the bowling mark has definitely, the captain have been placed on the fielders different parts of the ground. We can move towards 3rd man region and we have the fielder in the deep backward point, deep covers point, mid off, mid on, long off, long on, and short mid wicket region. Yes, very good delivery this time from Siraj. Once again the batter is not at all control himself to place the deliveries to the right place, and this time one more single have been adding to the scorecard. Siraj so far very good delivery have been placed. 3 delivery have been completed and just left 2 runs and taken 1
wicket of valuable Mr. Atif from the side of Arctic Strikers. Once again for the Mohit, this time once again dotted delivery from Siraj. Have a look at the sensitivity, have a look at the consistency towards the stick was perfectly placing by Siraj here from the side of Hatchin Tigers. This is one turning point for Hatchin Tigers so far here. Nicely flicked towards the point cover region and taken comfortable single here. Call for a couple of runs, but this man are not in mode and satisfied with single here. Yes, Jojo entered with the strike with the new man from the side of Arctic Strikers. Muliadka here, fifth over is in progress. We have completed 5 deliveries, last one more to go in this particular over number 5. Once again for Jojo here. What a good delivery, yes, winding up the 5 overs here. The over number 5 is completed. The scorecard is 39 on the board, just 2 runs, 3 runs have been left in this particular over number 5 and have been collected. One valuable wicket of Atif from Annam. That is what a perfect job did by Siraj here for team like Team Hatchin Tigers and have been placed very perfect deliveries in this particular over number 5. What a turning point from the side of Hatchin Tigers. That is what I have been mentioning. Fawaz, the captain of Hatchin Tigers, having that much experience in Antram cricket. That's what he is using over here in this particular match between those teams. Rotating the fielding positions, rotating the bowlers, using the strategy, making the plans and getting their teams in the safer side of this particular match between those teams. That is what the captain of Hatchin Tiger is doing over here for the victory of their team. Definitely Fawaz is having a huge strategy, huge experience in the particular Antram cricket here. We are moving towards the last over of first innings. Vijay Mara, the captain, introduced the new man Vijay Mara into the attack in the bowling number 6 here. Vijay to Mohit as well as Suraj. Jojo is on crease now, taking the guard of right and over the wicket from the bowlers and nicely driven towards the deep reach, and meanwhile going for a couple of runs. There is a chance of run out and this time completed a couple of runs. Quite bit of fumble in the deep reach, and meanwhile they have been controlled themselves and couldn't able to collect perfectly in the meanwhile and completed couple of runs over there. 2 more additions to the scorecard in the starting of over number 6 here. Once again Vijay Mara to Mohit, this time a finger crossed straight away to the wooden sticks here. Have a look at that. Have a look at the wooden sticks have been fallen now. What a terrifying delivery from the hands of Vijay Mara. What a beautiful, sensational bowling performance by the tail end bowler from the side of Hatchin Tigers. That is what I have been mentioning. The Fawaz definitely having that strategy. He knows which bowler has to bowl which number of deliveries, which over. That's what he is doing over here in this last stage of first innings. Yes, we are moving towards the last over of over number 6. 2 deliveries have been completed. One more blow from the side of Arcade Strikers. Muliadka here. Disappointment. This tackle is going here in the 41 run on the scorecard here. 3rd delivery for the new man, Prasanna. Taking the guard off right and down the wicket, and this time one more dotted delivery here. And yes, time out call from the middle. Yes, definitely one man had to be come inside the 30-yard circle. That definitely this is going to be help for the batting side to hit nice strokes towards the deep regions. Yes, a timeout call from indication from the center over here. Yes, 6th over is in progress. Vijay Mada to the present new man, nicely delivered, but it is unfair delivery heavy from the off-stump region. Have a look at the judgment which is placed by the main umpire, Mr. Saifuddin, all the way from Mangalore, came for this particular tournament of MPL 10. Here, nicely lofted, and there is a fielder. This time crossing the boundary, maximum. What a flick that one from the hands of Prasanna, lofted over the fence
for the maximum. 6 more run addition to the scorecard. Brilliant stroke, brilliant effort, brilliant power work from Prasanna here. Lofted over the fence for the maximum towards the deep onside region. This was much needed maximum for a team like Team Arcus Strikers in this particular over number 6. Once again, Vijay Mada to the Prasanna, the trump card, the key player of Arcus Strikers, slightly away from the leg stump region. One more addition in the form of extra here. Scorecard is slightly jumping towards 49 on the border after completion of 4 deliveries. Yes, nicely flicked deliveries towards the bowlers, and one more single here. One more single added to the scorecard. Yes, 50 on the board right now. Last one more to go to wind up this first innings. Once again taking the guard off right and over the stumps from Vijay Mada, and this time looking for the big shot. There is no connection between ball and bat. Meanwhile, crossing single here. Over number 6 completed. The scorecard is 51 on the board, and 52 is the victory target for team like HN Tigers. We have seen a very perfection batting as well as bowling from both teams. Definitely we have enjoyed in the first innings of second match of MPL season 10, and this is what we are waiting for, a particular match between those teams. And definitely evening session is going to be rock over here with the crackers, with the lights, with the fat light, and definitely we will going to enjoy this particular season 10 of 2026. That is Mannamkuzhi Arts and Sports Club, which is presenting MPL season 10 2026 with the leadership of Mr. Arif Humanga, the one and only the man. 26 years of celebration of one-term cricket. That is the one name, one fame, hero of MPL, Mr. Arif Humanga. Yes, sir. Now the changes in microphone, I'd like to call Mr. Abdul Rahman Zibekur to analyze the next second innings of second match. Definitely when Abdul Rahman Zibekur holding mic, definitely getting goosebumps, that which makes players of one-term cricket, that which gives energy, that gives strength to play a certain match like MPL season 10. And seriously, I'm the big fan of Mr. Abdul Rahman Zibekur. Yes, welcome sir for second innings analyzing of particular second innings. Thank you. धन्यवाद मिस्टर प्रीतम कुंबला। एमपीएल की 10वीं सीजन आप देख रही हैं। ये पहली मैच यहाँ पर बिच्छू बॉयज अलिफ स्टार के बीच में खेला गए थे, बहुत अच्छे जब बल्लेबाजों के सहारे के साथ जब बिच्छू बॉयज ने शानदार जीते थे। अब तो दूसरी मैच आप देख रही हैं। 52 इज द विक्ट्री टारगेट। 51 रन बनाए थे। 52 यानी कि 52 रन के लक्ष्य को यहाँ पर पीछा करना है एचएन फ्रेंड्स हिदायत नगर को आरके स्ट्राइकर्स बुलेट का को सामना करते हुए। पहली गेंद
आतिफ इस गेंद को उठा करके ला है, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाते हुए फील्डर पीछे है, लेकिन यहां पर सीमा रेखे के करीब गेंद को रोक दिया गया है। तब तक रनों की संख्या 2 अपनी खाता खोल चुके हैं, 2 रन के साथ अपने खाता खोल चुके हैं। आतिफ एन्नम गेंदबाजी कर रही है। तब आतिफ एन्नम के बहुत सारे फैंस यहां पर मौजूद हैं। दक्षिण कन्नड़ा जिला से बहुत सारे लोग आए हैं। एन्नम मैंगलोर के मैनेजर और रियाज बिरपू गुड्डा भी हमारे साथ में मौजूद है। यहां पर देखिए हवा पर गेंद और इसी के साथ विकेट नंबर 1 डिपार्ट्स, पहली विकेट के पतन हो चुके हैं। हारिस आइकॉन खिलाड़ी हारिस आउट हुए हैं। एचएन फ्रेंड्स हिदायत नगर के पहली विकेट यहां पर पतन हो चुके हैं। कह रहा था कि जो आतिफ एन्नम बहुत सारे फैंस इस केरला में भी हैं उनको, और एक मुझे याद है कि बिच्छू बॉयज मन्नमकुझी की बीपीएल क्रिकेट श्रृंखला में जो खेले थे, आदि से इनको चोट लगने की वजह इन्होंने जो टूर्नामेंट से बाहर गए थे, फिर भी जो मैन ऑफ द सीरीज स्कूटी यानी कि 2 व्हीलर लेकर गए थे जो आतिफ एन्नम, और हमारी मेहमान यहां पर आ चुके हैं। वेलकम। हर एमपीएल में भी योगदान देते हैं इस जोकर्स, यहां पर आ चुके हैं। आज के दिन में भी आने वाले जो समयों पर यहां पर जो गाना मनोरंजन के साथ बहुत बड़े यहां पर अपील इसी के साथ है उंगली आसमान की तरह विकेट नंबर 2 डिपार्ट, दूसरी विकेट पतन होते हुए आतिफ एन्नम के गति गेंद के गति को समझ नहीं पाए, पैर पर खेलने की कोशिश की है, तब अपने आप को गवा दिया गया। रंजू नीरचाल आउट। रंजू के निर्गमन के बाद नए बल्लेबाज के आगमन दिख रही है। परवेज कप्तान कैप्टन ऑफ एचएन फ्रेंड्स हिदायत नगर, उनके योगदान दिख रही है एचएन फ्रेंड्स हिदायत नगर के लिए। 2 विकेट पतन हुए। देखिए पहली गेंद पर डबल के साथ शुरुआत ही किए थे, और उसके बाद जब विकेट यहां पर छटकाए साजिद के हारिस के विकेट, क्षमा कीजिए हारिस के विकेट, और उनके बाद रंजू नीरचाल भी आउट हुए हैं एलबीडब्ल्यू के रूप में। आतिफ फिर एक बार दूर वाली चौक से मध्य विकेट अंपायर को कोच करते हुए। परवेज रक्षात्मक तरीके के साथ खेले हैं, बल्ले की बारी हिस्सा लगे हैं, रन लेने को कोई मौका नहीं, यहां पर कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। शानदार गेंदबाजी की मजारा। 4 गेंदें फेंक चुके हैं अब तक, सिर्फ 2 रन खाते पर एचएन फ्रेंड्स हिदायत नगर की। पावर प्ले जारी है और भी 8 गेंद पावर प्ले में बचे हैं। फिर एक बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छे ग्लास की है गेंद, देखिए स्क्वायर फाइन लग के स्क्वायर लग की दिशा पर गेंद गई, तब तक 2 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा भी किए। तीसरी के लिए कोई मौका नहीं, तीसरी के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन इनकार किए। तब तक 2 रन के सहारे के साथ 5 गेंदों पर 4 रन। बिल्कुल अच्छी नजारा है। कम बैक तो करना ही होगा एचएन फ्रेंड्स हिदायत नगर को, क्योंकि पहली झटका बहुत बड़े झटका थे और इस दबाव से बाहर निकलना ही होगा। और ये देखिए कितनी शानदार बल्लेबाजी है। कभी भी जो एमपीएल में नहीं, कहीं भी टूर्नामेंट में हो, परवेज को देखता हूं कि जो मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज बहुत कम मिलते हैं। बहुत अच्छे स्टाइलिश बैट्समैन ऑफ अंडर आर्म क्रिकेट, खूबसूरत बल्लेबाज है। अब 5 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। आतिफ एन्नम के ओवर की विशेषता है कि 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 5 रन और 2 विकेट, बहुत बड़े विकेट यहां पर मिले हैं। लाजवाब गेंदबाजी की शुरुआत की है। आतिफ एन्नम के बहुत सारे फैंस उनके साथ में आज खेल देखने के लिए भी यहां पर आए हैं दक्षिण कन्नड़ा जिला के, और इसी तरह एन्नम मैंगलोर के टीम मैनेजर रियाज बिरपू गुड्डे उनके डेकआउट में बैठकर उनको सपोर्ट कर रही हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं रियाज जी। अब तो 5 रन पहली ओवर की समाप्ति पर बायर कैकम बारोडन से गेंदबाजी की शुरुआत ही किए थे। अब तो दूसरी ओवर हिंदुस्तानी स्कूलन से गेंदबाजी कर रही है बॉलर नंबर 2 अभी पेरनडका, उनको मौका मिले हैं। तीसरी मैच के लिए यहां पर तैयारी हो जाइए। बीएससी बपाई दुड्डी एचबी पापिला के बीच में तीसरी मैच होगी, जो हस्ताक्षर की पुस्तक इस इनिंग्स के बाद खुला रखेंगे, तब तैयार हो जाइए। अब दूसरी ओवर के रूप में पावर प्ले में अभी पेरनडका को लाया गया है, दूर वाले चौक से ओवर द विकेट। तब तक स्ट्राइक पर मौजूद है परवेज, नो स्टेकन पर प्रीतम मौजूद है, और बहुत खूबसूरत कलाएं के इस्तेमाल देखिए, कितनी शानदार कलाएं के इस्तेमाल किए। 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किए परवेज ने, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 6 ऑन द बोर्ड, 6 रन।
बहुत खूबसूरत योगदान दिख रही है। यहाँ पर पार्टनरशिप की बिल्कुल जरूरी है और 2 विकेट पहली ओवर में छटका दिए थे उस दबाव से बाहर निकलने के लिए। इन दोनों बल्लेबाज अगर सही सलामत 2-3 ओवर तक टिक रह जाए एचएन फ्रेंड्स के लिए कुछ कर सकते हैं। अब अगली गेंद दूर वाले चूसर ऑन द विकेट अंपायर को कोस करते हुए प्रीतम, पहली बार प्रीतम को मौका मिले, देखिए कितने शानदार खेले हैं। मिड विकेट सर्कल के अंदर फील्डर थे, उनके हाथ पर गेंद दिए, 1 रन तुरंत दौड़कर पूरा किया, निश्चित रूप में अपने खाता खोल चुके हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए 7 रन, 7 ऑन द बोर्ड, 52 इज द विक्ट्री टारगेट, 45 मोर रन रिक्वायर्ड। अब अगली गेंद दूर वाली चौसर ऑन द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए और इस गेंद लाजवाब गेंद, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी। देखिए कितनी शानदार कमबैक की है अभी ने। तीसरी गेंद पे यहां पर रक्षात्मक तरीके के साथ खेलने की कोशिश की है, तब गेंद चकमा का है, कोई रन नहीं, कोई खतरा भी नहीं। वाइड चेक करना चाहते हैं अंपायर। लाजवाब शुरुआती गेंदबाजी के यहां पर आतिफ इनम के शुरुआती देखिए 5 रन 2 विकेट, बहुत खूबसूरत शुरुआती दी और उसके बाद अब भी गेंदबाजी के लिए आए। पावर प्ले में इतनी शानदार गेंदबाजी कर रही है, तो अभिनंदन करने ही होगा। कितने भी जो इनको अभिनंदन करेंगे उतना कम होगा। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी के मजारा करते हुए आर के स्ट्राइकर्स मुलेड का वाइड के इशारा दिए, वाइड, और इस वाइड के लिए अपील थे, तब वो सफल भी हुए। बल्लेबाज ने वाइड के लिए अपील किए थे। अब हरीश पटेल और मोहन नैयारी ने सैफुद्दीन, जो स्क्वायर लेग पर सैफुद्दीन है मेरे ख्याल में, बहुत अच्छे अंपायरिंग पैनल लाया गया यहाँ पर एमपीएल में। अब अगले गेंद लेकर तैयार है अभी, रनों की संख्या 7 और अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, हो। लेकिन विकेट कीपर को भी समझ नहीं पाए, गेंद के रफ्तार उतनी ज्यादा थे, पैड पर टकराए थे, गेंद तो बैकबार पर गए, तब तक का 1 रन। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 9 ऑन द बोर्ड, 9 रन दूसरी ओवर की चालती पर अभी पेरनर का। फिर एक बार प्रीतम के लिए 1 रन बनाकर प्रीतम खेलते हुए दूर वाली चौसर ऑन द विकेट अंपायर को कोस करते हुए अभी जमीन पर अपनी शैली पर टपकाने के बाद देखिए अराउंड द विकेट, ओह जबरदस्त अपील, लेकिन अंपायर ने अपनी जगह से हिले और कहा कि लेग बाई जरूर है, लेकिन स्टंप के सामने नहीं थी उनके पैड, उस वजह से कोई रन कोई खतरा नहीं, 1 रन तो जरूर मिले हैं, निश्चित रूप में डबल अंक पर पहुंच चुके हैं। फिर एक बार अभी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है, जमीन पर टपकाने की शैली देखिए, ध्यान हाथ पर गेंद पकड़ते हैं, वाह डिलीवरी, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या, क्षमा कीजिए 1 मोर बॉल टू गो, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, 1 गेंदे बचे हैं, 1 गेंदे बचे हैं अभी पेरनर की, 1 मोर बॉल टू गो। एक वाइड जरूर फेंका गए थे। अब दूसरे ओवर के आखिरी गेंदे बचे हैं, रनों की संख्या अभी भी 10 रन, 10 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। विकेट पतन हुए, देखिए बहुत जबरदस्त झटका यहां पर मिले थे हारिस, और उसके बाद विकेट पतन हुए थे रंजू निर्चाल के, विकेट पतन हुए थे अभी। फिर एक बार परवेज, कितनी शानदार शैली है देखिए खेलने की शैली, विकेट, और इसी के साथ परवेज का विकेट पतन, ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, तब यहां पर रनआउट के रूप में विकेट पतन हुए। आर के स्ट्राइकर्स मुलियड का शानदार फील्डिंग, शानदार थ्रो, और इसी के साथ कप्तान की विकेट पतन होते हुए तीसरी विकेट पतन हुए हैं 10 रन पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 10 रन। अब तीसरे ओवर की शुरुआत करना चाहते हैं आतिफ कंटिन्यू जारी रखने के लिए, तब नए बल्लेबाज के इंतजार करते हुए समतल कला उनके पारी हैं, जो एमपीएल शुरुआत है तब हमेशा की तरह आवाज आज भी सुन रही है, कडला कडला कडला, सिद्दीक कडला के आगमन हुए हैं, तब आतिफ के आगमन भी हुए हैं। तीसरे ओवर के रूप में गेंदबाजी के लिए तैयारी होते हुए पहली कोटे की पहली ओवर देखे कितने शानदार थे,
एक ओवर कोई मेडल नहीं, 5 रन और 2 विकेट। विकेट के रंगीन देखिए जो हारिस और रंजू 2 जबरदस्त विकेट छटका गया थे। तीसरी विकेट के रूप में फरवेज रनआउट के रूप में आउट हुए थे और उनके जगह भरने के लिए समत तलकला के आगमन हुए। प्रीतम के लिए उल्टा बल्ले में खेला गया है और फील्डर मौजूद और खतरा हो सकती है, करीबी मामला और अपील तीसरे अंपायर के मदद मांग चुके हैं। तीसरे अंपायर के मदद मांग चुके हैं, बिल्कुल करीबी मामला। मुन्ना पप्पाई तुट्टी की आगमन दिख रही है। वन क्लब मेंबर्स कासरगोड जिला समिति की जनरल सेक्रेटरी मुन्ना पप्पाई तुट्टी, क्षमा कीजिए अध्यक्ष, बोलती में गलती हुई है। अध्यक्ष मुन्ना पप्पाई तुट्टी यहां पर आए हुए हैं, स्वागत करना चाहता हूं। ओ शमीम के आगमन हुए हैं, माफ कीजिए, जब सूरन के किरण आंख में टकराए तब आपके चेहरा नहीं देखे, माफ कीजिए। शमीम जी कैसे हो आप? पिछले साल कहे थे वो आवाज आप भी याद होगा, जो सफल हुए हैं गैलरी बनाएंगे, तब आपने कहा जूस भी पिलाएंगे और इसी के साथ आउट। गैलरी बनाएंगे और जूस भी पिलाएंगे, सभी तैयारी है। उमंगा ने पूरी तरह तैयारी की है। शमीम के आगमन भी हुए हैं। अब विकेट पतन हुए, विकेट नंबर 4। यहां पर एक तरफ खंबे के जैसे खड़े हैं प्रीतम, 2 रन बनाकर खेल रही है, लेकिन दूसरे छोर से विकेटों की संख्या बढ़ते हुए 4 विकेट। अब नए खिलाड़ी है विजय मादा, अंडरआर्म क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ विश्वसनीय बल्लेबाज। अगर प्रीतम जरूरी है एचएन फ्रेंड्स हिदायतनगर को इन 2 जोड़ी सही सलामत अंतिम गेंद तक खेलेंगे, मेरे ख्याल में यहां पर लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि 2 बल्लेबाज ऐसे खतरनाक हैं। अब एक ही मात्र खिलाड़ी को 2 ओवर फेंकने के लिए मौका मिलते हैं, जो मौके पर गेंदबाजी कर रही है आतिफ एनम, अपनी पहली गेंद पर विकेट चटकाएं, यानी कि रनआउट के रूप में। अब स्कोर कार्ड पर सिर्फ 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार दूर वाली चोट से लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हैं। कितने बड़े फैंस से उनके पीछे हैं, देखिए एनम मैंगलोर के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हैं। आतिफ एनम कभी भी मुस्कुराते रहते हैं। इसी मैदान में चोट लगे थे इनको। अब दूसरे गेंद, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी, देखिए कितनी शानदार गेंद, रफ्तार और गति बिल्कुल जबरदस्त है इनकी। 2 गेंदे फेंक चुके हैं। एक बार फील्डिंग में परिवर्तन लाना चाहते हैं, मिड विकेट से वाइड मिड विकेट पर लाया गया। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन अंपायर कहा कि वाइड है, हाफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थे। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 11 ऑन द बोर्ड, 41 मोर रन रिक्वायर्ड, 52 इज द विक्ट्री टारगेट। आती फिर एक बार अच्छी गेंद उठा करके ला है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर गेंद गई, तब तक फील्डर मौजूद, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 12 ऑन द बोर्ड, 12 रन पर पहुंच चुके हैं। अब स्क्वायर लेग पर एक बाउंड्री लाइन के करीब फील्डर को लाया गया है, प्रीतम के लिए माधु को लाए गए हैं। अब अगले गेंद नौबत विकेट, प्रीतम उठा करके ले हैं, गली इलाके पर गेंद गई है, तब तक फील्डर आकर गेंद को उठाए, तब तक एकमात्र रन के लिए यहां पर मौका मिले है और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 13 ऑन द बोर्ड, 39 मोर रन रिक्वायर्ड। अब आतिफ अपनी ओवर की आखिरी गेंद, 2 मोर बोल्ट को 5वीं गेंद फेंके हैं, 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किए, दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं, अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, तब तक 1 रन, 14 ऑन द बोर्ड, 38 मोर रन रिक्वायर्ड। अब अगली गेंद लेकर तैयार है, आखिरी गेंद है आतिफ एनम की, उनके सामने प्रीतम आरंभिक बल्लेबाज अभी भी मौजूद है। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद देख रही है आदि इनिंग्स, दूसरी इनिंग्स की, और इस गेंद को उठा कर खेला है, फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर 15 लॉस ऑफ 4 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर 15 रन। यहां पर नजीर के आगमन दिख रही है। नजीर जी स्वागत करना चाहता हूं, दुबई से यहां पर इस प्रतियोगिता के लिए, एमपीएल के लिए सीधे आए हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं। कल के दिन है उनके खेल,
जो मेरे ख्याल में वही एफसी कन्नूर में कप्तान के रूप में खेलने के लिए योगदान मिले हैं, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। कई लोग जो बाहर गांव से इस सिर्फ एमपीएल के लिए आगमन हुए हैं, जो अंडरआर्म क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेट प्रतियोगिता जा रही है एमपीएल मन्नमकुझी प्रीमियर लीग। और मन्नमकुझी प्रीमियर लीग की विशेषता है कि जो पिछले साल 10 लाख के थी, इस साल 15 लाख की है। 15 लाख एंड 7 लाख 22 लाख टोटल कैश प्राइसेस। अब 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 15 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 37 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 18 डिलीवरी। मेरे ख्याल में तो हिंदुस्तानी स्कूल से 2 ओवर मिलते हैं, तब दोनों बल्लेबाज मैदान के कोने कोने में खेलने वाले बल्लेबाज हैं। मौका है अभी भी, और इस गेंद उठाकर खेलने के प्रयास की है, पूरी तरह चकमाका है, कोई नहीं, कोई खतरा नहीं। बॉलर प्रसन्ना के आगमन हुए हैं, प्रसन्ना नायिका उनके आगमन हुए, तब प्रीतम स्ट्राइक पर मौजूद है। प्रीतम आरंभिक बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट के लिए कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन कामयाब तो नहीं हो रही है, क्योंकि नो स्ट्राइक से 4 विकेट पतन हुए, तब देखते रह गई। दबाव तो मामूली है, दबाव तो जरूर आएंगे यहां पर। प्रीतम अगर वापसी करेंगे अपनी टीम के लिए, तब अभी भी मौका है। 17 टू गो। प्रीतम के भाई है प्रसन्ना, जी हां, यहां पर बिल्कुल अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद। दोनों खिलाड़ी यहां पर खेल रही है, भाई भाई के बीच में लड़ाई जा रही है। अब दूरवाली चौसा अराउंड द विकेट प्रीतम के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का खिला दिया गया है, और इस वाइड की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 16 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार प्रसन्ना, प्रीतम रक्षात्मक तरीके के साथ खेले हैं, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई, तब तक फील्डर मौजूद थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 35 और रन रिक्वायर्ड। फिर एक बार प्रसन्ना अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर हिंदुस्तानी स्कूल से गेंद को चुक्कर खड़े हैं, जमीन पर टपकाते हैं, अराउंड द विकेट। उल्टा बल्ले में खेलने की प्रयास की है, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, अच्छी गेंद फेंके है प्रसन्ना। कोई रूम तो नहीं दे रही है खेलने के लिए, बिल्कुल उछाल अगर मिलेंगे इस मैदान में खतरनाक हो सकते हैं। अब अगली गेंद अराउंड द विकेट, अच्छी गेंद लेग स्टंप पर बीट हुई। ओहो, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए बॉलिंग। प्रसन्ना अपनी जिम्मेदारी कितनी शानदार निभाते हैं, देखिए। गेंदबाज, हर गेंदबाज भी अपनी जिम्मेदारी को तो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। ओ बढ़िया गेंद, ओहो, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए ओवर। प्रसन्ना कामयाब ओवर, 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 2 रन और कोई विकेट नहीं, लाजवाब गेंदबाजी किए, देखिए। अब 2 और बच्चे हैं, स्कोर कार्ड पर अभी भी 17 रन, 17 लॉस ऑफ 4 विकेट, 35 और रन रिक्वायर्ड, 17.5 पर ओवर, यानी कि 17.5 की प्रतिशत यहां पर रन बनाना है। बस 1 ओवर दुनिया बदल सकते हैं, क्रिकेट की कहावत है। स्पेशली मन्नमकुझी स्टेडियम से हिंदुस्तानी स्कूल से बल्लेबाज आते हैं राइट हैंडर, तब यहां पर मिल सकते हैं मौका। जोकर जूनियर उमंगा को लेकर आ रही है, 6 दिन यहां पर रहेंगे, हमारे साथ नाचेंगे, गाएंगे, हेश बनाएंगे यहां पर। 35 और रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 12 डिलीवरी। बॉलर सफवान मच्छम्बारी, लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, अच्छी गेंद उठा कर खेला है, हवा पर गेंद, और सीधा गए सीमा रेखे के बाहर, टन छक्का। देखिए कितनी शानदार छक्के लगाए, सफवान के आगमन हुए, उनको स्वागत की है छक्के लगाकर प्रीतम आरंभिक बल्लेबाज है, सेट हो चुके हैं, छक्के चौके की बिल्कुल जरूरी है। कुछ देर पहले मैंने कहा था कि बस 1 ओवर दुनिया बदल सकते हैं, ऐसे ओवर मिलना चाहिए। 20+ ओवर अगर मिल जाए, तब यहां पर फ्रांस हिदायतनगर को बड़े मौका मिलेंगे, रास्ता खुल जाएंगे। पहली गेंद में छक्के लगाए, अब तो बिल्कुल दबाव मामूली है, गेंदबाज के कंधे पर आएंगे।
बहुत जबरदस्त बल्लेबाज भी है स्ट्राइक पर। फिर एक बार लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट, पायर कई कंबर उड़न से सफवान मच्छबारी अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट, ओहो लेग स्टंप के बाहर वाइड। कहा था कि दबाव जरूर होंगे क्योंकि इस बल्लेबाज से बचकर रहना, उनके मन यही कहता होगा कि प्रीतम से बचकर रहना। अब लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट, फिर एक बार 29 मोर रन रिक्वायर्ड। फिर एक बार लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट, प्रीतम उठाकर खेला है हवा पर गेंद, फील्डर मौजूद और इसी के साथ प्रीतम के पारी समाप्त हो। मेरी सामने गर्जन की है, उनको वापस भेज दिया गया है। प्रीतम के ऊपर हल्के विश्वास रखे थे, हल्के आवाज सुने थे एचएन फ्रेंड्स के डकआउट से, तब उस आवाज मिट गई है प्रीतम के विकेट पतन होने पर। 10 गेंदे बचे हैं, 10 to go, 29 to get, 28 to get, क्षमा कीजिए। अब नितेश की आगमन हुए हैं। नितेश भी कोई छोटे बल्लेबाज तो नहीं है, पिंच हिटर है। इनको कई जगह में देखे हैं, आखिरी वक्त पर आकर उन्होंने अपनी ताकत दिखाते हैं। गेंदबाजी में बहुत बड़े गेंदबाज हैं इन्होंने, बॉलिंग ऑलराउंडर। नितेश के आगमन हुए हैं तब गेंदबाजी में सफवान और नितेश के बीच में लड़ाई जा रही है। हमेशा इन दोनों खिलाड़ी लोकल क्रिकेट में खेलते जाती है। लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट, और अच्छी गेंद पैड पर टकराए मेरे ख्याल में। जी हां, अंपायर के इशारा लेग बाई है और इस लेग बाई के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 25 ऑन द बोर्ड, 27 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 9 डिलीवरी। सफवान के सामने विजय मादा तो खेल दिए मिड विकेट पर, लेकिन बड़े शॉट तो नहीं खेले हैं। बड़े के बिना कुछ भी नहीं चल सकते। यहां पर बड़े बड़े शॉट खेलते जाना है, तब गेंद के अंक कम होते जाती है, तब यहां पर बड़े बड़े शॉट खेलते जाना है। 8 गेंदे बचे हैं, 2 गेंद इस ओवर में बचे हैं बाती जी, 2 गेंदे बचे हैं। जी हां, लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट। अगली मैच के लिए हस्ताक्षर के लिए तैयारी हो जाइए दोस्तों। अब तो कोई छोटे मोटे क्रिकेट टूर्नामेंट तो नहीं खेल रही, एमपीएल। ओहो, अगले मैच के टॉस हुए। उन्नी कृष्णन जी, टॉस है अंपायर सर, टॉस അടുത്ത മത്സരത്തിന് ടോസിംഗ് നടത്തുക. അടുത്ത മത്സരം മത്സരിക്കുന്നു BSC പപ്പായിത്തൊട്ടി HB പാപ്പില തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. രണ്ട് ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രധാന വേദിക്ക് മുൻവശത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ MPL 10ാം പതിപ്പിന്റെ ആരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ is there. BSC ക്യാപ്റ്റൻ ഷബീർ അല്ലേ, ഫയാസ്. सफवान फिर एक बार तैयारी करते हुए दूर वाली चौक से लिफ्ट आर्मर ऑन द विकेट. अच्छी गेंद उठा करके ले हैं मिड ऑफ सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाए. तब तक 1 रन और इसी के साथ ओवर की समाप्त हो चुके हैं. रनों की संख्या टोटल स्कोर इस 27, 25 more रन रिक्वायर्ड. मैंने कहा था कि पिछले ओवर में अगर प्रीतम मौजूद थे तब वो पहली गेंद में छक्के लगाए थे. अगर उस ओवर में 20 के ऊपर रन बनाते तब यहां पर इस ओवर में मौका खुल सकते थे, लेकिन क्रिकेट ऐसी गेम है कि कुछ भी कह नहीं सकते हैं. 30 ओवर को भी जो पीछा की है जीते हैं, जो हिस्ट्री है अंडरआर्म क्रिकेट में. अब देखना होगा कि 25 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 6 डिलीवरी. HP Papila on the toss. 25 required out of 6 delivery.
കമന്ററി ബോക്സിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ആ ജനറേറ്റർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ രണ്ട് വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് വണ്ടികൾ അടിയന്തരമായി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിടേണ്ടതാണ്. കാരണം അവിടെ ആംബുലൻസിന് റിസർവ് ചെയ്ത പാർക്കിംഗ് ആണ്. ആംബുലൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ വാഹന ഉടമസ്ഥർ ദയവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി മാറ്റണമെന്നറിയിക്കുന്നു. ആ ജനറേറ്ററിന്റെ അടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത ഓട്ടോറിക്ഷ അതേപോലെ കാർ അവിടെ പുതിയതില്ല എന്തോ രണ്ട് ഇന്നിങ്സ് രണ്ട് 33 4 more delivery in left. 4 गेंदे बचे हैं. अब एचएन फंस हिदायत नगर के सामने बिल्कुल जीत के उम्मीद पर खेलते हुए आर के स्ट्राइकर्स मुलियड का यहां पर देखिए कितनी शानदार फील्डिंग. रनर के लिए खतरा थे लेकिन विकेट कीपर सामने आकर खड़े थे. माधु ने कितने शानदार फील्ड किए. देखिए कितनी शानदार फील्डिंग. एक ही रन 2 रन क्षमा कीजिए 2 रन कंप्लीटेड. 2 रन पूरे किए हैं. 35 17 मोर रन रिकॉर्ड. देखिए कितने सामने आए हैं. 2-3 छक्के की कमी दिख रही है यहां पर. लेग स्टंप पर बीट हुई. बहुत अच्छी गेंद. ब्यूटीफुल डिलीवरी. दीक्षित गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदे बचे हैं. 2 गेंदों में 17 रन की जरूरत है. टाइम आउट. एक खिलाड़ी अंदर आ जाइए. फिर एक बार फिफ्थ टाइम इन दिस ओवर यानी कि 5वीं गेंद लेकर तैयारी करते हुए मिड विकेट से अंदर की तरफ खींच लिया गया है फील्डर को. स्क्वायर लेग डीप में फील्डर मौजूद है और कैडमैन बिल्कुल खींच कर रखे हैं. लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है. फाइन लेग बिल्कुल खाली जगह है. वाइड मिड विकेट पे फील्डर है. अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद. आखिरी गेंद बचे हैं. एचएन फैंस हिदायत नगर को जीतने के लिए और भी 17 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए. मेरे ख्याल में प्रीतम के साथ कोई साथ देने के लिए अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए. इस वजह से यहां पर शॉट तो बहुत अच्छे थे. गेंद तो 2 रन दौड़कर पूरा किए और 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 37 यानी कि 14 रन की जीत यहां पर प्राप्त कर चुके हैं आर के स्ट्राइकर्स मुलियड का. अगले मैच होगा बीएससी बपाई तो टी एचबी पापीला के बीच में. जोरदार मुकाबला. उन्नी कृष्णन ने टॉस जीते हैं एचबी पापीला के लिए.
Thank you very much, Abdurrahman Bekur. And we can see in the presentation podium, Atif is receiving the Player of the Match award, and it will be giving away by Ashraf Echen. And also thank you very much, DJ operator Azim. Thank you for making it colorful and complete entertainment. Good evening, cricket lovers, and welcome back to the actions on the ground. Match number 3. HB Papila versus BSC Bapayatoti. HB Papila won the toss. Krishnan Kumbala, the captain of HB Papila, decided to bowl first. On the other side, the openers are set for the team Fayaz. Fayaz and Fayaz. Sudeep, the left-hand bowler, comes with the over number 1, and what a beautiful way, the man rolling it on the track, but goes just way outside from the gate line, and it's wide up on the scorecard. Wide ball to start by BSC Bapayatoti. They were up on the scorecard. Left-hand Fayaz on strikers end. Lovely little delivery to back in the process by the young and energetic bowler. Only Krishnan Kumbala just brings Sudeep with the over number 1, and what a way the man announcing his arrival as a strike bowler for the team HB Papila. Fantastic way, he just meets the rolling delivery through the carpet. Lovely way the man generates some rolling delivery. Here comes again. It's again a beautiful ball and straight to the field, and that's a wicket. What a way to get some breakthrough. Fayaz gone, the left-hander Fayaz gone. He's straight away walking back in. അതിന്റെ 10ാം സീസൺ ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കായിക പ്രേമികൾക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. 1 for the loss of 1 by BSC Bapayatoti. Incredible start by HB Papila. What an encounter this is. Here comes Shabir. BSC, the captain, comes in at number 3 and straight away onto the strikers end. What a ball again. What an excellent delivery. With an outstanding way, the man cleanly snakes it onto the track, and that not giving any kind of chance to freeze the arm for the new batter. Magnificent bowling display to showcasing. 3 balls, just an outstanding way past. Nicely works it on to the fine leg region, and there will be a first run with a bat. Off the mark with that single by Shabir. On the other side, the icon player Fayaz for the team BSC Bapayatoti. A trouble start already for the team BSC. The lost left-hander Fayaz in early. On the other side, tremendous start by the strike bowler of the team HB Papila. Here comes the ball. Goes away, just way outside from the gate line of the off stump. That meets a wicket keeper, costing an extra. Moves on 3 by the team BSC. You are watching the mega cricket carnival in tennis ball history. 22 lakh for the finalist.
is a history that making here in Mannamkuzhi by selected Mannamkuzhi. Just plays it nicely. One more runs to the fine leg region. This time converted into a couple by the batters of BSC Bapaitoti. Slowly they were steadily back into the process when they lost the first wicket of Fayaz. Slowly building the innings, Shabir Bapaitoti and Fayaz, the icon player from Karnataka. Both are making the innings in slow and steady way. It's building for the team BSC Bapaitoti. 5 on card in 5 and moving to the last ball of the over number 1. So far it's so fine for the bowling side of HB. With Sudeep the bowler. Lovely way, plays and beats the infield and races away, and quickly the fielder coming. What an excellent energy that controls in the outfield by the team HB Popular to restrict with a single run. Double between the wicket on this occasion for the batters of BSC. That's the end of the over number 1. First over in a decent way completed by Sudeep. 7 for 1. BSC Bapaitoti. 7 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുകയാണ് BSC Bapaitoti. ആദ്യ ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 7. Unnikrishnan Kumbala just bringing youngsters in the front line to control the attack. We have seen an outstanding over from Sudeep, a left-arm fast bowler, but this time Saijesh, the man, is coming into the attack with the over number 2. Saijesh Mali. Making the right fielders in the right position to start the right action for the bowler. Shabir on strike. Nicely played, an excellent delivery over there from the bowler to start the proceedings of the second over. 2 youngsters, they were ruling in the first 2 overs of HB Popular, and what a start for the another bowler. Single 2 off the mark. In straight away in this over by Shabir Bapaitoti. 8 on card for the team. Brilliantly placed. A steady way they were ready to build the innings for the team HB. BSC Bapaitoti having a working phenomenal way on the other side with some single sensible cricket that's showcasing by the openers. Not taking a risk at this occasion. Now watchfully left, right in the channel that produced a dot ball by the bowler Saijesh. But there will be a wide called. It looks to be a tight. Calls a wide in the end. Lovely way, lofted that one over the field. That's a tremendous strike from Shabir Bapaitoti. The man makes a boundary for 4. Important runs for the team BSC Bapaitoti in this contest. And they will start little bit steady way. Now the man is ready to shift the gear for grabbing some runs. Shabir Bapaitoti, the young gun from BSC Bapaitoti. We have seen his quality in different times, in different occasion, in different tournament. He's a big match player. Nicely picks up that length and treated over the infield. Absolutely a fabulous boundary that giving lot of boost to the camps of BSC Bapaitoti. Here comes the ball. Ready for a switch. It not gets the right connection he wanted. Just happy with a single. They were crossing between the wickets. Moves on 15. 2 more balls to go from this over. Just gets a connection over there through the onside region. Mehrov there in the deep. And there will be the batters. Salsal there in the leaf, and there will be the batters cross between the wicket in couple of times. 17 by BSC Bapaitoti. Moving to the last ball of the over number 2.
Nice delivery appeal from the wicket keeper strongly, but not a confident one from the bowler. Leg by signal received. That's the end of the over. Over number 2 comfortably completed. Little bit runs produced by the batting side. 18 on card. 18 for the loss of 1 after 2 overs. BSC Bapai 30. They were lost the toes and sending up to bat first, and wonderful start provided by Sudeep the bowler, who just given away 7 runs in the first over and grabs a wicket of Fayaz the left and dangerous customer. After that, steady way. These two combo, these two right-hander batters. Shabir is a well-known figure. Is a well-known face of BSC Bapai Toti in major tournaments. On the other side, Fayaz having a lot of experience in underarm cricket. And here comes Unnikrishnan Kumbala, having a truckload of experience in underarm cricket, coming into the attack with the over number 3. Premeditated for that reverse hit fry the man Fayaz, but not getting the control, perfectly maintaining everything right on the track by Unnikrishnan Kumbala to start the action. He's a genius all-rounder cricketer, having a lot of authority, played a lot of cricket in Mannamkuzhi ground. And here comes again in front of youngster. That's a superb shot, absolutely a quality from Shabir Bapai Toti, makes it easy. 1 bounce and over the row for a boundary for 4. Magnificent stroke from Shabir Bapai Toti. How well the man times it right from the middle of the bat. He just makes a stroke towards a mid-wicket fence. That gives an absolute confident, and this time trying for a sweep shot. Just gets a scoops over there and takes a single. Interesting way. The ball grabbing from the field by the team. HB. 24 runs. That's showcasing a very good comeback by the batting side after they lost the first wicket. These two are making the partnership, building the innings in this evening. We have seen the 2 മത്സരങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് 50 മുകളിൽ 60 മുകളിലുള്ള സ്കോർ, അത് കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കുന്ന 2 മത്സരങ്ങൾ. That kind of mindset having by BSC Bapai Toti, they were ready to build the innings in a decent way. Nicely, watchfully giving the treatment. This is controlled cricketer. That's showcasing by Shabir, just giving the treatment through the line. A very, very well cricketing action that showcasing by Shabir Bapai Toti through the onside region. Plays it nicely. These two are very good at standing between the wicket. End of the over number 3 right now. 27 for 1 BSC Bapai Toti. 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുന്നു. 27 റൺസുകളുമായി BSC Bapai Toti മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ MPLന്റെ 10ാം എഡിഷൻ മണ്ണൻകുഴിയുടെ മൺതരികളെ കോരിത്തെരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 6 ദിനങ്ങൾ 6 ദിനരാത്രികളായുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ഉത്സവത്തിന് കാസർഗോഡിന്റെയും ദക്ഷിണ കർണാടകയും ഒന്നടങ്കം തയ്യാറെടുക്കുന്ന വേളയിൽ കായിക പ്രേമികളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. 2000-ൽ ആരംഭിച്ച ജേണി 26 വർഷങ്ങൾ. ഹനീഫ് ഉമ്മങ്ങ എന്ന ക്രിക്കറ്റിന്റെ അധികായൻ, സംഘാടകരുടെ സംഘാടകൻ എന്ന ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഹനീഫ് ഉമ്മങ്ങ, 1 man ആർമി. 26 വർഷത്തെ ഓർഗനൈസിംഗ് പവർ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വലിയ ഏടായി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ഒരു MPL 10 ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വാദകരുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ വലിയൊരു വിരുന്നാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. After stage of the first innings, 27 for 1 by BSC Bapai Toti. Here comes Nawaz Lofty, icon player from HB Papila, introduced into the middle to start the action for the bowling operation. Very well settled Fayaz on the other side as an icon for BSC Bapai Toti, and very good contribution by Shabir BSC Bapai Toti. Both are maintaining the rhythm.
They were now ruling the game with some runs, perfectly giving the treatment. A very good strategy they were working. And here comes Nawaz lefty. Such a lovely delivery. There will be a beautiful way the bat is coming back to second. It will be a little bit close. And look to be comfortable. Oh no! Umpire gives it to the third umpire. It goes upstairs. It for the run out check from the striker end. And the bat is trying for the second time. It was looks very tight in the end. And we have Mohan Yayadi as a third umpire. Shine Sports YouTube channel. Cricket actions കൃത്യമായി സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യൂട്യൂബിലൂടെ. എല്ലാ ആംഗിളും ഉപയോഗിച്ചത് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് തേർഡ് അമ്പയർ checking it again and again with the different angles of Shine Sports YouTube channel. It looks very close. What an attempt by the fielder. And Unni Krishnan Kumbala is always a genius. Heart is beating faster than ever for BSC Bapai 30. Everybody is excited to know that important decision. Not out is the call in the end. Very huge noise we heard from the dugout of BSC Bapai 30. 29 on card. Just a ball pass from the over number 4. Here comes Nawaz lefty. Takes it through the onside region. Nicely works over there. Just allowed a single on this occasion. Good piece of presentation. You have seen in the boundary line by Salsal. The fielder who is energetic, an electric hook. 30 on card. Here comes Nawaz lefty. Searching for the breakthrough. Lovely stroke, oh man, that is gorgeous way. Dispatched out of the ground by Shabir Bapai 30 in style. What a typical range of shot over the widest line. The man Shabir, who just making the innings in a super way, controlling the traffic in the middle by Shabir Bapai 30 as a batter, who guiding the innings in a thrilling way. The scorecard of BSC Bapai 30 that is going in a rocketed way. 38 on card. Way wide from the gate line. It will be a wide for sure. Another run in form of extra. Moves on 39. Still 2 more balls to go. Oh, bound him. That is typical Nawaz lefty's staggering delivery right on the bang bang. And Shabir Bapai 30 is working his own way to the dugout. A magnificent replay from the bowler. How well. Music operator, and here is Khalil Kandam Star joins us a new batter. What an innings played by Shabir Bapai 30. Just lift up the scorecard in a standard way. Oh, here is another batter delivery from the man Nawaz lefty,
just makes a noise with that wicket. End of the over number 4. 40 runs on card for the loss of 2. 40 റൺസുകളുമായി 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. BSC Bapayatoti. 2 more overs to go from the innings number 1. It was a decent score on the board. We have seen 65 in the first innings of this MPL 10. After that is the previous first innings. We have seen over 50. Very well defended by the teams in consecutive matches. That building a lot of confidence. Only Krishnan Kumbala is coming back into the attack. You can see it only 9 in the previous occasion. Here is Khalil Kandam Star on strike. The icon player on the other side for the team BSC, Fayaz, standing with 13. Almost runnable cricket that showcased by Fayaz. Nicely played, cuts it that one over the infield. Nicely played right on the in front of the wicket, and takes a couple of runs in an ease way by BSC Bapayatoti. One more cutter of delivery from Unni Krishnan. Cuts it really well by Khalil Kandam Star for a 2 runs. What a beautiful way it's working. Now trying for a lofted shot, not gets a control. It will be a chance, but comfortably. In the end, they were passed between the wickets. The intention of the batter, that is very important. They were ready to make everything, ready to convert into a runs into the scoreboard of BSC. Fabulous batting. Trying for a different type of fancy shot from Fayaz, but not gets a control. Only Krishnan Kumbala making it very perfectly on the track with his all experience by the staggering genius of Kumbala. Nicely bat on it, up on the face of the bat. Just gets the thick edge, and Khalil gets another single. His way, the batters produce some shot, but restricted from the boundary. That is very important point for Team B. HP Bapila, and there will be a shot and straight to the fielder. What a grab! What an outstanding catch it was taken by the fielder. Salute! What an entertaining one it was. Just in front of the row, the man very well judged it. Sensational Superman Salsal that gives a breakthrough. 45 for the loss of 3. Moving to the last ball of the over number 5. Here comes. Others comes as a new batter, plays it through the onset region into the square leg region, just takes a single, and others off the mark. Well. It is the end of the over in the end. 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 46 റൺസുകൾ, 46 runs for the loss of 3 after 5 overs. BSC Bapayatoti. An over to go from the innings. 46 is a decent fighting total in the account of BSC Bapayatoti. Credit goes to Shabir, who just generates a 6 and boundary, that bringing a standard of score at this stage for the team BSC Bapayatoti. And here it is, the bowler getting ready to start the action for the over number 6. Experienced Shamir Kaja coming into the attack with the over number 6, the last over of the innings. It is a time to change the gears up for the team BSC Bapayatoti to grab some extra bit of boundaries and sixes. They desperately need some boundaries.
Others on strike. Khalil on non-strike ascent. Shamir comes with an absolute beauty. Reduce the pace completely. And the man just concentrate on the track. Through the line. It was completely beaten. Good start. A dot ball to start by Shamir Kaja. Here comes again. Lovely delivery once again to the onside region. There will be an electric kick fielder. Salsal is active in every corner of mid-wicket to stop some runs. Moves on 47. Good start by Samir Kaja. As a bowler for the team, HB Popular. Here comes again. Oh, Kandam Star, that's a king melody from Khalil Kandam Star out of the park for 6 runs. What a shot with all the authority. Bang, bang. It was a cracker, jacker, bonger out of the ground for 6er. That brings up the 50 for the team BSC. If you are playing this shot in MCG Melbourne, it will clear the distance. Just directed through the onside region, ready to split, and what a quick attempt by the fielder. Outstanding fielding and restricted with another couple, but what a running between the wicket. BSC taking it into home. Absolutely well controlling by Khalil Kandam Star. 2 more balls to go. Samir Kaja coming again. Well ball, strong appeal, but not allowed. Well, coming back for second, but damage in the end. Through the non-strikers, and others just giving his place to put Khalil onto the strikers end for the last ball. What an excellent finishing. That eyeing by Khalil Kandam Star, we have seen it. Wonderful shot over the wideish long on. That created a lot of goosebumps to the camps of BSC Bapaidoti. 56 runs on card, and moving to the last ball of the innings number 1. Little bit decent way the over is progressing. 10 came from the first 5 balls of Samir Kaja. He was started superbly, but in the middle, Khalil lofted. Here comes the last ball. Samir Kaja coming. Rolling delivery and rocketed into the straight region. Wow! Magnificent save. The man on the boundary line. He have a mission. Who just makes an impact. Rajesh, you beauty. Rajesh Bekur. ഞരമ്പുകളെ തീപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സേവുമായി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മണ്ണൻകുഴിയുടെ മണ്ണിനെ ഇളക്കി മറിച്ചത് സേവ്. കിഡിലൻ, കിഡിലോൾ, കിഡിലോസ്കി. End of the innings number 1. 58 on card. 58 റൺസുകളുമായി BSC ബപ്പായത്തൊട്ടി തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റുമ്പോൾ ഷബീർ who create the energy in the first half. After that, Khalil Kandam Star who has finished the innings in style. 58 on card, 59 to chase. Music.
മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിലുള്ള ടീമുകൾ എത്തിച്ചേരുക. ടീം RGB ബേക്കൂർ, അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡി സൈനപ്പിന് വേണ്ടി കളിക്കാർ എത്തിച്ചേരുക. ആവേശം മനതല്ലുന്നു. മ്യൂസിക്, ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആക്ഷൻസ്. ഇത് MPL മാത്രം സ്വന്തമായ ആവേശഭരിതമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ഇന്നിംഗ്സിലേക്ക് പ്രീതം കുമ്പള. വെൽക്കം യു. Yes, thank you, Mr. Domin Michael. We enjoyed a lot in the first innings with the match between those teams. That is BSC Babai to Chicks, SP Popular, and have completed first innings with a scorecard of 58 runs and 59 is the victory target for Team Black, Team SP Popular. Here we are the openers. That is the captain itself for taking initiative to lead his team in the opener as a Vinny Krishnan and Ansara. Vinny Krishnan as well as Nawaz lefty. Yes, how we go with the first over here. Ball with the mark of Mr. Fayaz taking the guard of right hand around the wicket for Nawaz lefty. Yes, as we know, the Nawaz lefty all the way from Mangalore. The trump card key player from the side of SP Popular. Both the players having that confidential and having that experience in throughout the trump cricket. Yes, having with the first over. The woman number first, the first delivery with Fayaz here. Fayaz to Nawaz lefty. Yes, looking for the big shot. Nice little one toward the deep mid-wicket region and taken for couple of runs this time. Yes, completed a couple of runs. Very good running between the wickets. We can see from the batsman here, the fat guy, Mr. Vinny Krishnan Kumble. Have a look at the running between the wickets. Absolutely perfect. And the wickets, what a good running between the wicket we can see from both the batsmen in the first delivery of first over. Here we are in the second innings. First delivery have been completed. Second time for Nawaz here. Nicely, nice one this time. A dotted one. Very good. The line and land towards the stick was perfectly placed by Fayaz here in this particular occasion of over number 1 here. Yes, have a look at the pitching delivery towards the earth and in front of Nawaz this time lofted nicely. There is no fielder. One bounce boundary crossing the row of boundary line. 4 more addition to this scorecard. Have a look at the connection between ball and that was perfectly placed by Nawaz lefty here in this first innings over. Have a look at the stroke. Have a look at the magnificent stroke from the hands of Nawaz lefty in this first beginning over itself. Yes, this is what they have to do from the side of SP Popular to reach the victory target of 59. At this time, yes, crossing the finger, the big blow from the side of SP Popular. Nawaz lefty, have a look at the situation, have a look at the condition in the middle of over number first. Nawaz lefty walking back to the dugout here.
Would like to call Mr. Chammu Redstone, please come towards the commentary box, sir. Yes, here we go. We are in the first over here. 59 is victory target for team like SP Popular. We have the first over with the hands of Mr. Fayaz, who did perfect job in the first initial over. Have been taken a wicket off Nawaz left with the trump card from the side of SP Popular, and this is a big blow for the team like team SP Popular here. Yes, completed 4 deliveries, 2 more deliveries left in this particular over number 1. We are watching MPL season 10 2026. The history of Dram cricket. The 15 lakh with the Champions Trophy and 7 lakh with the Runners Trophy, which will be awarded for the champions as well as runners team of MPL season 10, and we have attractive prizes like gold coins, home theatre, and two-wheeler bikes. This is excitement for cricket lovers, cricket players to play such a condition of game like Antram cricket in this particular stadium of Mannamkuzhi, which is presented by selected Mannamkuzhi Arts and Sports Club with the leadership of Mr. Anif Umanga. Yes, a live telecasting which is providing that is live telecast supporters Shine Sports all the way from Puttur. They are telecasting live tournament of this particular Antram cricket. Definitely this time we are going to miss Naushad Burak, the commentator of Upala is watching this particular match by sitting in Dubai, and definitely we are going to miss him in this particular season number 10 here. Yes, a scorecard 6 on the board, loss of 1 wicket here. The first over is in progress. We have completed 4 deliveries, 2 more deliveries have to go in this particular over number 1 here. The fire sticking the guard of right over the stumps for the batter here. Salam Power introduced from the side of SP Popular. Nicely delivered, nice stroke towards the ball region, and there is a chance of allowed, and umpire goes for upstairs this time. Very good correction and quick throw towards the bowlers, and this time there is a fraction of seconds stamping running out over there, and umpire goes for upstairs here. We have to wait for third umpire for the decision for the particular run out over here.
which is Fires have been taken. Two valuable wicket from the side of HP Popular. The trump card of HP Popular. That's what Fayaz did the perfect job in the first over here. Right over around the wicket for Uni Krishnan. Shabi to Uni Krishnan. First time, second over is in progress. Is nicely delivered towards the mid wicket. Reads in fielder perfectly fixed over there. That is what a feeling set up by Shabir here. The young man, young guy, the naughty boy from BSc Bapai 30 is doing perfect job in the bowling mark here. Initial stage of second over, taking the guard of right and round the wicket for the big man of Antram cricket. That is Uni Krishnan Kumbala here. Second delivery right and round the wicket for Uni Krishnan. Nicely, nice delivery, nice delivery. Big appeal from bowlers as well as keepers, but that was not confidential. It is directly hit towards the pad of the batsman, and this time one more dotted delivery over here. Very good start of second over. Two consecutive dotted delivery from the hands of Shabir Bapaitodi, the captain. The captain itself taken responsibility. Captain itself taken initiative to lead his team in the over number second here. Once again for Uni Krishnan Kumbala here, taking the guard of right and around the wicket for Uni Krishnan, pitching the deliveries to the earth, and Uni Krishnan this time going for a big shot. Nicely driven towards the deep onside reach and taken comfortable single there. Have a look at the connection. Have a look at the connection between ball was perfectly groundly shotted towards the deep onside region and taken comfortable single over there. Scorecard slightly moving towards 8 on the board over here. Second over
deliveries in progress. 3 deliveries already we have completed. 3 more deliveries are left in this particular over number second. So far, Shabir doing perfect job in the over number second. Once again, for the new man introduced from the side of HP Papila, the Kiran, the young man from the side of HP Papila, nicely delivered toward the back region, and this time go for a couple of runs. Bit of pumble in the deep region. 2 more addition for the scorecard here. Very good running between the wicket. We can see from both the batsmen, that is only Krishnan Kimble as well as Kiran Kichu. The small guy, the young talent which is in action, the young blood which is in action right now. Yes, both the batsmen have to go for big shots to lead their team in the higher position of the table over here in this particular over number second. Once again, Shabi to Kiran. Shabi to Kiran this time once again facing nicely delivered towards the deep reach, and there is a chance of catch, and this time once again a couple of run adding to the scorecard. Very good lift towards the deep region and taken comfortable couple of runs over there. Very good running between the wickets. 2 runs have been added to the scorecard. Have a look at the stroke from the hands of Kiran here. With good stylish stroke we have seen in the deep long off region and taken comfortable couple of runs for their team here. Once again, Shabi to Kiran here. The last delivery of second over. Shabi to Kiran Kicho. Nicely delivered this time, and bit of humble. Meanwhile, cross single here. 1 more addition to the scorecard. The scorecard is 13 on the board after completion of 2 overs, loss of 2 wickets. Yes, so far very good bowling mark they have seen here from the BSC Bapai 30. Yes, upstairs, going for upstairs to take a wide here. Yes, from umpire's end it is a fair delivery, but the batsman wants to go for a review. We are waiting for third umpire decision over here for a wide call. Yes, definitely Shine Sports supporting this particular live session of this match, and it is a live telecast which is providing for us to sit at our workplace, to sit at our home and enjoy this particular tournament. Those who are in out of the country, they can enjoy this particular tournament by sitting their place with the live telecast over here. Yes, it is a fair delivery, right decision from third umpire, and it's going to be a fair delivery. Yes, completion of over number second. The scorecard is 13 on the board, loss of 2 wickets here. 2 trump cards of team HP Papila sitting in the dugout right now, because that was the disappointment for them in this first initial stage of over number first, and this is what BSC Bapai 30 is doing in their bowling strategy, using their bowling experience. The captain Shabir did a perfect job in the second over and just left 4 runs, I guess, in the second over. Yes, Shabir did perfect job in second over of this particular match between those teams. Yes, the new bowler once again captain bring back Fayaz into the attack in the bowling mark, because captain knows that Fayaz is trump bowler from the side of BSC Bapai 30. He have that capability, he have that caliber to bowl perfectly, nicely driven towards the long on region and taken here comfortable single. Very good fielding from long onside region fielder, we can see. And there is no chance for go for a couple of runs. Satisfied with single run over here. 1 more addition in the form of single run. Deep region fielders are fielding, doing perfect job in the deep region over there. This time nicely driven to the onside region, and
Very good fielding from the deep onside region, taken comfortable single there. One more addition to the scorecard. The scorecard is 15 on the board, just rotating the strike here and there because it's 59 runs. We are in the third over, have to go for maximums and boundaries to get easier of target score of 59 runs. Very good delivery from Fayaz here. Dotted delivery. What a piece of delivery have been placing by the bowler. Mr. Fayaz doing beautiful over here in the over number 3. Yes, just left 2 runs and one dotted delivery. We have completed 3 deliveries, 3 more delivery left in this particular over number 3. Yes, some discussion is going in the middle. They have sending one cover point fielder into the deep extra covers. Yes, changing have been done. Getting one player towards the extra cover region and sending one player towards the point cover region to setting up the fielder for the batsman like Kiran Kichu. As I told, young man, young talent, definitely he has that caliber to hit, go for maximum. So once again, Fayaz to Kichu here, going for big shot, nicely driven towards the deep square leg region and taken here, comfortable single, go for a couple of runs and Sam completed couple of runs here. Very good running between the wickets here, quick running between the wicket we can see from the both the batsmen. That is Kiran Kichu as well as Uni Krishnan Kumble. Till Uni Krishnan Kumble is on strike, definitely anything will be possible for team like Team HP Papila. The captain Uni Krishnan is on crease right now. He can do some magical strokes. He can hit some magical hits over here. Big appeal this time. Rising fingers. One more wicket have been fallen. The big wicket from the side of HP Papila. Kiran Kichu walking back to the dugout. Yes, 3 wickets have been fallen from the side of HP Papila. What a good performance in the bowling mark we can see from Fayaz here. 3 deliveries have been completed. 4 runs left and have taken one valuable wicket of Kiran Kichu from the side of HP Papila. One side, Uni Krishnan Kumble came as an opener and still he's on crease right now. Yes, all the players are coming and going in the regular intervals. Once again, the new man comes to join with the Uni Krishna. Yeah, this time the big appeal and that was not confidential enough. Meanwhile, yes, ball hitting the pad and goes for the single here in the form of leg by. One more addition to the scorecard here after completion of 3 overs. The scorecard is 18 on the board, loss of 3 wickets. Yes, we have completed over number 3. The scorecard is 18 on the board, loss of 3 wickets. Just absolutely 3 trump card have been sitting in the dugout right now. That which is definitely makes damage for team like HP Papila. 59 is the victory target, still 18 on the board. They have to do some aggressive performance in coming 3 overs, 6 overs match. Just 18 deliveries are left in front of Unni Krishnan Kumble, the captain of HP Papila. Yes, definitely Unni Krishnan can make any possibilities to win this match because he is that having that much
efficient, is having that much caliber experience in the under-arm cricket, that definitely which helps in such condition, such situation of this particular match between those teams. Meanwhile, same thing, the bowling department of BSC Babai Toti is working perfectly here. Taken 3 wickets in 3 overs, just left 18 runs in the 3 overs. That is a magnificent start from the side of BSC Babai Toti, we can see so far here. Yes, one side we have Shabir Bapai Toti, another one side we have Oni Krishnan Kumbale. Definitely both one young man as well as one elder man from the side of HB Papila. Yes, definitely we have to wait and see what going to happen in this particular match between those teams. New man, the captain brings new man here. Some other power came as a bowling mark here, introduced from the side of BSC Bapai 30. Yes, once again first delivery, looking for the big shot here. There is a fumble with the wicket keeper. Meanwhile, had taken advantage and taken one single run over there. One more addition to this score, 19 on the board. Fourth over is in progress. We have 5 more delivery left in this particular over number 4. Once again, Sama taking the guard of right hand over the wicket for Uni Krishnan Kumble. Yes, sir. Oni Krishnan Kumble this time going for a big shot this time. Nicely driven and goes for single run here. Very good line and length which is placing by Samad here. The batsman is not at all going for a big shot, but not connected this time perfectly. That's what Samad is doing here. Very consistency in the line and length towards the tick was placing perfectly here. Yes, once again Samad to the new batter here, going for a big shot, but this time there is no connection at all with the bat and ball. Once again, one more addition in the form of leg by. Yes, 21 on the board after completion of 3 deliveries. What a good start of over number 4. Samad Power doing perfect job for team like team BSC Bapai Toti. That is what Shabir, that captain, brings Samad to bowling attack here. Once again this time a crossing here, a cross shot, going for a cross shot, but this time failed by Uni Krishnan Kumble. Yes, I have been seeing Uni Krishnan's performance. He is not in good form. We haven't seen any big shots from the side of Uni Krishnan Kumble. Yes, going for the sweep this time. Big appeal, and umpire is in unmode. So far, what a brilliant bowling from the hands of Samad Pavu here. Completed 5 deliveries left. 3 runs in 5 deliveries. What a comeback from BSC Bapai Toti. That is what Samad is doing. Perfect job in this fourth over. Beautifully placing by the bowler here. The next match between match number 4, that is team RGB Bekura versus Alif Star Musodi. Yes, I would like to call both the captains of those teams. Please come forward for the tossing of upcoming match between those teams. Yes, very good stroke from the hands of Uni Krishnan Kumble here. Nicely batted towards the covers region for the boundary. After completion of over number 4, the scorecard is 25 on the board. Loss of 3 wickets. Come towards Mike Point for the tossing of upcoming match. The captain of RGB Bekura. Yes, last ball. It is maximum from Uni Krishnan Kumble. Yes, definitely. It is going to be a huge difference in the batting mark here. We are completed
over number 4 and fifth over is in progress right now. 59 is a victory target for a team like Team HP Papila. As I told, one side we have Unni Krishnan Kumble. Till Unni Krishnan Kumble is increased, definitely there is a chance of winning for the team like Team HP Papila. Yes, sir. Over number 5 here, taking the guard and nicely bowled. Very perfect, very perfect. Bit of bumble, never mind. Just satisfied with single here. Very good rolling delivery. It was rocket speed towards the stick was perfectly placed by the bowler here. Mehrov came as a forward number 5 over here from the side of BSC Bapai Toti. Shabir is doing perfect job sending right bowler at the right moment of the situation of over here. That is what the captaincy of Shabir Bapai Toti. Yes, a young man, young captain from the side of BSC Bapai Toti. Second delivery towards, yes, this time Uni Krishnan Kumble. This time Uni Krishnan Kumble walks back to the dugout here. This time, what a delivery from the hands of Mehrov straight towards the Udan stick. Have a look at the delivery. Have a look at the delivery from the hands of Mehrov. Did perfect job in the 5th over here, sending back Unni Krishnan towards the dugout here. What a good start of 5th over here from Mehrov. Captain Unni Krishnan walks back to the dugout here. Mehrov sends Unni Krishnan towards the dugout here. Very good start of over number 5 from the hands of Mehrov for a team like Team BSC Bapai 30. The new man introduced, that is Salsal from the side of HP Papila here for Salsal. This time going for a big shot and nicely lofted towards the deeper longer region and taken comfortable single here. Very good fielding performance we can see from Khalil Kandam Star, who is placed in the deep long on region and there is no chance for running for the couple of runs for the batters. Nicely collected and given right to the bowler here. A very good bowling performance from Mehrov have been collected. One big wicket from the side of HP Papila. Once again, the 4th delivery of this over. Nice try. What a good effort from behind the stump. Works perfectly there. Not letting the batsman to go for singles as well as couple of runs. That's what completely tackling the batsman over here in this particular situation. That is what teamwork of BSC Bapai we can see in particular over number 5 here. Very good effort from the side of BSC Bapai 30. All things have been going perfectly for BSC here. This time nicely played and one more addition to the scorecard. The scorecard slightly moving towards 30 on the board. We have already lost 4 wickets. Last one more delivery left in this particular over number 5. 59 is the victory target. It is quite difficult to take within 7 deliveries over here. Yes, last delivery of 5th over. This was a very good over which is going to come to an end within last delivery. Yes, Mehrov timeout indication now from the center. One fielder has to get into this 30-yard cycle here. Yes, definitely Shabir have to change some situation of fielding for the timeout call which is came from the center. Definitely the officials, umpires are working very perfectly in this particular MPL season 10. We have Mr. Saifuddin as well as Harish Patel as umpire officials of this particular match, and after completion of over number 5, the scorecard is 31 on the board, loss of 4 wickets. Yes, celebration of MPL season 10 already started here with the cracking the crackers. Yes, definitely the ground is going to be crowded over here. This is the time of celebration. It is not
बाद भी रंजीत और स्ट्राइक पर साजिद कोडिकल उनके लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं। ओवर द विकेट बायर कैकंबर उड़न से पहली गेंद रंजीत, पहली गेंद पर उठा कर खेला है, हवा पर गेंद, स्वागत की है छक्के लगाकर साजिद ने, टन टनाटन छक्का, बिल्कुल खाली जगह है। बॉल बॉयज जो बाहर गए हुए गेंद को अंदर की तरफ भेजिए जल्द से जल्द। फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके के साथ खेले हैं, तब एक रन। तीन गेंद की समाप्ति पर 8 रन, यहां पर शानदार एक छक्के की मदद से फिर एक बार तैयारी करते हुए रंजीत, दूर वाली छूट से ओवर द विकेट रंजीत, और इस गेंद को खेला गया है कवर ड्राइव के ऊपर, शानदार खूबसूरत शॉट, देखिए कितनी शानदार शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर को, सीमा रेखे के बाहर, टन टनाटन चौका। पांच गेंदें समाप्त हुए, तब 16 रन। फिर एक बार रंजीत दूर वाली चौक से ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है, और अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, ब्यूटीफुल कमबैक, और इसी के साथ ओवर के समाप्त हुए हैं 16 रन पहली ओवर की समाप्ति पर आरजीबी के खाते पर। पहली ओवर की समाप्ति पर 16 रन बिना किसी नुकसान के साथ गिरी कुंबला को पहली बार योगदान मिलते हुए दूर वाली छोर से गेंदबाजी में बदलाव लाया है। कप्तान गेंदबाजी के लिए तैयारी हुए हैं चम्मी वसंगाड़ी अलिफ स्टार के लिए कप्तान के रूप में यहां पर योगदान देते हुए अंडर आर्म क्रिकेट में पिछले 25 साल से बहुत बड़े योगदान देते हुए खिलाड़ी हैं। बहुत खूबसूरत ऑलराउंडर के रूप में जाना जाती है इनको। लंबे कदमों के साथ लंबे इंसान हिंदुस्तानी स्कूलन से गेंदबाजी के लिए तैयारी करते हुए अराउंड द विकेट उल्टा बल्ले में खेलने के लिए प्रयास किए हैं। यहां पर एक रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किया, तब तक अंपायर के इशारा तो बल्ले के बाहर हिस्सा लगे हैं, इस वजह से कोई इशारा नहीं दिए।
तब तक एक रनों की संख्या बढ़ते हुए 17 रन, 17 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार साजिद पास स्ट्राइक पर आ चुके हैं। पहली ओवर में धुआंधारी शॉट खेले थे इन्होंने रंजीत को सामना करते हुए। अब तो लेग कटर के सामना करने के लिए तैयार है। लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए चिम्मी वसंगाड़ी। चिम्मी वसंगाड़ी तैयार है। दूर वाली चौसा राउंड द विकेट और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। मिड विकेट बिल्कुल खाली जगह, उसी जगह पर खेलते हुए फील्डर मिड विकेट से आकर फील्डर ने तेजी के साथ गेंद को रोके हैं। तब तक 2 रन आसानी के साथ और 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 19। अगली गेंद चमी, बढ़िया गेंद, अपील अपील अपील। और जिस अपील आगे बढ़ रही है बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ विकेट कीपर ने आगे बढ़े, तब तक अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं है। चम्मी वसंगाड़ी की लेग ब्रेक गेंद और निश्चित रूप में विकेट कीपर के हाथ पर गेंद थी। इसकी वजह क्या है ये तो अंपायरों ने बातचीत तो जरूर होंगे। मैदान के बीचों बीच में आ गई है पिच के। तब तक शुरुआत देखिए, शानदार शुरुआत ही दिए थे साजिद ने, लाजवाब शुरुआत ही दिए। चक्के चौके लगाकर पहली ओवर को स्वागत किए हैं। दूसरी ओवर तो चम्मी वसंगाड़ी के शानदार गेंदबाजी जा रही है। 2 गेंदे फेंक चुके हैं। तब तक रनों की संख्या 19 पर है। कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं। डोटन डिलीवरी मेरे ख्याल में, जी हां डोटन डिलीवरी। 3 गेंदे फेंक चुके हैं चम्मी वसंगाड़ी बहुत आत्मविश्वास के साथ जिस अपील किए थे विकेट कीपर ने। अब तो अंपायर ने कहा कि कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं। अब चौथी गेंद लेकर तैयार है। दूर वाली चौसा राउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए चम्मी वसंगाड़ी फिर एक बार लंबे कदमों को इस्तेमाल करते हैं इन्होंने। अब साजिद स्ट्राइक पर मौजूद है। नॉस्टेकन पर गिरी कुंबला, कप्तान और आइकॉन के बीच में लाजवाब पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी 19 रन तक पहुंच चुके हैं। ब्रेक थ्रू के लिए इंतजार कर रही है चम्मी अराउंड द विकेट। ओहो अच्छी गेंद थी, मिड विकेट पर खेला गया है। फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया। तब तक दूसरे रन के लिए तोड़ा जा रही है। 2 रन भी पूरा कर चुके हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट, गिरी के आगे कोई भी नहीं है। कई साल से इनको देख रहा हूं कि रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छे हैं इनके। अगर साजिद के जैसे जोड़ी मिल गई तब कोई डरने की सवाल तो फायदा नहीं होंगे। अब अगली गेंद लेकर तैयार है। 4 गेंदे फेंक चुके हैं। स्कोर कार्ड पर 21 यानी कि 21 रन, 5 रन 4 गेंदों पर। फिर एक बार दूर वाली चोर से अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही है। तब स्ट्राइक पर साजिद और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेलना चाहा। अपील अपील अपील, लेकिन जिस अपील को इंकार की है अंपायर ने लेग बाई की इशारा किए। तब तक 1 रन तो निश्चित रूप में मिले हैं। 22 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1.5 ओवर। आखिरी गेंदे बचे हैं। लास्ट बॉल टू गो। चम्मी वसंगाड़ी शानदार गेंदबाजी की मजारा करते हुए दूसरी ओवर में 5 गेंदे फेंक चुके हैं। 6 रन कर चुके हैं। इनके ओवर में 6 रन बटोर लिया गया है आरजीबी। फिर एक बार दूर वाली चोर से अराउंड द विकेट। गिरी कुंबला के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं। अच्छी गेंद उठा कर खेला है। मिड विकेट पर गेंद लॉन्ग ऑन की खाली जगह, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर। टन टना टन चौका। इस बार गिरी के तरफ से इस चौका आए हैं। बिल्कुल अच्छी चौका, खाली जगह पर इन्होंने ड्राइव की है। शानदार चौके के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 26 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर।
तीसरे ओवर की शुरुआत ही करना चाहते हैं गेंदबाज अजय। अजय तैयार है, दूर वाली 400 विकेट। अजय की गेंद में पहली गेंद में रक्षात्मक तरीके के साथ खेले हैं, तब तक 1 रन और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 27 ऑन द बोर्ड। अब जा रही हैं, अब देख रही हैं 4th मैच इन दिस डे, यानी कि इस टूर्नामेंट के पहले दिन आप देख रही है, चौथी मैच आप देख रही हैं अलिफ स्टार मुसोडी वर्सेस आरजीबी बेकुर, टीम आरजीबी बेकुर के बीच में पहली बल्लेबाजी करते हुए और रक्षात्मक तरीके के साथ इस गेंद को कितने शानदारी के साथ इन्होंने खेले हैं। देखिए गिरी कुंबला हल्के से पुश की है, मिड ऑफ सर्कल के अंदर फील्ड थे, उनके हाथ पर पहुंचने से पहले 1 रन के लिए जगह बनाई, तब तक रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 28 ऑन द बोर्ड, 28 रन। साजिद अभी भी मौजूद है स्ट्राइक पर। फिर एक बार तैयारी है तीसरी ओवर के लिए, तीसरी ओवर के तीसरी गेंद लेकर तैयार है अजय। तो साजिद जाने दिए विकेट कीपर की तैनात पर, तब रनआउट के लिए खतरा, वाइड के इशारा किए और रनआउट के लिए थर्ड अंपायर के मदद मांग चुके हैं। सैफुद्दीन यहां पर तीसरी अंपायर के रूप में सैफुद्दीन मैंगलोर मौजूद है। तब तक यहां पर तीसरी और इसी के साथ आउट, पहली विकेट के पतन वाइड और आउट गिरी कुंबला डिपास, कप्तान बैक टू द ब्रेक थ्रू जरूर मिले, बिल्कुल
ये एक जमाने में अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है अंडरआर्म क्रिकेट के, जहां इरफान पठान जाना जाती थी अंडरआर्म क्रिकेट के। स्वागत करना चाहता हूं सिद्दीक बायार। फिर एक बार नए ओवर की इंतजार कर रही है। नए ओवर के रूप में गेंदबाज भी तैयार हो चुके हैं। न्यूमैन रंजीत के वापस आगमन हुए हैं। दूसरी ओवर इनके कोटे की। रंजीत पहली ओवर महंगी साबित हुए थे, उस वजह से इनको देरी पर लाया गया है दूसरी कोटे पे दूसरी ओवर फेंकने के लिए। इम्तियाज तो शॉर्ट लेग पर दौड़कर गेंद को उठाए, तब तक एक रन और इस एक रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 42 ऑन द बोर्ड। 42 रन पर पहुंच चुके हैं आरजीबी की खाता। अब रंजीत तो वापस आ चुके हैं। फिर एक बार रंजीत तैयार है, दूर वाली चोट से ओवर द विकेट और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है। फील्डर तो बिल्कुल खाली जगह थे, उसी जगह पर खेले हैं, तब तक कोई फील्डर मौजूद नहीं थी। एक रन तो निश्चित रूप में मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 43 ऑन द बोर्ड। इस पार्टनरशिप तो आरजीबी के लिए बेहतर पार्टनरशिप दिख रही है। दोनों विकेट एक साथ गए थे, आइकॉन और कप्तान। पूरी तरह डोड हुए और विकेट कीपर के खंदे के ऊपर गेंद गई थी, तब अंपायर ने कहा कि विकेट कीपर के गलती से इस रन मिले हैं। बाई के इशारा किए और इस बाई के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 44 ऑन द बोर्ड। 44 रन खाते पर है। अब दूर वाली चोट से फिर एक बार तैयारी करते हुए अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद और इसी के साथ इस साझेदारी को तोड़ दिया गया है। फिर एक ब्रेक थ्रू यहां पर रंजीत के नाम पर। रंजीत के नाम पर बड़े विकेट यहां पर मिले। वासिम बाकर बैल रिटर्न टू द पवेलियन, बैक टू द पवेलियन। अब नए खिलाड़ी की आगमन दिख रही है। नए खिलाड़ी की आगमन वासिम के निर्गमन के बाद। आशिर मुडम्बाइल, उनके आगमन दिख रही है। बहुत बड़े नाम है इनके। करियर के शुरुआत में बहुत बड़े शुरुआती किए थे, उसके बाद कहीं जगह पर भी इन्होंने सर नहीं झुकाए। अपनी दर्जा तो नाम, अपने नाम तो हर जगह में दर्जा करते हैं इस खिलाड़ी। आशिर मुडम्बाइल है इनके नाम। अब तैयार है रंजीत। अंडरआर्म क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों से एक है। दक्षिण कन्नड़ जिला की नामदार खिलाड़ी है रंजीत। पहली ओवर में साजिद ने पूरी तरह धुलाई किए थे, दुआदारी शुरुआती किए थे। अब तो उनके खोटे के दूसरी ओवर, इनिंग्स के 5वीं ओवर। रंजीत तैयार हैं। आशिर मुडम्बाइल के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं। इम्तियाज विकेट कीपर के रूप में। अच्छी गेंद। इम्तियाज तो मेरे ख्याल में उनके हाथ पर गेंद नहीं रुकते हैं, क्योंकि रंजीत के जैसे गेंदबाज के सामना करना उतनी आसान काम तो नहीं है। अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे अच्छे विकेट कीपरों से एक है इम्तियाज पसोट, लेकिन रंजीत के जैसे गेंदबाज के सामने दूसरी बार है भाई के रूप में रन दे रही है। तब यहां पर ओवर खत्म हो चुके हैं। 45 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 9% पर पहुंच चुके हैं स्कोर कार्ड। देखिए शुरुआत 16 के थी, दूसरी ओवर समाप्त होने में 12.5 का थी, 12.5 थे और उसके बाद 11 तक पहुंचे और उसके बाद देखिए 44 11 पर थे। 5वीं ओवर हुए हैं, अब तो 9% पहुंच चुके हैं। आखिरी ओवर बचे हैं। आप देख रही है एमपीएल सीजन 10, 10वीं बार एमपीएल की चेहरा देख रही है आप। और यूट्यूब के जरिए मैच देखने वाली सभी दोस्तों को स्वागत करना चाहता हूं। लाजवाब एमपीएल सीजन 10 मन्नमकुझी स्टेडियम पर आप देख रही है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। अलग अलग मकानों के 100 के ऊपर जो फ्लैक्स बोर्ड लगी हुए हैं और उसी तरह चमकते हुए फ्लड लाइट।
निजार बेजंगला आखिरी ओवर फेंकने के लिए तैयार है। तब रक्षात्मक तरीके के साथ इस गेंद को खेला गया है अज्जू ने। और ये देखिए लेजी 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 के ऊपर लेजी, और लेजी फील किए, तब लेजी फील किए, तब दूसरे रन के लिए यहां पर कोशिश की है। तब बल्लेबाज तो वापस आ रही है, लेकिन अंपायर ने तीसरी अंपायर के मदद मांगे हैं। मेरे ख्याल में उनको कोई भरोसा नहीं है बल्लेबाज को। वापस आने के लिए कोशिश किए थे, तब अंपायर ने तीसरी अंपायर के मदद मांगे हैं। ये देखकर वापस खड़े हो गए। तीसरे अंपायर के रूप में सैफुद्दीन मैंगलोर हमारे साथ मौजूद हैं, और फील्ड अंपायर के रूप में हरीश पटेल और मोहन अय्याडी अंडरआर्म क्रिकेट के नामदार अंपायर्स पैनल यहां पर लाए गए हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं अनीफ उमंगा को। अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे श्रेष्ठ जो क्रिकेट टूर्नामेंट आज तक नहीं देखे हैं, 15 लाख के क्रिकेट टूर्नामेंट अंडरआर्म क्रिकेट में पहली बार देख रहा हूं। लाजवाब सेटअप किए हैं, बंदोबस्त किए हैं, और इस प्रतियोगिता देखने वाले सभी दोस्तों को स्वागत करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के दिन पर कठिन धूप थे, गर्मा गर्म थे आज के दिन, लेकिन हल्के हवा आने लगे हैं इस शाम पर। गर्मा गर्म को हटाने के लिए यहां पर मैदान पर आकर बैठकर खेल देख रही है, आनंद उठा रही है, सबको स्वागत करना चाहता हूं। खामोश बैठे हैं और आखिरी दिन तक इंतजार करेंगे। आखिरी दिन जो दरिया की तरह, और नॉट आउट का इशारा किए हैं, नॉट आउट। ये तो अजीब बात है, जो बल्लेबाज को उतनी विश्वास नहीं थी, फिर भी इसलिए कहते हैं कि डिजिटल संविधान यहां पर उपयोग किए हैं, तब नॉट आउट कहा। അൻസാർ കജ അതേപോലെ വിനീത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടീമിനൊപ്പം ചേരുക. निजार बिजंगला फिर एक बार अराउंड द विकेट, मिड विकेट पर खेला गया। तब तक फील्डर मौजूद, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया, तब तक 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 47 ऑन द बोर्ड। ऑन द बोर्ड। निजार बिजंगला अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है। काफी मेहमान यहां पर आकर बैठे हुए हैं, कुछ ही देर में इनॉग्रेशन फंक्शन यहां पर जारी रखेंगे। सबको स्वागत करना चाहता हूं। आज शाम में ही रिपोर्ट किए हैं हमारी प्रसिद्ध मेहमान, प्रमुख मेहमान शमीम कलपारा यहां पर हमारे साथ मौजूद है। साली तंगल की आगमन दिख रही है, साली तंगल की आगमन दिख रही है। साली जी स्वागत करना चाहता हूं, वेलकम सर। अब टाइम आउट के इशारा किए हैं अंपायर ने, तब समझना चाहिए कि 6 के जगह में 7 हो जाएंगे, जो 38 यार्ड के अंदर 30 तारीख के अंदर 8 खिलाड़ी 7 खिलाड़ी हो जाएंगे। अब तो तैयार हैं निजार बिजंगला। 49 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5.3 ओवर। 3 गेंदे फेंक चुके हैं। फिर एक बार तैयार है निजार बिजंगला। आप देर करेंगे फिर भी आपको पनिशमेंट तो जरूर मिलेंगे आपकी टीम के लिए। अब अगली गेंद दूरबाली चूसर ऑन द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है, ऑन द विकेट। और इसी के साथ बहुत अच्छी गेंद थी, लॉन्ग ऑन पर प्रहार किए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 50 रन पूरा हो चुके हैं आरजीबी की खाते पर। 50 कम सब। 2 गेंदे बचे हैं। देखिए फ्लडलाइट चालू होने के बाद 58 रन के लक्ष्य को पीछा किए थे।
Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello. MPL-ന്റെ 10ാം പതിപ്പ് ഇന്ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ ഈ നാടിനെ ഒന്നാകെ ഉത്സവ ലഹരിയിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ MPL 10ാം പതിപ്പ് മുന്നേറ്റം കുറിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ MPL-ന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഈ അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഈ MPL-ന്റെ കൂടെ MPL ലക്കി ഡ്രോ കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1ാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് ഇരുചക്ര വാഹനം, 2ാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ, 3ാം സ്ഥാനവും മൊബൈൽ ഫോൺ തന്നെയാണെന്നറിയുന്നു. വളരെ മികച്ച പ്രൈസുകൾ നൽകുന്ന ആ ലക്കി കൂപ്പൺ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വാങ്ങണം. കാരണം ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. 100 രൂപ മുതൽ മുടക്കിക്കൊണ്ട് ആ ടിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും വാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ഓവർ ടു ഡാർവിൻ. Check. Check. Thank you, Abdurrahman Bekur. Good evening once again and welcome back to the second innings. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡി ബിച്ച് ബോയ്സിനെതിരെ ഒരു ചേസിനിറങ്ങുമ്പോൾ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രഹപാഠം തീർച്ചയായും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തവണ കൃത്യമായി ടാർഗറ്റിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലോടുകൂടി ഓപ്പണേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് the team RGB Bekur playing their first match, and here comes the start. 55 runs of chasing target in 36 balls. 36 പന്തിൽ 55 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റുമായി RGB Bekurനെതിരെ അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡി. Here comes the over number 1. Mashood is coming. On the other side, Mustafa and Chemi. That is going little bit far away to start over there. Chemi and Mustafa, the opening batters, they were crossed between the wickets. Oh, there will be a no ball signal to start the proceedings. No ball and 1. 2 runs resulted in form of extra. Straight away that opened the scorecard of Alif Star Musodi. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആവേശകരമായ മണ്ണംകുഴിയുടെ മൈതാനത്ത് MPL-ന്റെ 10ാം പതിപ്പ് MPL സീസൺ 10 അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുക ജേതാക്കൾക്കും റണ്ണേഴ്സിനും നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ 1 മാൻ ആർമിയായി നിൽക്കുന്ന ഹനീഫ് ഉമ്മങ്ങ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു നാമം കൂടിയാണ് ഷമീം സമാൻ കൽപ്പാറ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പിന്തുണ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിനെ കേരളക്കര കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ടെന്നീസ് ബോൾ മാമാങ്കമായി ഉയർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയാണ്. Thank you, Shamim Zaman Kalpara, for making this tournament wonderful with your absolute phenomenal support. Thank you very much, Shamim Zaman Kalpara.
There will be 3 runs on card by the team Alif Star Musodi. Just past a single delivery. Here comes Mashud again, coming with over the wicket. That is going away wide for sure. There will be no chance to move between the wicket on this occasion. It was tightened inside the ring. But there will be a wide. We have seen some extras to start the proceedings of this second innings by Mashud, the strike bowler of RGB Bekur. Just looking for the right line in front of Chemi Osangadi. Oh, he's in the right touch. And what a clever placement over there. Beats the infield. There is a man coming from the outfield. The infield just works it superbly. Stops it with a couple of runs. Good piece of intent. Very well. Confidently, the man Chemi just guiding the innings. Couple of runs comfortably completed by Alif Star Musodi. This is a much needed match for the team Alif Star. A game lost in the starting session. Lovely piece of a rolling delivery, but gone away from the guideline. Oh, runs are leaking from the hands of the bowler. It will be leaking towards the end. Wide is a signal. 5 wides. It's a gift. Varnakadalasil പൊതിഞ്ഞു നൽകുകയാണ് RGB ബേക്കൂറിന്റെ നിരയിൽ നിന്നും Alif Star Musodiക്ക് 5 റൺസിന്റെ ഗിഫ്റ്റ്. Moving on double digits. 11 on card by Alif Star. A star batter on the other side by Chemi Osangadi. കൃത്യമായി ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ തന്റെ വ്യക്തമായ ബാറ്റിംഗ് സ്പന്ദനവുമായി തുടങ്ങിയ ചെമി ഒസങ്കടി. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടം കാണിച്ച ചെമി, ബട്ട് ഒടുവിൽ ബിച്ചു ബോയ്സ് മത്സരം റാഞ്ചുമ്പോൾ ഇത്തവണ ത്രൂ ദി ഓഫ് സൈഡ് റീജിയൻ blocked it nicely by the fielder. Just takes a single. 12 runs on card. A very good start by Alif Star. Still 3 more balls to go from the first over. Already gets a tremendous start. A fascinating start. While we counting the numbers on the scorecard, Alif Star, they got a phenomenal start for sure. Mashud need to change the plan. Coming with over the wickets. In front of the left-hander, it's in the air. It will be a trouble. Oh my goodness. There will be a drop catch. Easy as you like. That was comes and dipping on the hands of the fielder. It was went in vain in the end. Gets a single by Mustafa Zain. And there will be a lifeline for the left-hander. 13 on card. 2 more balls to go. Chemi Osangadi on strike. You are watching the Mega Cricket Festival MPL. Trying to loft. Perfect in line on this occasion. Looks to be tight. The things. The man who just delivered just in front of the tram line. What a beauty of execution on this occasion by Mashud. Not giving any kind of chance for the batter like Chemi. Moving to the last ball of the over, number 1. Trying in a reverse action, but this time goes far away from the target. One more red in the form of extra. Well, moves on 14. Interesting way. The runs are coming in form of some extra. That bringing some excitement and energy to the camp of Alif Star. He just changes the action, and this time there will be a long chase for the fielder. It will be a very good shot for Chemi Osangadi. The man makes a boundary for 4. What an excellent shot. What a shot with authority of placement by Chemi. Ball rises away towards the fence for a boundary for 4 to complete the over, number 1. 18 on card.
ശക്തമായ തുടക്കം കണ്ടുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇനി 30 പന്തുകളിൽ 37 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യമായി RGB ബേക്കൂറിനെതിരെ അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോടി. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബിച്ചു ബോയ്സ് മണ്ണങ്കുഴി, RK സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മുളിയടുക്കയുമായി അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ബിച്ചു ബോയ്സ് മണ്ണങ്കുഴി ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. Ajju Mogral coming into the attack with the over number second. First over of Mashood was expensive. It was treated by Chemios Zangadi with some shot of authority. We have seen some boundaries. It is the left hand, Mustafa on strike. Trying to loft right in the hands of the wicket keeper. Furiously fast off the delivery by Ajju Mogral to start the proceedings. They need some important dot ball to coming back in the action of this game. Captain Giri Kumbala just bringing Ajju Mogral, the experienced campaigner, a phenomenal all-rounder cricketer in front of Mustafa, just known for big hits, a strong left-hander in underarm cricket. 37 runs looks to be an easy one in 29 balls. Not a big target. It looks to be comfortable for the batters of Alif Star. Nicely drives it. That one beats the infield. That's a terrific shot by Mustafa. And what an excellent effort in the boundary line. But went in vain finally. Gone for a boundary for 4. Mustafa just joins a party along with Chemmi Hossangadi. Runs are coming for Alif Star Musodi. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മുസ്തഫയുടെ വിക്കറ്റ് വീഴുന്നത് വരെ അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡിക്ക് മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തവണ അതിനൊരു അവസരം നൽകുകയില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനവുമായി Mustafa just making a statement in bold italica. Shot. Oh man, it was a chance or what? Fielder was struck and stunned in the infield. It's an absolute goosebump in the camp of Alif Star Musodi. Mustafa gets a lifeline. 23 on card. Takes a comfortable single over there. Ajju Mogral is working with his line and length to trap the batters. But they were playing a conscious game. Very good cricket. They were playing here in Mannamkuzhi while chasing the target. 55 runs of a target under the lights. Most of the people thinking it will be a difficult, but they grabbed 18 in the first over. That brings Alif Star on driving seat. Chami is in the air and the fielder going in the reverse gear and he taken that one successfully. That's a successful massive wicket of Alif Star Musodi. Chemmi Hossangadi, the man is walking back his own way to the bowling.
മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് UK സൈഫുള്ള തങ്ങൾ അവർക്കൊപ്പം മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അനീഫ് കുഞ്ചത്തൂർ എന്നിവർ നമ്മോടൊപ്പം MPLന്റെ ആവേശം നുകരാൻ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹാർദവമായ സ്വാഗതം UK സൈഫുള്ള തങ്ങൾ, the block panchayat president of Manjesharam and block panchayat standing committee chairman Hanif Kunjatur. Warm welcome to MPL season 10. ആറ് ദിവസത്തെ ക്രിക്കറ്റ് കാർണിവൽ, രാത്രിയെ പകലാക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് മേളകൾ, ഇറ്റാലിയൻ യൂറോ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിന് കീഴിൽ പ്രഭചരിയുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ആക്ഷൻസ്. MPL chairman Hanif Umanga. 24 for the loss of 2. Imtiaz, the experienced player, joins in at number 4 for the team Alif Star. Punit Periadika joins and he started the new over for the team. Over number 3 begins for RGB Bekur. It looks to be a fantastic over in the previous one by Aju Mogral, who just changes the course of the game completely with that 2 openers wickets. Such a stellar bowling performance by Aju Mogral we have witnessed. That's through the onside region. There is a protection in deep and comes and grabs nice way. That brings only a single. Couple of single to start the over. That means the bowler gets a very good start. The young man from Periadika, all the way from Kasaragod. We have seen lot of cricket starts from the same region of Periadika. Clicks it that one through the onside region, finds a gap but protection in the deep once again. Comes quickly and grabs it nicely. One more single, 3 singles in a row. Not giving any kind of room to play some boundaries like a shot. It was completely restricted by the bowler in the first half of this over. Punit Periadika once again. Wonderful effort by the fielder, stops that one. എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തതുപോലെ തന്നെ സിദ്ദീഖ് ദേർലക്കട്ട കടലയുമായി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. രാത്രിയിൽ കളി കാണുന്നവർക്ക് അല്പമൊന്ന് ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവന അർത്ഥം അദ്ദേഹം എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് സിദ്ദീഖ് ദേർലക്കട്ട. Trying for a reverse attempt, not gets the right connection over there. It finds a fielder inside the ring, just tightening the screws really well by Punit Periadika. 5 singles in this 5 ball, and the man looks to be fabulous. So far, so good by Punit Periadika. A steady way the innings is moving for Alif Star Musodi on this occasion. 19 പന്തുകൾ 26 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് മുൻപിൽ. Last ball of the over. Swept it away towards the onside region, finds a fielder, just takes a single by the batter. That's the end of the over. A decent over from Punit Periadika comes to an end. 6 singles in this over. End of 3. 30 for the loss of 2. 25 required from upcoming 3 overs. 25 റൺസുകൾ 18 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡിക്ക് മത്സര വിജയത്തിന്. കായിക പ്രേമികളെ, നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കായിക കേരളത്തിന് സമാനതകളില്ലാത്ത ആവേശം സമ്മാനിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന മണ്ണങ്കുഴി പ്രീമിയർ ലീഗ്, അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മഹോത്സവം. ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിന് അനന്തപുരി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ടൂർണമെൻറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൈസ് മണി 22 ലക്ഷം രൂപ ഫൈനലിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രൈസ് മണി മാത്രമായി സമ്മാനിക്കുന്ന MPL കായിക കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിക്കുറിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ് കായിക കാസർഗോഡ്. മണ്ണങ്കുഴി മൈതാനം. ഇത് സെലക്റ്റഡ് മണ്ണങ്കുഴിയുടെ മണ്ണങ്കുഴി പ്രീമിയർ ലീഗ് എഡിഷൻ 10. താങ്ക് യു സമാൻ കൽപ്പാറയിൽ നിന്നെത്തിയ ഷമീം. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൗഢി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിനെ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പറിച്ചു നടുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഷമീം സമാൻ കൽപ്പാറ ഫോർ യുവർ വണ്ടർഫുൾ സപ്പോർട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് MPL സീസൺ 10.
Here is the icon player who was absolutely fantastic in the previous innings as a batter, who gives an electric start, now coming with the over. Over number 4 begins. Shot, it's in the air, it will be out for sure, and that's taken by the fielder comfortably. That produced the wicket. Sajid JD start in style with a wicket with his very first ball, that bringing the breakthrough for the team. RGB Bekur. RGB Bekur നിൽക്കുമ്പോൾ 17 പന്തുകൾ 25 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം. Exactly, we have passed the halfway stage of the second innings. What a start for Sajid, who picks up the wicket of a very well settled batter. Now Ammi running star joins as a new batter. Here comes Sajid. Gets an edge, and the wicket keeper was just alert and stops it. That 1 inches close. That throw past the stumps, shaking the heads by the wicket keeper. What an excellent effort it was. Wonderful way Sajid, the man, started the proceedings in this over number 4 for the team. RGB Bekur ഒരു ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ മത്സരം നിയന്ത്രിച്ച ലിഫ് സ്റ്റാറിനെ ഇത്തവണ പയ്യെ ഒന്ന് ട്രാക്കിലേക്ക് RGB Bekur കൂടി ഇരമ്പിയെത്തുന്നൊരു കാഴ്ചയുമായി. Oh, it's done well. That's a beauty of a delivery from Sajid. Just bringing some exclusive line in front of the right-handers of Alif Star. They were crossed between the wicket in form of leg bye on this occasion. Fabulous piece of bowling. Mind-blowing effort that bringing by the experienced icon player from Karnataka. The man who have lot of experience in lot of major tournaments in Mangalore. Coming and showcasing and showering his pacey, fiery, faster deliveries. Lovely way, implement some cutters right in the middle, it will be a kick. But they were comfortably completed a single between the wickets. Things are tightening, the screws are tightening. Bye is a signal received from the center. 32 on card by the team. Alif Star Musodi 14-23. മത്സരം ഒരു ബാലൻസിംഗ് രീതിയിലേക്ക്. Right in the sky, who will catch it? Lofted shot to try, but it goes as a grounder. Nicely driven on the ground, and fantastic piece of running that showcased by the batters between the wickets. Couple of runs comfortably completed by Alif Star Musodi's batters. They were on 34 runs, 13 balls of cricket, 21 runs of target. Looks to be an inches close of match. A mega cricket carnival of MPL. Drives it, that one through the extra cover region. Fielder presented there, but little bit fumbles that allowed another easy travel. Sajid not like. Oh man, that will be causing another run. Boy, oh boy. 3 between the wicket by the team Alif Star Musodi in an important time. That comes to an end, the over. 4 overs done, 37 for 3. 2 overs remaining, 18 required. Match is on here in Mannamkuzhi. 18 runs required from 12 balls for Alif Star Musodi. 1-നെ 2 മാറ്റുന്നു, 2-നെ 3 മാറ്റുന്നു വിക്കറ്റിനിടയിലൂടെ. കൃത്യമായി റൺസുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡി ഒടുവിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനവുമായി 2 ബാറ്റേഴ്സ് ക്രീസിൽ നങ്കൂരമിട്ട് നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ
ആവേശ ക്രിക്കറ്റ്, അത്ഭുത ക്രിക്കറ്റ്, അതിശയ ക്രിക്കറ്റ്, ആഡംബര ക്രിക്കറ്റ്, അതാണ് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് MPLലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ. വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കായിക പ്രേമികളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് MPLന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക്. കാണികളാണ് MPLന്റെ പിൻബലം, തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കാണികളാണ് MPLന്റെ ആവേശം ചോരാതെ അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടി MPLലേക്ക്. "12 balls of cricket, my dear cricket lovers. 18 required for Alif Star Musodi. They were searching their first victory. On the other side, RGB playing their first game. RGB Bekur. Ajju Mogral coming with his second over. Nicely bowled right on the track by Ajju Mogral. Trying to open the face of the bat by the batter. Ami Running Star just takes a single. Comfortably moves to the non-striker's end with that single. Playing with a confidence and a little bit careful mind that execute by the batters in front of Ajju Mogral. You have seen that in the previous over as well. Ajju picks up 2 wickets, 2 important wickets in the front line. That's through the ground and there will be a chance, and what an effort by the fielder. A spectacular catch taken by the fielder. Absolutely a mind-blowing one. And Ajju picks up another wicket. The man who making and registering his signature. Such a star, serious star. The man who making some distraction over there. Wicket number 4 down. തൻസിൽ കടമ്പാർ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമന്ററി ബോക്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൻസിൽ കടമ്പാർ. "38 for the loss of 4. 17 required from 10 balls. Ishaq Machambadi joins as a new batter along with Ammi Running Star. Match is in an interesting way. It is giving 50-50 chances right now for both teams. Absolutely it was balancing. Ajju Mogral, who is in the top of his form, trying for a sweep shot and gets a connection a little bit, and they were cross between the wickets. Ishaq Machambadi straight away finds his first run, but singles not enough to reach the target for Alif Star. They desperately demand a boundary at this situation. 9 balls 16. What a 9 balls by Ajju Mogral. Only gives 8 runs and he grabs 3 important wickets, 2 in the front line, 1 in the middle order. This man is a devastating bowler with his staggering performance, that giving some extra bit of energy to the camp of RGB. Dreams and hopes coming and building. Lovely little delivery and there will be, oh, it will be a chance. Ajju Mogral is shouting to throw to the non-strikers end. He was giving 100% of effort with 100 kilowatts of energy. And giving some goosebump to the camp of RGB Bekur. Unparalleled energy by a staggering genius from Mogral Chowki. The name Ajju, who just making some changes in the scenario. Lovely delivery again. Looks to be fine. കാണികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മെയിൻ സ്റ്റേജിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കാണികൾ ബൗണ്ടറി ലൈനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കരുത്, അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. 41 റൺസുകളുമായി വാട്ട് എ വേ ദി ഇന്നിംഗ്സ് ഈസ് മൂവിംഗ്. 14 required from 7 balls.
മത്സരത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു യു ടേൺ സമ്മാനിച്ച അജുവിന്റെ 2 ഓവർ സ്പെല്ലുകൾ അവസാനിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ it's another majestic piece of a rolling delivery by Aju Mogral, who just ready to conquer against the team Alif Star Musodi. A splendid spell from a star all-rounder comes to an end. What a spell of Aju Mogral comes to an end. 5 overs done, 42 runs for the loss of 4 wickets. 13 required from 6. അവസാന 6 പന്തുകളിൽ 13 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത്യധികം ആവേശത്തോടെ മത്സരത്തിൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയ അലിഫ് സ്റ്റാറിനെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് പിന്നോട്ട് വലിച്ച അജുവിന്റെ 2 കിടിലൻ ഓവറുകൾ 3 വിക്കറ്റുകളാണ് റാഞ്ചി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ 13 റൺസുകൾ. നീഡ് എ ബൗണ്ടറി ഫോർ ഷുവർ ബൈ അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡി. Binish is coming. അവസാന ഓവറിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് മത്സരം കടക്കുമ്പോൾ അതേസമയം പുരസ്കാര വേദിയിൽ ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായിയുടെ ജേഴ്സി ലോഞ്ചിങ് സെറമണി കൂടി നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഷമീം സമാൻ കൽപ്പാറ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അസർ ബിച്ചു ബോയ്സ്, കലീൽ ന്യൂ ബോയ്സ്, ഒപ്പം അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് ചാരിറ്റി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സത്താർ മുസോഡി എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും വരവറിയിക്കാനിരിക്കുന്ന ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സിന്റെ ജേഴ്സി ലോഞ്ചിങ് സെറമണി. ഹസൻ കുതുവ ഓൾസോ ജോയിൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റൈറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസന്റേഷൻ പോഡിയം ബിഹൈൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ. യൂട്യൂബ് വ്യൂവേഴ്സിന് അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് ജേഴ്സി ലോഞ്ചിങ് സെറമണി ഫോർ ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ്. ബാക്ക് ടു ദ മാച്ച്. 5 balls 11. 5 പന്തുകളിൽ 11 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. ആവേശകരമായ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഷോട്ടിന്റെ കാഹളം മുഴക്കാൻ ആര് തയ്യാറെടുക്കുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ 10 റൺസുകളുമായി ഒരു ഭാഗത്ത് അമ്മി റണ്ണിംഗ് സ്റ്റാർ just ready to bring some runs for the team in an important time. That is going way outside from the guideline, giving an extra run in an important time by Binish KFC Kumbala. Here comes. Fight to go, 10 to get is a fighting game for sure. That is cleverly deposited right in the channel, grabbing the dot ball. Every dot ball is just like a gold in this scenario. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനെ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്ലീസ് വെൽക്കം ദ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബിച്ചു ബോയ്സ്, RK Strikers. RK Strikers മുളിയെടുക്കുക, ബിച്ചു ബോയ്സ് മണ്ണങ്കുഴി. That's a beauty. That's a beauty of a delivery. Looks to be from the bowler Binish Kumbala, who just bringing an excitement right on the track. Just allows a single. 3 balls 9. Ishaq Machambadi on strikers in. The power hitter from Machambadi. Can he hit a big shot? Desperately, this is the time to take. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡിക്ക് വേണ്ടി. കാത്തിരിക്കുന്ന മുസോഡിയുടെ കാണികൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഇഷാഖ് മച്ചമ്പാടിക്ക് പറന്നിറങ്ങാൻ സാധിക്കുമോ സിക്സറുകളുമായി? 3-9. Oh, down the leg stem, looks to be, it will be wide ball and the bat is crossed between the wickets. 2 important runs in this scenario for the team Alif Star Musodi. Looking a close encounter. 3 balls of cricket, 7 runs required. 3 പന്തിൽ 7 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. ആവേശം
സൈഡിലേക്കും മാറി മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മത്സരത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. മണ്ണൻകുഴിയെ കോരിത്തെരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് RGB ബേക്കൂറും അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡിയും. Here comes Binish again. Oh, he's done well. He's done really well. There will be a run out for sure. One more wicket in an important time. A dot ball, more importantly for the team RGB Bekur. They gets a very well settled Ammi running star is going back to the pavilion. What a disciplinary bowling from Binish Kumbala in this tail end of the innings, who just conquering against the experienced star on the other side for Alif Star Musodi. A thrilling game going to conclude with a fight nail-biting end. 2 balls of cricket, 7 required. 2 പന്തിൽ 7 റൺസിന്റെ കളി. Nizar, the new batter, joins in the non-strikers end and controls on the other side by Binish Kumbala, the bowler, and Ishaq Machambadi, who is capable, who is potential to hit some big shot. The time and team Alif Star demands it. Oh, he's done well. Another classy piece of execution from Binish, not giving any kind of chance, and there will be, oh, missed it over there in the non-strikers, and appeal from the bowling side. Oh, there will be a pause and giving it to upstairs. മൂന്നാം അമ്പയറുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് അവർ തീരുമാനത്തിന് വിടുകയാണ്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടൈമിൽ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു ദി തേർഡ് അമ്പയർ. It was an appeal for run out from the bowling side of RGB Bekur. But what an interesting game of cricket. What a thrilling game of cricket. What a fascinating game of cricket we are witnessing between these two teams. Oh, we can see that in the big screen. But we need to wait for the official confirmation from third umpire, who is checking it. Checking from the different angles. Shine Sports YouTube channel, just giving all the shyness of this MPL season 10 for the cricket lovers across the world, from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, GCC countries, European countries. Everywhere the Andram cricket lovers and those who are entertaining and enjoying along with MPL, the action telecasting throughout the world by Shine Sports YouTube channel. ശ്രദ്ധിക്കുക, യാതൊരു കാരണവശാലും ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്ക് പ്ലേയേഴ്സും കാണികളും ബൗണ്ടറി ലൈനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി. ഡഗൌട്ടിന്റെ മുൻപിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും പ്ലേയേഴ്സ് ഇറങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന കാര്യം അറിയിക്കുന്നു. Out is a signal from the third umpire. Batter need to go back. It was direct throw to the non-striker's end, isn't it? Yes. Okay, this man is out. Ishaq will stay on the striker end. New man Nizar is out. That's confirmation from umpire. Yes. ಅವೇ ಚಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವೇ. What an excellent way the match is bringing the excitement.
1 ball of cricket, 6 runs required. അവസാന പന്തിൽ 6 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. ആര് വീഴും ആര് വാഴും എന്ന ചോദ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ ടൈം ഔട്ടിന്റെ സിഗ്നൽ കൂടി കാണാം. ഒരു പ്ലെയർ കൂടി സർക്കിളിനകത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നു. കാണികളെ, നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്ക് ഇരമ്പി കയറരുത്. ബൗണ്ടറി ലൈനിന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പുറകോട്ട് മാറണം. 1 ball 6 runs ആണ് ടാർഗറ്റ്. അവസാന പന്തിൽ 6 അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷാഖ് മച്ചമ്പാടിക്ക് 5000 രൂപയുടെ ഓഫർ വരുന്നു ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായിയുടെ ടീം ഓണറിൽ നിന്ന്. 5,000 offer by the team camp team manager Hassan Kudwa and Shamim Zaman Kalpara. Shamim Zaman Kalpare നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസറായി നമ്മോടൊപ്പമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. He giving 5,000. Here comes the last ball. 1 ball 6 runs. RGB versus Alif Star. What a phenomenal delivery from Binish Kumbala, who just brings on to the pads of the batter and he just grabs the game for the team RGB. What an incredible game of cricket we have witnessed. Completely a thriller of a game. Comes
between the wicket, open the scorecard is a good rotating for the Asadakutta. Starting was superbly. The Atif off the mark with that couple of the run is a very good start in the first ball of the over number 1. पहली ओवर की शुरुआत यहाँ पर धर्मा इस बार 2 रन पूरा कर चुके बार. Now in second try. Again the same shot and no fielder there. It's absolutely fantastic game. A fielder running as they collect the ball. Another couple. Another good run for the Atif. What a fantastic energy for the batter. Starting with the 2 couples has been coming in the scorecard. And now in the very good start, the toss decided bat first Arki strikes Muli Edika going for the second game of the tournament of the day 1 here in Mannamkuzhi. What a fantastic evening. It was a nice piece off with a very good spectators coming here. And now the day 1 in the beautiful tournament here. And now they're going for the third ball into the batter. Atif once again to the striker. It is a better line. Beautiful comeback for Dharma. Now the dot ball in the scorecard. 4 without wicket after completion of 3 ball. And the first over in progressing here. And now the match number 5. Day 1 in the absolutely fantastic tournament. Mannamkuzhi is creating this a new record of the huge cash prize of 15 lakhs in the first one. And the second is a 7 lakh. And now the once again drive, rotate this time and giving the opportunity for Sadakutta is another good player coming in the side for the batter second. And now first time Dharma into the ball batter and now Sadakutta, another great man to the side. 2 more left in the over number 1. Again is a better delivery. That's the beauty. And rotating again to the good start for Atik. It's a non-strike. And what a fantastic running between the wicket. Once again, 1 more to the tally. Now Tally picks up 6 on the board. Of the 1 more. The 5 ball complete is 6 on the board equation. That's the beauty start of the both the side. Winning the toss, Aski strikers Muli Edika decided bat first into the game number 5 here. Now this time they're missing the ball for the wicket keeper. Once again the collector run. Very good. So get to single very nicely. End of the beautiful over from wide call. The remaining 1 ball. The first extra came in the scorecard. Moving on to this time is 8 on the board without wicket. There is a beauty, good drive in the onside as well. It's a beautiful and coming back to the second, third time is a very good run. And what a finish that the first over. Dharma complete the first over. Now the Atif and Sadakutta still the craze. A good rotating. Third time complete the run. Now the score coming in the double figure. It's a beautiful starting by the batting team of RK strikers. Muli Edika won the toss. Decided bat first. It's wonderful. No damage at the batter here in. And now coming up the next over is another great man coming into the attack. Who is the next one in the side of B2 boys? The both are is a good 11 playing in this tournament. The strongest 11, strongest side for the both the side. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 10 ಓಟಗಳು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಆರ್ಕಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಮುಳಿಯಡ್ಕ ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು Atif Sadakutta creasali. Sachin is a newcomer, is a bat bowler in the side of Bichu Boys. Is another great man coming into the attack for this side. The both openers still the crazies. What a fantastic start. Is a 10 without wicket in the scorecard. Right on the wicket once again. Asking the question is a wide and the umpire is unmoored. The better line. It's a beautiful starting the second ball. It was a nice piece of great. And checking the asking the third umpire for the wide.
Harish Padil is sitting here in the commentary box. He will be decided wide or not in the first ball of the second over. And now is confusing for the man for giving the opportunity here. Now Mohan Ayadi and Saifu is controlling this match as a match number 5. ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸಮುಖನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಅವರು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ wait and see what will decided came here. The wide and the first ball is this over number 2. ದಾಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸದ್ದಕುಟ್ಟ ಕ್ರೀಸಲ್ಲೇ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಕೆಟಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಣ್ಣಂಗುಳಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಆರ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಮುಳಿಯಡ್ಕ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. Okay, wide signal came in the third umpire. Now is the one more extra coming in the total scorecard. Moving on the jumping this time 11 without wicket, starting with the wide and the second bowler. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮುಖಾನವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಓಟಗಳು ಕರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಓಟಗಾರಿಕೆ. 2 ರನ್ನುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಓಟಗಳು, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸು 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈ ಬಾರಿ 2ನೇ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. It's a beauty for full line again to the onside as well as a complete the single. It's a beauty going for the second. Is a very good throw coming in this hand of the ball fielder. And now is one more to the target. He picks up 14 on the board. That was the third ball. The right arm of the wicket again to Sadakutta playing is a very good style. And now one more to the tally. He's going for the slowly. Now the cool and calm cricket playing in this. Both openers now is no damage. It's not at for the big shot. It's already. And the couples and singles has been came the scorecard. Moving on to the 15 on the board. And there's a good ball again. Is a nut for this. A better line to again to the bowler. And again to the edge of this behind the wicket keeper. Once again to the very quickly complete this time. Again to the rotate to the strikers. A very good understanding between the wicket. Both the players starting with the wonderful for this Arki strikers. Muli Edika going for the another good victory. Going for this and open with the score. Now the 16 without wicket. Again it's a sweep now in the air, no fielder there, and the ball was going to the line for this 2 completed again to the very easily, and 3 more runs complete as a very good running between the wicket again to the batters of the middle, and a wonderful starting for the Sadakutta, and Atif is a man is coming in the strikers end for RK strikers. Muli Edika starting with a wonderful start with the first innings of the match number 5. End of the second over. Now the scorecard moving on 19 without wicket. ആദ്യ 2 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 19 റൺസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു.
ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മികച്ച തുടക്കം ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചത് സദ്ദക്കുട്ട, അതുപോലെ തന്നെ ആതിഫാണ് ക്രീസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ആർക്കി സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മുളിയെടുക്കു വേണ്ടി മികച്ച ഓപ്പണറാണ് ഈ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിന്റെ 5ാം മത്സരം പിറങ്ങിക്കൊള്ള 2 ഓവർ അവസാനിക്കുന്നത്. 3ാം ഓവർ എറിയുവാനെത്തുന്നു മറ്റൊരു താരം, മികച്ച താരം ധർമ്മ. വീണ്ടും Dharma Kasagar once again back into the attack. He got it's a complete the first over. Remember 10 for no loss. That is a beautiful starting. And now once again he's back into the attack. Is a Sadakutta. He's a number 2 here in the batting order. Once again is a very change of fielding restriction for this over. Now the 3rd over coming off with the 6-over match going here after completion of 12 ball. Now the scorecard is a 19 without wicket. And now once again to the batter here, Sadakutta is on strike in the first ball of the 3rd over into this progressing. And it's a good starting. Good start for the 3rd over. First ball is a dot. Is a no score. And no addition for the scorecard. Is a 19 without wicket in the same in the after the 2. And now the first ball is a dot. Is a Dharma coming. Is a wonderful line. And and it's a good gap. It's a beautiful and the onside, offside and the cover drive. That's a complete another sub couple. The very good call by the Atif and the completion of super. Now the 2 more runs added the scorecard. 21 on the board. 21 पर बिना कोई विकेट नुकसान पर आज शुरुआत यहाँ पर टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए स्ट्राइकर्स मुलियड का दोनों खिलाड़ी अब क्रीज पर मौजूद. सदकुट और आतिफ के बीच बहुत ही अच्छी साझेदारी यहाँ पर जारी है. Again is a beautiful in the same side and the fielder missing the ball, and that is a reach the boundary, and now is a welcome boundary signal came the man number Mohan Ayari. That is a beauty. Saifuddin is standing, and now this added the scorecard 25. Really good starting again to the batter. Sadakutra is on fire. First boundary coming in the bat. After completion of 2.3 balls, now the good start for the batting side. 25 on the board without wicket. The knob damage and the squares of the both are playing in the superb cricket. The first boundary coming in this bat of the Sadakutta is a batting. Now once again the scene is coming in this mid-off. The 4th time it is over. Now Sadakutta is starting. It is a beautiful batting again to the same side, and the 3rd time coming in the that shot and coming for the second. It's a beautiful finish again to this more than a time in the coming the couples. A good understanding once again to the batter in the crease. The no damage in this to both openers. Still in the crease. The well starting by the team. And now the scorecard moves on 27 on the board. Sattais 2 ball remaining. Again is a fine region. This time the change the drive. And once again is going for this couple. But this time is a very good fielding by the onside, giving the throw. And now the just 1 runs added, the 28 on the board. Now the last ball of the over number 3 in this Dharma is the captain into ball to Atif on strikers end.
This time the last ball just test the bat is a single taken. I think it's a keep the strike again. End of the 3 over 29 without wicket. 3 over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 29 റൺസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ആക്കി സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് മുളിയെടുക്ക മികച്ച തുടക്കം ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ക്രീസിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿದಾಗ 29 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಸದಕುಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಆತಿ ಅವರು ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ. And now the number 4 in the bowling side is Vinith Kasagod. He is coming into the tuck, proceeding the over number 4 from this first innings of the match number 5 in the day 1 in the here in Mannamkuzhi Premier League. Once again to the welcome to the viewers in the wonderful stadium in Mannamkuzhi. Now Vinith into Atif on strike in the first ball of the over number 4 here. The good starting for the batting side. Again is just sweep the ball very nicely. Coming back to the second once again for this, doing for this a very good running and rotating the strike again for this first ball coming in the 2 run of the 31 on the board. It's a really good starting, good understanding. No damage at the batter. Straight the crease. What a fantastic starting for the batter. And now we need once again to the same batter coming here. The second ball of the over number 4 here. Right above the wicket. Again is a sweep in the air. And now as it doesn't carry, the wicket keeper is absolutely will collect and the batter complete the one more single. Very quickly complete that one. And a very good energy to the player. Once again doing the fantastic job. Now the 32 on the moving of the scorecard without wicket. It's a great start for the batter. And again is a beautiful delivery. Just push the bat and take for easy single. The one more to the tally. Tally picks up 33. Is happy with that single. They're rotating once again and giving the opportunity for Atif strikers. And coming in the second time is over number 4 going on in this particular match of the match number 5 in the day 1 here. Again there's a real sweep. A fantastic gap. That's a boundary number 2. It's a beautiful first boundary for Atif, second boundary for the innings. R.K. Mulayedika going for another good shot for this moment. 37 on the scorecard. Is that boundary is a completely changed the fielding restriction. Once again, there's the 5th ball and again to the push the bat and beauty. And as playing into very good cricket in the cool and calm and rotating the strike again to the Sadakutta coming in this time. And the last ball of the over number 4 is going here. And as a very good top position, the scorecard 38 without wicket. Fantastic partnership going on between these two batters with the wonderful starting.
Again is a try to sweep, but this time is a gone. His unnecessary shot is make this finally broken the partnership. This battle. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 38ಕ್ಕೆ 1 ಈ ಬಾರಿ ಸದ್ದಕುಟ್ಟನ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ಗೆ now is the captain coming in the middle is the number 3 in the batting line of after the dismissal of Saddakutta is going for reverse sweep is not connecting, that's not in control. And that's the wicket number 1 has been going this time in the new over into the other side, and Atif is a man is still the crease is a very good going for the batter. The one run added is 39. And now the Suraj is a new bowler coming into the attack. He's bowled 1 ball and giving the 1 run in the after completion of 4.1 ball here. Now the smash number 5 of the day 1 in the here going on as RK strikers. And now the new bowler Suraj into the Atif drive. But this is the first 6. What a connection. Beautiful timing for the batter. Excellent of captain of the He's a number 3, the captain of the side. Again is a beauty. This time the down the ground is the long and well collected. And going for the second. Should be trouble. And the white the signal. Asking the third umpire again to the run out. Is a beautiful throw coming in the long. Is a very quickly release the ball very nicely for the fielder. And this time is what will be do that. The third umpire will be decided that to run out. Excellent fielding that one. This could be the trouble. As is out given by the third umpire. Now the one more is a big trouble for the batters. They're not racing the crease, just in the line.
It is a wonderful effort from the fielder. What a fantastic throw has been given. Second run is a very difficult. Another one more wicket losing this time. And the RK strikers, Muliyadika, losing the wicket is unnecessary for the second run. And Atif is a well-settled man in the back in the side. As the number 2 has been gone. So really good comeback for the fielding. The just in the crease, the 2 players in the new player in the crease, and now the Dikshit Kunta wants to again the strikers in. And it's a very good starting by Sri Raj is the man. Again is a beauty. And now is the catch is the call under the fielder. Yes, taken. What happened this time? Back to back wicket gone. And it's a run out, and this time is not control. Now the 46 for 3 wicket after completion of 4.4 ball. Now the 2 ball left in the over number 5. Here's Suraj once again right and round the wicket. Is the one more new man in the crease. Another coming in the number 6 in the batting lineup. It is a good delivery. That's a beautiful bowling. Continue this time, and the batter complete the single for this time. I think Jojo is a new batter coming in. Just 7 ball remaining. The first innings of the match number 5 of the day 1 is absolutely a fantastic tournament here in 47 on the board. Just 3 short of the 50. Last time is a hit the onside. Offside in the cover drive, and going for the second is a brilliantly complete, and the builder just missing the ball, and very easily complete the couple. Now the 2 more to the addition, 49 with for the loss of 3 wicket. Just 1 over to left. അവസാന ഓവർ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു. 5 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ നിലയിൽ 49 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. 5 ओवर के बाद 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर अच्छी शुरुआत यहाँ पर सदाकुट और आतिफ ने की, और 38 रन बिना कोई विकेट नुकसान पर आफ्टर 3 over. And now is the troubling coming in the 4th over. The 3 quick wicket has been gone the side of RK strikers Muliyadika. Now in the last over remaining, who is the next bowler coming in the jet attack in the bowling side? And now for Chirugoli, he is the man in the strike, the last bowler on the innings number 1 in the match number 5. Welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Again, it's a real sweep. Is the ball going? It's a very good gap. The fielder chasing the ball. Is not it? Get the ball, and the ball was passing the boundary line. It's a on-ball bound. And a Jojo and Prison Noise, the strikers and non-strikers trying to heal. And an offer Chirugoli is cannot continue this time.
This time in the air and straight to the man. It's no mistake and Tickley is a very easy catch as well. And a timeout signal coming in the main umpire. And one extra fielder coming in the inside the circuit. Just a 4 ball remaining the first innings of the match number 5 here. And one more wicket losing this time in the fourth down from the side. Jojo is going for the big one. Is not in control. The ball in the air. And a very good catch by the fielder in this. Now the number 7 is Anandu Kumbala coming in. Just 4 ball remaining in the innings number 1 here. आखिरी ओवर की तीसरी गेम यहाँ पर नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद आनंद कुंबला और नॉन स्ट्राइकर पर है प्रसन्ना. इस बार 4 गेंद बाकी अभी आखिरी ओवर की. तीसरी गेंद यहाँ पर नए बल्लेबाज रिवर्स की कोशिश की यहाँ पर रन आउट खतरा और रन आउट के साथ और एक विकेट गिर चुका है. नंबर 5 हैज बीन डिपार्ट इन दिस टाइम इज नो Zanima Nantha coming in the side of his starting strikers into just 2 ball remaining. 3 ball in this last over of this first innings of the match number 5. No fall. This time is a new batter. And he's done the job and his catch is missing this. Ball is buzzing the line of this. Another boundary for this is the number 4. And the boundary coming in the batting side and moving on to the scorecard. 57 on the board. It's a really good timing of the shot. It's a new batter. Get the mark without boundary. It was a nice piece of energy. Excellent placement for the batter. The 5th time. Again, is a beautiful comeback for the bowler. Is a dot ball after the boundary. Now one more to come in the last ball of the innings number 1. And a 57 is a really good score for the 5 wicket down the side of strikers Mulli Adika. And now the last time it is over number 6. And what he can do, wait and see there. And a good sweep. And the first run is complete, so very easy. Now the second is a difficult. Now straight to the draw. End of the innings number 1. Now the scorecard just 1 run added. 58 on the board. In reply 59 to get from 6 over 36 ball. The Vichu boys needed them. And a very good finish by the last couple of 3 overs. Is a very good comeback. Now I once again like to ask for this Preetham Kumbala continue the next innings of the fabulous boys.
BSC പപ്പായി തൊട്ടി HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് പുസ്തകം ഇതാ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ടീമും സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. दोस्तों आप देख रही है MPL सीजन 10 10वीं सीजन आप देख रही हैं. तब पांचवें मैच आज के दिन पांचवें मैच आप देख रही हैं. तब पांचवें मैच में पहली पारी खेल चुके हैं RK स्ट्राइकर्स. 58 रन बनाए, 59 रन के लक्ष्य को खड़े किए. यहां पर 59 रन के दरकार यहां पर खड़े किए हैं. अब देखना होगा आरंभिक बल्लेबाज दक्षिण कन्नड़ा जिला के प्रमुख खिलाड़ी संतु बंटवाल और शफी किचन पहली गेंद पर सीधे खेले हैं. गेंदबाज की तरफ गेंद को दखल दिए. गेंद के गति पर समझ गया कि इस गेंद में कुछ खतरा है, इन्होंने सीधे दखल दिए. कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं. खामोश कितने होते हैं संतु, तब उतना ही खतरनाक भी होते हैं. और इस गेंद को खेला गया है मिड विकेट पर, बिल्कुल खाली जगह. गेंद जा रही है, देखिए सीमा रेखे के करीब गेंद को रोका गया है. व्हाट ए फीलिंग. दो खिलाड़ियों के बीचों बीच में बहुत खूबसूरत योगदान दिए. अंपायर तीसरे अंपायर से मदद मांगा है कि चेक कीजिए बाउंड्री लाइन को, क्योंकि मिड विकेट में उतनी शानदार गेंद को रोका गया था, लेकिन बाउंड्री लाइन के करीब बिल्कुल इस गेंद, ये देखिए दो खिलाड़ियों के बीचों बीच में गेंद गई. तब बहुत खूबसूरत शॉट है मिड विकेट पर. शानदार प्रहार थे दो खिलाड़ी के बीचों बीच में, क्योंकि सिर्फ दो मात्र खिलाड़ी तिजारे के बाहर रहते हैं. तब दो खिलाड़ी भी वाइडिश मिड विकेट के दो खिलाड़ी आकर इस गेंद को रोकना चाहते थे. अब पता चलेंगे तीसरी अंपायर के फैसला क्या आएंगे, ये देखना बाकी है. देखिए पहली और दो खिलाड़ियों के बीचों बीच में बिल्कुल रोमांचक स्थिति को सामना करते हुए हर चौके हर छक्के इस इनिंग्स में महत्वपूर्ण है. हरीश पटेल जांच रही है इस गेंद के बारे में, कुछ फैसला तो जरूर सुनाएंगे. और इसी के साथ 10 बाउंड्री. वाह भाई वाह, व्हाट ए कमबैक संतु बंटवाल. देखिए पहली गेंद को, उस गेंद में बिल्कुल खतरा थे, उस गेंद को सीधा धक्कल दिए. दूसरी गेंद लेग स्टंप और मिड विकेट पर आए थे, तब इन्होंने दो खिलाड़ी के बीचों बीच में शानदार शॉट लगाए. वाह भाई वाह. फिर एक बार तीसरी गेंद लेकर तैयार है. गेंदबाज अपनी शैली में गेंद को 2-3 बार टपकाने के बाद आतिफ ओवर द विकेट. ओहो लेग स्टंप पर अंपायर के इशारा आए हैं कि अतिरिक्त गेंद है, वाइड है. रनों की संख्या बढ़ते हुए 5 रन. 5 रन बिल्कुल अच्छी मैच यहां पर 58 बनाना है. और इस गेंद को उछाल लिए, गेंद को ऑफ साइड पर गेंद जा रही है. फील्डर भी पीछे हैं, लेकिन कोई मौका नहीं. देखिए फिर एक बार 10 बाउंड्री. वाह भाई वाह संतु बंटवाल. विकेट, अच्छी गेंद उठा रही है. ये है संतु बंटवाल. देखिए पहली बनाना है बहुत बड़े स्कोर. यहां पर शुरुआत ही करना है, बहुत बड़े शुरुआत. खेल रही है MPL सीजन 10वीं. बिल्कुल अच्छी रोमांचक स्थिति पर अगली गेंद
उल्टा बल्ले में खेला गया है। ओहो, पीछे भाग रही है फील्डर, लेकिन दोस्त यहां पर बाउंड्री लाइन के करीब इस गेंद को रोक दिया गया है। बिल्कुल अच्छी नजारा, अच्छी क्रिकेट। रनों की संख्या बढ़ते हुए 17 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 डिलीवरी। आखिरी गेंदे बचे हैं बड़े गेंदबाज के सामने, बड़े बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रही हैं। अब अगली गेंद ओवर द विकेट। ओहो, अच्छी शॉट मिड विकेट पर। इस बार स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। देखिए, बहुत बड़े बल्लेबाजों के खासियत है कि शुरुआत अच्छी देंगे, आखिरी गेंद में स्ट्राइक अपने पास रखते हैं तो अब सेट हो चुके हैं। क्योंकि नए बल्लेबाज अगर स्ट्राइक पर आ जाएं, एक दो गेंद चकमा खाएंगे, तब यहां पर मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सोचकर संतू बंटुवाल ने स्ट्राइक अपने पास रखे हैं। रनों की संख्या कुल मिलाकर 18, यानी कि 18 पर 0। बिल्कुल अच्छी स्थिति यहां पर। अठारह रन, बिल्कुल अच्छी शुरुआत दी है। देखिए 59 इज द विक्ट्री टारगेट, 41 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 30 डिलीवरी। 30 गेंदों पर 41 रन बनाना है मैच को जीतने के लिए। यहां पर संतू बंटुवाल स्ट्राइक पर मौजूद है। അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ടീമും സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ BSC बपाई तोटी तमिलुള്ള മത്സരമാണ്. और संतू इस गेंद को मोड़ लिया गया है। देखिए स्क्वायर लेग बिल्कुल खाली जगह थे, उसी खाली जगह में इन्होंने गोली लगाए सीमा रेखे के बाहर। फिर एक बार टनाटन चौका। देखिए कितनी शानदार शुरुआत दिया जा रही है। वाह भाई वाह। पहली आतिफ के सामने, दूसरी ओवर अभी के सामने चौके लगाकर शुरुआत की है। पावर प्ले को पूरी तरह चकाचक बना रही है संतू। फिर एक बार अराउंड द विकेट। इस बार उल्टा बल्ले में खेलने के प्रयास की है, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में संपर्क तो नहीं हुए हैं। लेकिन यहां पर बात है कि और अब देखिए बहुत खूबसूरत कमबैक की है अभी ने। इस मैच को दुनिया के कोने कोने में बैठकर कहीं लोग देख रही है। अब मैसेज आया कि रजाक सालमार और साफी संपिया जैसे महारथियों ने इस प्रीमियर लीग को देख रही है। और यहां पर देखिए कोई मौका नहीं फील्डर को। ओहो, फिर एक बार टनाटन चौका। छक्के एकमात्र लगाए, बाउंड्री 3 बार आए हैं। इनको कहते हैं कि सिकंदर। इनके सर पर लगे हुए टोपी बहुत बड़े खतरनाक है, कभी लाइट ग्रीन कभी ऑरेंज, 2 टाइप के टोपी लगाते हैं तब वो संतू खतरनाक हो जाती है। ओहो, बहुत बड़े गेंद। उल्टा बल्ले में बड़े शॉट के लिए कोशिश किए, तब यहां पर बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क तो नहीं हुए हैं। रनों की संख्या अभी भी 26-0 पर, कोई विकेट पतन नहीं हुए हैं। अब अगली गेंद दूर वाली चौसे राउंड द विकेट। और इस गेंद को भी खेला गया है। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद आ रही है। बहुत खूबसूरत फील्डिंग एक गेंदबाजी के साथ। दूसरे रन की देखिए, ओहो, व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट। हुसैन बोल्ट की तरह दौड़े हैं संतू बंटुवाल। अगर डायरेक्ट हिट लग जाते तब वो यहां पर बिल्कुल खरीबी मामला हो सकती थी। संतू बंटवाल अब तक शफीक को मौका नहीं दे रही है, क्योंकि सेट है, गेंद बल्ले पर आ रही है, तब दूसरे के कंधे पर जवाबदारी रखने की कोई जरूरत नहीं यहां पर। लेकिन अब एक बात है कि 2 ओवर पूरा हो चुके हैं। 28 रन, 31 रिक्वायर्ड और 24 डिलीवरी। 24 गेंद पर 31 रन चाहिए। देखिए आप देख रही है MPL 10वीं सीजन, बहुत बड़े दिन, शुरुआत अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे बड़े दिन
यानी कि 15 लाख 7 लाख 2 फटपटी यानी कि स्कूटी, जो एलईडी टीवी, सोने की बहुत बड़े बड़े पुरस्कार। ആ ബാരിക്കേഡിനെ തള്ളി നിൽക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് ആവേശം കൊള്ളാം. ആ ബാരിക്കേഡ് എങ്ങാനും ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും മത്സരം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരും. ദയവ് ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കുക. ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഷഫീഖിന് അവസരം ലഭിച്ചതെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു ഷഫീഖ്. दोस्तों देखिए, शफीक को पहली बार यहां पर मौका मिले। 31 रन की जरूरत है, 23 गेंदे बचे हैं। शफीक एकमात्र गेंद को सामना किए, फिर एक बार रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। बल्ले की बारी हिस्सा लगे हैं मेरे ख्याल में। शॉर्ट फाइनल पर फील हुई, तब तक 1 रन शफीक ने अपनी खाता खोल चुके हैं। केल 14 0-7-3-0 ആ വണ്ടി ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ആണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നറിയിക്കുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് വണ്ടിയാണ്. KL 14Z 03-07-03-30. ഓക്കെ, ഏതാവട്ടെ. സ്വിഫ്റ്റ് വണ്ടി ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിനയാവും. ഇവിടെ ഇതാ അടുത്ത പന്തുമായി. दोस्तों अगली गेंद के लिए ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी। आतिफ अपनी दूसरी आगमन तो बहुत अच्छी तरह की है। पहली ओवर महंगी साबित हुए थे, 16 रन की, 17 रन की, 17 रन की बहुत बड़े महंगी साबित हुए थे। दूसरी खोटे की दूसरी ओवर तो पावर प्ले हटा दिया गया, 5 खिलाड़ी बाहर गए, इस वजह से अच्छी तरह गेंदबाजी कर रही है ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, व्हाट ए डिलीवरी। अपील तो जा रही है, बहुत बड़े जबरदस्त अपील, लेकिन अंपायरों के बीच में बातचीत जारी है और इसके बाद पता चलेगा कि कुछ खतरे हुए ना हुए, इसके बारे में बताएंगे। तीसरी अंपायर के मदद मांग चुके हैं। डिजिटल संविधान आजकल बिल्कुल अंडरआर्म क्रिकेट के लिए बहुत बड़े मदद दे रही है, बिल्कुल मदद देते हुए यहां पर बहुत बड़े बड़े महारथियों ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट को दुनिया की कोने कोने में, भारत के कोने कोने में, दुनिया की कोने कोने में बैठकर मैच को देख रही है, आनंद उठा रही है। सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी अभी जो संदेश मंजेश्वर कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने मैसेज भेजा है कि जो शुभकामना देना चाहते हैं इस प्रतियोगिता के लिए। आ नहीं सका, फिर भी उन्होंने जो मैसेज भेजा है कि शुभकामना देना चाहता हूं। अब देखिए, खूबसूरत दर्शक भरे हुए हैं इस प्रतियोगिता को नंगे आंख में देखने के लिए। संविधान है जो लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, लेकिन भी एमपीएल को चकाचक बनाने के लिए हजारों लोग कोई बल्ले के इस्तेमाल नहीं हुए हैं, पैड पर लगे हैं और इसी वजह से नॉट आउट कहां है। तीसरी अंपायर के संविधान यहां पर मौजूद है और तीसरी अंपायर के इशारा के इंतजार कर रही थी, तब यहां पर बात खत्म हुए हैं।
और कोई बार्गिंग के लिए मौका तो नहीं दिया जाएंगे दोस्त। अब तो बिल्कुल ഈ ടൂർണമെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒട്ടനവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഈ MPL ടൂർണമെന്റുമായി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ അഞ്ചാമത്തെ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഇവിടെ ഈ ടൂർണമെന്റിന് പകിട്ടേറുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ടൂർണമെന്റിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രശസ്ത യൂട്യൂബ് വ്ലോഗർമാരായ മുല്ല ഉമർ, സിരു അതേപോലെ ഹാസിം ബാച്ച എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂവർ സംഘത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ 1000 കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാന വേദിയിലേക്ക്. वही इशारे पे खड़े हैं, नोट आउट के इशारा किए हैं, मैच को आगे बढ़ाना है किसी नमूना में भी। और डिजिटल संविधान है, नंगे आंख में देख रही है, तब कुछ संकोच नहीं किए। उन्होंने तीसरी अंपायर के मदद मांगे हैं, तब तीसरी अंपायर भी वही फैसले पे खड़े हैं। बिल्कुल अच्छी मैच। കടല സിദ്ദീഖ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമായ കടല വിറ്റുകൊണ്ട് ഏത് ടൂർണമെൻ്റ് ആവട്ടെ അവിടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ MPLൻ്റെ കൂപ്പണുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. MPLൻ്റെ ലക്കി ഡ്രോവിൽ പങ്കെടുക്കുക, 100 രൂപ നൽകുക, ഓരോ ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഈ പ്രധാന വേദിയുടെ മുൻവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ദയവ് ചെയ്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, എൻ്റെ പൊന്നു ചങ്ങായിമാർ, ദയവ് ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കുക, 2 വശത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുക, ദയവ് ചെയ്ത് പ്ലീസ്. मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, इस कमेंट्री बॉक्स के आगे खड़े हैं सभी लोग, हट जाइए। और इस गेंद बहुत खूबसूरत गेंद थी, अब चमके बिल्कुल बाहर, और इस गेंद को खेलना चाहा, बिल्कुल चकमा का है गेंद, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। शफीक के स्ट्राइक पर, स्कोर कार्ड पर अभी भी 31 रन, और इस गेंद को खेला गया है वाइड स्मिथ विकेट पर, गेंद गई है, तब तक फील्डर मौजूद थी। एक तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, 2 रन भी पूरा किए। इस 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 33 ऑन द बोर्ड, 33 पर 0, कोई विकेट पतन नहीं हुए हैं। देखिए शफीक और संतु बंटवाल के बीच में लाजवाब शुरुआत, लाजवाब पार्टनरशिप आप देख रही है। सीजन 10वीं MPL मन्नमकुझी प्रीमियर लीग सेलेक्टेड मन्नमकुझी की ओर से इस प्रतियोगिता देख रही है आप। फिर एक बार दूर वाली चोट से अराउंड द विकेट नंबर को क्रॉस करते हुए, और इस गेंद को उठा करके ला है, मिड विकेट पर गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑन पर गेंद गई है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच में गई है, तब तक 2 रन देखिए, रनिंग बिटवीन द विकेट, वाह रनिंग बिटवीन द विकेट, शफीक और संतु, वाह भाई वाह, जीतने के लिए उत्साह दिखा रही है दोनों बल्लेबाजों ने। 58-59 इज द विक्ट्री टारगेट, कोई छोटे लक्ष्य तो नहीं है, बड़े दरकार रखे हैं यहां पर। अब तो तैयार है शफीक के लिए, शफीक बहुत बड़े जोड़ी बन गई है संतु बंटवाल के साथ में। फिर एक बार दूर वाली छोर से अराउंड द विकेट, और इस गेंद को खेलना चाहा, लक्ष्य पर बीट हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट, और अंपायर ने कहा कि वाइड प्लस रन आउट, यानी कि वाइड गेंद वाइड थे और बाई रूप में 1 रन दौड़ना चाहते थे,
अपने जोड़ी को गवा दिया गया है संतू बंटवाल ने। लेकिन क्या बनाना थे, क्या चाहते थे, वो सब बनाकर दिए हैं। बिल्कुल अच्छी विकेट यहां पर। देखिए पिछले मैच में पहली सामना किए, पहली गेंद पर आउट हुए थे शफीक, उस जगह में आकर लाजवाब एक छक्के 2 चौके लगाकर रणनीति को तेजी के साथ दौड़ाए थे प्रदीप कुंबला। कुंबला की राजा कहते हैं इनको, अंडरआर्म क्रिकेट के कुंबला की राजा आ चुके हैं मैदान पर। संतू के पिछले मैच के बहुत बड़े जोड़ी हैं। अब देखना होगा कि अगली गेंद संतू बंटवाल के लिए स्ट्राइक का मिल चुके हैं अराउंड द विकेट और रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है सेंसिबल क्रिकेट। यहां पर कोई जल्दबाजी की, देखिए व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट। प्रदीप और संतू, प्रदीप भी दौड़ने में बहुत बड़े दौड़ते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर कोई ताकत नहीं लगाए, स्ली मिड ऑफ के बीचों बीच में दखल दिए गेंद को। रनों की संख्या टोटल स्कोर इज 38 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार गली पर दखल दिए, तब तक फील्डर मौजूद थी। 1 रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किया और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 39। 1 मोर बॉल टू गो। आखिरी गेंदे बचे हैं। प्रसन्ना गेंदबाजी कर रही है, तब स्ट्राइक पर प्रदीप कुंबला। प्रदीप कुंबला स्ट्राइक पर मौजूद है और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। लॉन्ग ऑन पर गेंद जा रही है, तब तक 1 रन। दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है लेकिन नहीं। ओहो, 1 के जगह 2 और पहली रन के लिए दौड़ रही थी, तब डायरेक्ट हिट तो जरूर लगे थे, इसलिए तीसरी अंपायर के मदद मांगे हैं। अगर पहली रन में रन आउट है तब कोई रन नहीं मिलेंगे, अगर रन आउट नहीं 2 रन तो निश्चित रूप में यहां पर मिल जाएंगे। जो भी हो, यहां पर दरकार के लक्ष्य तक जा रही हैं। 39 पर पहुंच चुके हैं। 59 इज द विक्ट्री टारगेट। और इसी के साथ आउट, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद में 0। विकेट तो पतन हुए हैं, बहुत बड़े मछली को यहां पर नुकसान हुए हैं। प्रदीप आउट हुए हैं, फर्स्ट रन एंड आउट। ओके ओके सर, ओके क्षमा कीजिए। 1 रन कंप्लीटेड, 1 रन पूरे हुए हैं। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, तब यहां पर डायरेक्ट हिट लगे हैं, उस वजह से दूसरी रन भी दौड़े थे लेकिन रन आउट हुए हैं। 1 रन कंप्लीटेड। ओके ओके सर, थैंक यू। प्रदीप आउट हुए हैं, उनके जगह पर नए बल्लेबाज के आगमन हुए हैं अंसार खेजा। पिछले मैच में दिखाई नहीं दिए, इस मैच में इनको फ्लडलाइट के रोशनी पर बाहर निकाले हैं। बहुत बड़े बल्लेबाज के रूप में जाना जाते हैं। सिर्फ कासरगोड जिला नहीं, दक्षिण कन्नड़ा जिला में भी बहुत बड़े फैंस हैं उनके पीछे। कृष्णापुरा में हुए थे मैच में, दे दनादन धुआंधारी पारी खेले थे इन्होंने। अब नो स्टेकन पर आकर खड़े हुए हैं। स्ट्राइक पर संतू बंटवाल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़े हैं। पिछले मैच में भी अंतिम क्षण तक खेले थे, इस मैच में भी देखिए लक्ष्य प्रदान है इनके लिए, लक्ष्य, ये जीत है इनकी। अब नए गेंदबाज है सफवान मचम्बाड़ी, बाया हाथ में गेंद फेंकने वाली गेंदबाज है अराउंड द विकेट। रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, 1 रन तो तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। दूसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं, यहां पर 2 रन भी पूरा कर चुके हैं। 42 ऑन द बोर्ड, 42 रन, 17 रिक्वायर्ड। $11 to go, 17 to get।
संतू बंटवाल कब तक मौजूद है तब तक डरने की सवाल तो फायदा नहीं होंगी, क्योंकि उतनी बड़े विश्वसनीय बल्लेबाज है। अब दूर वाली चोट से फिर एक बार सफवान मच्छम्बाड़ी संतू बंटवाल के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट। संतू इस गेंद को झाड़ू शॉट खेलना चाहते थे, कुछ क्षण के लिए अपने बल्ले को झाड़ू बनाए, लेकिन सही सलामत गेंद तो बल्ले पर आए लेकिन सही सलामत नहीं आए। एक रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किए। एक रन के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए 43, लॉस ऑफ 2 विकेट, 16 मोर रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 10 डिलीवरी। 10 गेंदे बचे हैं, 16 रन की जरूरत है। बस एक शॉट दुनिया बदल सकते हैं। अंसार केजा स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अंसार केजा सफवान को सामना करने के लिए, और इस साल इनके लिए बहुत बड़े साल हैं 2026। ओहो, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क तो नहीं हुए हैं, क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, सेट नहीं हुए हैं, अभी अभी आए हैं। अब तो 9 गेंदे बचे हैं दोस्त, 16 रन बनाना है। एक शॉट की कमी है अभी भी बिच्छू बॉयज मन्नमकुझी के लिए। अब तो बिच्छू बॉयज के सारी फैंस, सारी सपोर्टर्स यहां पर इंतजार कर रही है एक जीत के लिए और एक जीत के लिए। फिर एक बार लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। दूर वाली चोट से अंसार, बढ़िया गेंद, लेकिन अंपायर ने कहा कि गलत लाइन है, अतिरिक्त लाइन है, और इसी के साथ ही एक रन फ्री में मिल चुके हैं। फ्री में मिल चुके हैं। रनों की संख्या 44 ऑन द बोर्ड, आने की 44 रन। आप देख रही है एमपीएल सीजन 10वीं, मैच नंबर 5, मैच नंबर 5 आप देख रही है। अब बहुत बड़े संघर्ष भरी हुई स्थिति पर पहुंच चुके हैं दोनों टीम, आरके स्ट्राइकर्स मुलियड का और बिच्छू बॉयज मन्नमकुझी। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। स्ट्राइक पर केजा, एक गेंदे सामना कर चुके हैं 0 पर खेलते हुए, और इस गेंद को खेलना चाहा, और इसी के साथ अंसार केजा उनके फैंस के सामने पूरी तरह निराश किए इन्होंने, विकेट पतन हुए हैं। संतू बंटवाल भी कुछ कह रही कि क्यों आप मारना चाहते थे, मुझे मौका क्यों नहीं दिए, यही कहता होगा संतू बंटवाल ने। अब देखिए उनके सही जोड़ी आ चुके हैं, धर्मा का सरगुट, लाजवाब खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े गेंदबाज हैं और मिडिल ऑर्डर में विश्वसनीय बल्लेबाज के रूप में जाना जाती है इनको। खूबसूरत विकेट यहां पर मिल चुके हैं। 8 to go, 15 to get, छक्का लगाना ही होगा दोस्त। यहां पर गेंदबाजों ने सही सलामत गेंदबाजी करेंगे तब आरके को डरने की कोई सवाल तो फायदा नहीं होंगे। लेकिन एक बात पक्का है कि संतू बंटवाल कब तक मौजूद है तब तक धड़कन बढ़ते जाएंगे, आरके स्ट्राइकर्स के मालिक के दिल के धड़कन बढ़ते जाएंगे। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट सफवान, बहुत अच्छे काम किए अपनी टीम के लिए सफवान ने, कंजूसी गेंदबाजी कर रही है। दूर वाली चोट से लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है सफवान, उनके सामने धर्मा, फिर एक बार वाइड। सफवान अपनी योगदान तो बहुत खूबसूरती के साथ निभा रही है, लेकिन बीचों बीच में इसे छोटे छोटे गलती यहां पर बड़े परिणाम हो जाएंगे दोस्त। आपके ऊपर विश्वास रखे हैं आपके टीम के कप्तान, मालक, टीम आइकॉन, उस विश्वास के ऊपर खड़े होकर खेलना ही होगा कोई भी खिलाड़ी। अब तो धर्मा मालक के विश्वसनीय खिलाड़ी है, कप्तान है। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, फिर एक बार दूर वाली चोट से, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, कोई ताकत तो नहीं लगाए, एक रन तो तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं, एक ही रन। संतू बंटवाल के लिए स्ट्राइक मिल चुके हैं, 7 गेंदे बचे हैं, 13 रन की जरूरत है। 7 to go, 13 to get, 7 to go, 13 to get। बस एक शॉट दुनिया बदल सकते हैं, बस एक शॉट दुनिया बदल सकते हैं, बड़े शॉट एक टन टनाटन पूरी तरह बदल जाएंगे। देखना होगा कि
टन टनाटन किसके बल्ले से आते हैं ना एक विकेट किसने हासिल करते हैं। सफवान के बंदूक में एक गोली बचे हैं। सामने है संतू बंटवाल, बिल्कुल अच्छी नजारा है। भरी हुई दर्शकों के बीचों बीच में देखिए, आज तक मन्नमकुझी स्टेडियम में पहले दिन में ऐसे दर्शक तो नहीं देखे हैं। आज के दिन तो चकाचक भरी हुई दर्शक। धन्यवाद, बिग सैल्यूट फॉर ऑल। अब अगली गेंद, लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेलना चाहा। सफवान सफवान सफवान, देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी की है। वाह भाई वाह, व्हाट अ फिनिशिंग हिम। क्या समाप्त की है इन्होंने। 2 वाइड तो जरूर फेंके हैं, लेकिन भी कितने कंजूसी गेंदबाजी की है। 1 ओवर, नो मैन एंड 6 रन, 1 विकेट। वाह भाई वाह, बिल्कुल जबरदस्ती बना दिए, यानी कि संघर्ष में डाल दिए इस मैच को सफवान ने। साइलेंट किलर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट कहते हैं सफवान को। कभी भी मुस्कुराते रहते हैं, चुपचाप रहते हैं मैदान में सफवान। अब नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं। दीक्षित कप्तान के आगमन हुए हैं। कप्तान को तो जवाबदारी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरे छोर में भी कप्तान है। 2 कप्तानों की बीचों बीच में लड़ाई जा रही है। बल्लेबाजों के लिए आइकॉन भी मौजूद है, आरंभिक बल्लेबाज है। अब देखना होगा कि दीक्षित हो खेला गया है हवा पर। कप्तान को पास भेज दिया गया है। संतू बिल्कुल निराश है। यहां पर धर्मा आउट। अब आए हैं आशिक कोपला। आशिक मंजेश्वर की आगमन दिख रही है, उनको मौका दिए। मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा मुझे विश्वास है कि आशिक कोपला को यह निर्देश मिला होगा कि संतू बंटवाल को जल्द से जल्द लाइए स्ट्राइक पर। यही निर्देश मिला होगा। ये देखिए, यही निर्देश है। सही सलामत इन्होंने स्ट्राइक रोटेट किए। अब तो 4 गेंदे बचे हैं, 12 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। कुछ देर पहले बस एक शॉट दुनिया बदल सकती थी, लेकिन बस 2 शॉट दुनिया बदल सकते हैं। अब अगली गेंद और उठा कर खेला है, वाइड स्मिथ विकेट पर गेंद गई, तब तक का फील्डर ने छोड़ दिए। What a interesting match. അടുത്ത മത്സരത്തിന് ടോസിംഗ് നടത്തുക HN ഫ്രണ്ട്സ് ബപ്പായി തൊട്ടി ക്യാപ്റ്റൻ ഹരിയപ്പ്. मिस फील्ड के वजह चौके मिले हैं। अब देखिए 3 गेंद में 8 की जरूरत है। अगर गेंद को पकड़ जाते ज्यादा से ज्यादा 2 रन दौड़ जाते थे। यहां पर 4 रन मिले हैं। अब अगली गेंद दीक्षित टू संतू बंटवाल, ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिए विकेट कीपर की तरफ। संतू समझ रही थी कि वाइड चले जाएंगे, लेकिन नहीं। सामना किए, पहली गेंद को दखल दिए थे गेंदबाज की तरफ, दूसरी गेंद में चक्के लगाए थे इस खिलाड़ी। अब तो देखिए खामोश के मीन्स खतरा। हवा पर गेंद देखिए, इतनी हिम्मत। संतू जी बाउंड्री, बस 2 बाउंड्री लगा दिए इस ओवर में। 1 to go, 4 to get। हिम्मत वाली बल्लेबाज है। ऑप्शन के बाहर थे, खतरा गेंद थे, उसको विकेट कीपर की तरफ जाने दिए। संतू खेल रही है 42 पर।
42 पर 22 गेंद को सामना किया। 1 to go for ticket। टन टनाटन आ जाएंगे। देखिए, ओहो फील्डर मौजूद है और इसी के साथ बिच्छू बॉयज को निराश, क्योंकि संतू बंटवाल काफी कोशिश की है। यहां पर बिल्कुल निराश के साथ संतू बंटवाल आ रही है, क्योंकि 43 रन बनाकर नॉट आउट रहा। 2 मैच में भी नॉट आउट है इन्होंने, पिछले मैच में भी नॉट आउट थे, इस मैच में भी नॉट आउट है। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, इस मैच में अगर जीत दिलवाते तब वो मैन ऑफ द मैच के लिए यहां पर निश्चित रूप में मौका थे, लेकिन ऐसे नहीं हुए हैं। अगली मैच के लिए जाना ही होगा। One second, Atif Yenap. The cash award of rupees 1,000 from yes, receiving cash award rupees of 1,000 from Mr. Shamima Zaman Kalpara, one of the backbone of MPL seasons, and definitely he's supporting in each and every MPL season over here. Once again, thank you, sir, Mr. Shamima Zaman Kalpara. Yes, very fabulous, interesting match comes today, and that is a match between RK Strikers Muriaka versus Bichu Boys Mannamkuzhi. What a match comes to an end here. It was a very interesting match between those teams. Yes, have we go with the match number 6. That is BSC Babai 30 takes Yachan Tigers here. Yes, BSC Babai 30 on the toss and elected to bat first here. Very good start from the bowlers, and here Harry's the opener bowling from the side of Yachan Tigers.
The first over is in progress, taking the guard of right and round the wicket for the batter here. We have the Fires as well as Fires A as well as Fires B from the side of BSC Bapai 30. First over is in progress. Have a look at the crowd. Have a look at the full loaded crowd of MPL season 10 here. Very good stroke. Very good bowling from the hands of Harris here. 2 balls have been completed. There is no chance of going for the big shot in the particular delivery of first overs here. Initial over. The captain gave full responsibility for the bowler here. That is Harris. Everything is just perfect of this particular MPL season 10, which is presenting Mannamkuzhi Premier League, which is presenting Selected Arts and Sports Club with the leadership of Hani Fumanga. Looking for the big shot this time. There is no connection at all, and a very good backup from the behind the stumps. There is no chance of running between the wicket for the batter here. A very good start from the hands of Harris for the HN Tigers. 3 deliveries have been completed. 3 more delivery left in this first initial over number 1. Yes, just left 1 run in 3 deliveries. A very good decent start from the hands of Harris here. Restricting the batters completely. The Fires A as well as Fires B looking for the big shot in this time. Into the mid-wicket region. Meanwhile, completed single. 1 more addition to this scorecard. That is not at all enough. Rotating the strikes and taking singles. That is not at all enough for the side of BSC Bapai 30 in this first over here. We have completed 4 deliveries. 2 more to go in this particular over number 1. Harris have started very perfectly with the ball. Line and length was perfectly blazing. Another one. Very good delivery from the hands of Harris. Slide away into the pad and going towards the 3rd man region. Meanwhile, one couple of runs here. Completed couple of runs. 2 more addition to the scorecard. 4 on the board after completion of 5 deliveries. So far, very beautiful delivery have been blazing by Harris from the side of HN Tigers. Which will be the advantages of a fielding mark, because just left 4 runs in 5 deliveries. So far, beautiful delivery from Harris. Once again taking the guard of right and around the wicket for 5 yards here. Going for the big shot, going for the big star this time. Another one dotted delivery. Yes, umpire goes for upstays. Call is wide, and definitely we have to wait for the 3rd umpire decision here, as it's called wide, and 5 on the board. Last 1 more delivery left in this particular first over here. Once again taking the guard of right and round the wicket for Fires. Very nicely bowled, and very good fielding over there behind the wicket keepers, and completed first over. Over number first is also beg your pardon, once again wide call from official here. Yes, 7 on the board right now. Last 1 more to go in this particular over number first. Yes, consecutive extras have been blazed by the bowler here, Harris. But so far did very perfect job. Just left 7 runs on the board after completion of 5 deliveries. Last 1 more to go in this particular over number 1. Yes, going for reverse sweep this time. There is no connection at all. Meanwhile, direct for the pad and taken comfortable single here. Finished the first over. The closing of over number 1. The scorecard is 8 on the board. There is no damage from the batting mark here. Yes, completed first over, and the scorecard is 8 on the board. A very good start from the side of HN Tigers here. Just left 8 runs in the first initial over of match number 6 here. The bowlers have to tackle the batsman and they have to restrict the batsman to go for a big shot in this particular match between those teams. Definitely the dark lights here. It's quite difficult to play the batsman, quite difficult to blaze the deliveries to the right position of the mark here, and all the players have been playing very perfectly in this particular match, a particular tournament of MPL season 10. A very wonderful match. It is not a small game. It is a festival of one-jam cricket over here in this Mannamkuzhi
mini stadium. We have started around the 3 o'clock in the afternoon, and still continuing. Have a look at the crowd who are gathered here in this particular match. We are definitely witnessing a beautiful match between those teams here. Once again, Fovi's captain comes into attack with the bowling mark here. Very good delivery here. Nicely sweep towards a straight back region and taken a comfortable single here. One more addition in the form of single. Fovi's the captain of HN Tigers, the cool, calm captain from the side of HN Tigers here. He is having that very, very experience in drum cricket. We have seen last match how we played in the batting mark. Stylish strokes have been placed, and this is what he is doing in the bowling mark even in the second match over here. Yes, nicely bowled this time. A very good running between the wicket. We can see from both the batsmen, Fires as well as Fires. Fires A and B we can mention for the batter here. Yes, a very good running between the wicket. So far, bowling mark HN Tigers are doing perfect job in the initial over of over number 2 here. For his bowl perfectly 2 deliveries. The scorecard is 10 on the board. And 4 more delivery left in this particular over. Yes, changing the guard for each players here. Nicely drawn, nicely one toward the mid-wicket region, and field perfectly fixed over there. Direct throw towards the bowlers and managed with that single here. One more addition to the scorecard with that single. The scorecard is 11 on the board. Vovis is doing very perfect job in the bowling mark. A very perfect line and length towards sticks was beautifully placed over here in this over number 2 here. Nicely driven towards the deep long off region and taken couple of runs. Yes, very good running between the wicket here. Over throw, and there is a fumble. There is sounds of another one running between the wicket. Meanwhile, satisfied with a couple of runs over here. 2 more addition to the scorecard here. A very good stroke have been placed towards the deep long off region. Fielder fixed perfectly, but the running between the wicket was quite fast and have been collected. Couple of runs over here. 2 more addition, 13 on the board. Second over is in progress. 2 more deliveries are left in this particular over. Changing the guard once again. Yes, have a look at that. That is what changing the guard for each and every player's left hand and right hand combination. Quite difficult for the bowler to change each and every situation of that batters when rotating the strike. And definitely it's quite not easiest thing to bowl each left and right hand batsman over here in this particular match. Yes, nicely driven towards a square leg reach, and there is no fielder fixed. Perfectly boundary comes for the Fires here. 4 more runs addition to the scorecard. What a drive it was. A classic hit from the hands of Fires, where there is no fielder fixed, perfectly hitting the stroke towards the boundary region and collecting the 4 more runs over there. That is what brilliant cricketing stroke we can see from Fires here. What a good touch, what a classical hit. Magnificent, terrifying stroke towards the deep square leg region. 4 more addition in the scorecard. Brilliantly placed over there. 17 on the board. Second over have been completed over here. There is no damage at all from the side of batting mark. 2 Fires, that is Fires A as well as Fires B is working perfectly for BSC Bapai 30 as well as very good lineup, batting lineup they have built in Bapai 30. The Shabir, the captain, has to come in the batting mark. He have played very tremendous game in the last match. We have seen lofted maximums, lofted boundaries for his team, and that was the victory for them in the last previous match. Yes, beautiful from the side of BSC Bapai 30, restricting the bowler to take the wickets of batsmen over here. That is what the batsmen have to do, understanding between each other, taking singles and couple of runs, rotating the strike and getting boundaries in the easy deliveries. That is what a brilliant stroke. That is what the brilliant cricketing stroke we can see in this particular match between those teams. Yes, once again our captain brings here Harris once again into the attack. Nicely delivered, nicely delivered. Very good sweep it was toward the single declaration and taken comfortable single here. Have a look at that. There is no aggression between the batsman. The Fires is giving strike to Fires because he knows that already he hit a boundary for his account, and definitely that is what the Fires is doing.
and giving a strike to Fires over here. That is what a beautiful game between each batsman here, understanding each other and rotating the strike in the regular intervals. Once again, Harris to Fires, the second delivery of third over here, taking the guard of right hand round the wicket for Fires. Nicely delivered. What a brilliant piece of delivery. What a brilliant piece of delivery. There is no connection at all for the bat and ball. Perfection was beautiful towards the sticks. That is what consistency. That is what consistency with the ball by placing by the Harris here. We have seen in the first initial over, just left 9 runs in the first over, and captain again bring back that same bowler Harris into the attack in the over number 3. That is what he is doing, his responsibility over here in this particular over number 3. Once again dotted one, but there is a silly mistake in the behind the stamps, doesn't work perfectly. Meanwhile, cross single run here. One more addition in the form of by CSR. One more addition, 19 on the board. 3 deliveries have been completed. 3 more deliveries left in this particular over number 3. Yes, beautiful delivery from Harris here for Action Tigers. That is what Fervis is doing over here. Right candidate, right bowlers putting at the right time on this situation. That what makes a huge difference for the fielding mark over here. Yes, 19 on the board once again for Fires here. Taking the guard, changing the guard, and hitting the deliveries. There is a chance of direct hit, and this time a bumble, and the chance for a couple of runs. Meanwhile, cross single here. There was a chance for a couple of runs for the overthrow did by Pritham from the behind the stamps, but meanwhile the back was perfect over there from the deep long on region, and they satisfied with the single run over there. The scorecard is 20 on the board. Again, changing guard towards right and round the wicket for Fires here. Yes, nicely driven towards the long of region. Mayfield fixed over the upper underneath, and this time the first wicket have been fallen in the form of catch. BSC Bapai Tote losing the first wicket of Fires over here. The opener Fires walking back to the dugout. A very good partnership they have built in this initial of this yes, last delivery of third over. Captain comes into attack in the batting mark here. Shabir Bapai 30. We have witnessed the last match of Shabir here. Have a look at the stats. Have a look at the classical touch towards the fine slip over there and taking comfortable single. Once again, Shabir is taking the strike for over number 4 here. Came faced for single. Delivery hand nicely placed towards the fine sleep breach and taken comfortable single here. After completion of over number 4, the scorecard is 21 on the board. Yes, loss of 1 wicket. The Fires walked back to the pavilion. That is the breakthrough for the openers. Fires A as well as Fires B came as opener. Played nicely till 2.5 overs and have been collected 20 runs as a partnership by Fires. Both have been started very perfectly for team like Team BSC Bapai 30, and this time captain itself came into the attack with the bat over here and facing fourth over the bowling mark. We have the captain introduced the new man Nitish from the side of Action Tigers, the cutter from the side of Action over here, spelling fourth over of this particular match between those teams. That is BSC Bapai 30 as well as Action Tigers here, facing fourth over to Shebi here. Nitish to Shebi, taking guard of right and over the wicket.
Yes, time is 10 point 18 minutes here. The crowd, have a look at the crowd who is witnessing this particular MPL season 10. It is not just a game, it is a festival of Antram cricket. The interest of crowd absolutely tremendous over here. Have a look at the crowd, have a look at the crowd. Crowds are gathering from different places of the district. Not only from Kasaragod, people are coming, people are rushing from Mangalore as well. Nicely driven towards fire. Third man region and taken a comfortable single here. Very good running between the wicket. We can see from Shabir as well as Fayaz here. Beautiful running between the wicket. It is 24 on the board. Loss of 1 wicket. We are in the 4th over. Two deliveries have been completed. 4 more delivery left in this particular over number 4. Nitish to Shabir. This time looking for the big shot and lofted nicely towards the onside region and 1 bounce boundary there. What a stroke! What a massive hit from the hands of Shabir BSC Babaitodi. The captain is on fire right now. Have a look at the drive. Have a look at the stroke. Have a look at the pickup of that delivery. Placed nicely towards the onside region and taken comfortable boundary there. 4 more addition to the scorecard here. 24 on the board. We are in the 3rd over. 3 deliveries are remaining in this particular over number 3. What a brilliant stroke from the hands of Shabir Babaitodi here. A very good batting performance. 27 on the board. What a batting performance have been witnessing by Shabir, the captain of BSC Babaitodi here, brilliantly placing the deliveries. Looking for a reverse sweep this time. There's a bit bumble in between the in middle and meanwhile dotted one. Very good comeback from Nitish from the side of Veteran Tigers. Have a look at that, hitting a previous delivery into the boundary and coming back to the sticks was perfect. That is what very classical, very experienced campaigner who is doing is not getting nervous by hitting one boundary, is getting his line and length towards the stick, was making correction of line and length was perfect here. That is what a good bowler, a good campaigner of Antram cricket have to do in such a situation, such a big tournament. It is not a small tournament, it is a high voltage match, high voltage tournament, which is MPL season 10. Yes, once again Nitish too. Shabir here going for big shot, as I told. Cutter delivery from the hands of Nitish. It's bouncing like anything. There is no perfection with bad from the side of Shabir here. Meanwhile, cross single, more run here. 21 run, 28 run on the board after completion of 5 deliveries. For last 1 more delivery left in this particular over number 4 here. For Fayaz, this time last delivery, looking for the big shot. This time ups in the air and fielder rushing towards the ball. Cuff completely caught it, that one. Very good running catch by the deep Squalak region fielder, and 1 more blow, 1 more Fayaz walking back to the dugout. Beautifully placed, but this time there was not, power is not enough to cross the maximum over there, and meanwhile fielder rushed towards the catch and collected perfectly here. Second wicket have been fallen in the last delivery of 4th over. Over number 4 completed. The scorecard is 28 on the board. Loss of 2 wickets. Music, DJ please. But by 30 we have completed 4 overs. 2 overs are remaining over here. Shabir Bapai 30 and Khalil Kandam Star. I guess Khalil have been played very perfect batting on the last previous match. We have seen lofted nice maximum towards the deep onside region, and this time
have to watch and wait for his performance. They have to go for big shots in last coming 2 overs. Just 12 deliveries are left and this particular to wind up this particular innings number 1 here. The captain brings Vijay Mara into the attack with the bowling mark, taking the guard off right hand over the wicket for Shabir. Captain here sweeping the delivery this time. There is a chance of run out and goal for run out. The finger crossing. One more wicket have been fallen here. Straight away, Khalil walking back to the dugout here. What a disappointment. This is Hercules for Khalil Kandam star. Very sad moment. Unnecessary running between the wicket. Misunderstanding between each other. That was not required in this such situation because just 20. കീ കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ കമന്ററി ബോക്സിൽ എത്തിക്കുക. Yes, third wicket have been fallen. It was unnecessary for the batters to running between the wickets because just 28 run on the board. We are in the 5th over of first innings here. Nicely sweep, nicely drive it towards the final leg reach, and meanwhile going for a couple of runs. This is a chance for run out, and there was a missed throw. And meanwhile completed couple of runs and 2 more addition to the scorecard here. 30 on the board. 5th over is in progress. 2 deliveries have been completed and 4 deliveries left in this particular over. Number 5. Yes, Shabir has to do some magical stroke here to reach a good total target for the against team like Team H&M Tigers. And the new batter came into the attack. Adarsh, another one. Wicket have been fallen. Another one wicket have been fallen here. Consecutive wickets for Vijay Mara, the experienced campaigner from the side of H&M Tigers. Very, very bad luck for team BSC Bapai Toti in this particular condition. We can see in this 5th over, Vijay Mara is doing some googly over here in this 5th over. What in a start of over number 5 from the hands of Vijay Mara have been taken. 2 wickets, 3 delivery, 2 wickets have been collected. This is what a brilliant over from the side of Vijay Mara. 30 on the board, loss of 4 wickets. 5th over is on progress right now. A very good bowling mark from the side of Vijay Mara for H&M Tigers here, taking the guard right and over the stamps for the new man, looking for the big shot this time. Nicely driven toward the deep square leg reach and a goal for a couple of runs, and satisfied with the single more run here. 1 more addition for the scorecard. 31 on the board here. Yes, we won't. If we haven't seen any big strokes in this particular match between those teams till now. Yes, they have to. Shabir have to go for maximums as well as boundaries to reach a good total for their team here. Once again, Vijay Mara to Shabir. This time there is a bumble with behind the stamps. Pritham doesn't work perfectly. 1+1, wide +1, 2 more addition to the scorecard. Slightly away from the off stump region. 2 more addition to the scorecard here. Definitely doesn't matter in this particular situation because 33 on the board. We haven't seen any big shots in this particular
match between those teams. Yes, once again, Vijay Mara taking the guard off right and over the stamps for Mustafa. Yes, going for a big shot this time. There is no connection. Meanwhile, heading to the pad and getting single more run. Very good perfection with the ball with Vijay Mara here. The over number 5, last delivery of over number 5, Shabir. We haven't seen any big shot from Shabir, the captain of BSC Bapai 30. Definitely the crowd is waiting for the maximums as well as boundary. Definitely maximums and boundaries are required to make happy for the crowd over here. Yes, once again, last delivery of 5th over, going for big shot this time. There is a big uphill, and finger rising from the side of Harish Patil here. The captain of BSA, Bapai Totti, Shabir, the small guy walking back to the dugout here. Shabir's innings comes in and one more blow from the side of BSC Bapai Totti. We are closing the over number 5, 34 on the board. All the way from Bangalore, especially introduced for MPL season 10. Definitely, it is not at all easiest thing to judge each and every condition of the deliveries and strokes that what they are doing in the bare eyes. Definitely, we have to hats up for the official like Saifuddin, Harish Patil as well as Mohini Gari, introduced for special introduced for MPL season 10. Last over from the side of Veteran Tigers here, looking for the big shot this time. There is no connection. Meanwhile, there is chance of run out. Yes, and perfect it from Pritham. One more wicket have been fallen here. Wickets are falling in the regular intervals. Have a look at the shot. Have a look at the direct hit from Pritham. Catch it, go to perfect. A very good running between the wickets. He just one boundary has seen in this particular match between those teams. This card is 35 on the board. 4 more deliveries left in this particular over number 6 here. Siraja taking the guard off over the wicket for Mustafa. Nicely driven towards the deep square region and taken comfortable caught over there in the leg, using leg. What a stop it was by using a fielder's leg. Minimized 2 runs over there. Yes, definitely that which helps for the fielding team, minimizing the scores from the batter's side, and just taken couple of runs over there by running between the wickets. 37 on the board, loss of 6 wickets. 6th over is in progress. Siraj with the bowling mark, taking the guard of right and over the stumps for Mustafa. Once again, Siraj to Mustafa, the 4th delivery of 6th over. Looking for the star this time, ups in the air and chance for a caught. Yes, one more wicket have been fallen. What an extraordinary fielding on the deep onside region. One more wicket have been fallen. This time Mustafa walking back to the dugout. Mustafa's innings comes to the end for
The 7 wickets have been lost from the side of BSC. Papai 30 is a huge wicket to so far in this particular tournament of day number 1 here. No, this time finger rising over there, straight away to the wooden stick. Have a look at that, have a look at the celebration from bowlers. Beautiful to facing last delivery right over the stamp for Riaz Maria, going for big shot, but connection there was no perfect. Meanwhile edging to the bad, and meanwhile taking comfortable single here. Yes, we are winding up with the innings number 1. Scorecard is 38 on the board, loss of 8 wicket. 39 is a victory target for team like Team H Tigers. മത്സരങ്ങൾക്കിടെ ആവേശമായ DJ മ്യൂസിക്കുമായി നമ്മുടെ അസി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. അസി, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, ആൻഡ് താങ്ക് യു പ്രീതം കുമ്പള. മൂവിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് ഓഫ് BSC പപ്പായത്തൊട്ടി വേഴ്സസ് HN ഫ്രണ്ട്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ടീം RGB ബേക്കൂറും HB പാപ്പിലയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ഇരു ടീമിൻ്റെയും കളിക്കാർ സൈനപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുക. കാസർഗോഡിന്റെ ദക്ഷിണ കർണാടകയിൽ നിന്നെത്തിയ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ഹൃദയംഗമായ സ്വാഗതം. യെസ്, വി ആർ റെഡി ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ഇന്നിംഗ്സ്. 39 runs of target, looks to be a easy one in 36 balls of second innings for the team HN Tigers. There is Fayaz coming with the over number 1, and Shanid and Haris TK the batters. Lovely little delivery to start the action by Fayaz, the strike bowler. Started the proceedings, the bowling operation in style for the team BSC, who emerged victorious in the previous encounter of MPL.
with a wonderful performance by the batting department. This time takes it through the onside region, finds a gap to move between the wicket by the batters. First run on card by the team HN Tigers. Harris, the icon player from HN, scored straight away and opened the scorecard of HN while chasing the target. Not a difficult task, but BSC have a very good resources to use in the second innings as a bowlers. Plenty of options. We have seen their bowling quality in the previous match. And this man is a gem of the player, Fayaz, who can generate some extraordinary pace. Have a look at the straight up, and there will be the wicket. What we talking about? This man's pace that produced the wicket. My G, what a start given by Fayaz. Absolutely a cracker of a start from the strike bowler, who just giving a flyer of a start. Wicket number 1 down. One for the loss of. ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് ത്രില്ലറിന് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായി crowdine കാണിച്ചുകൊണ്ട് Fayaz, a fascinating Fayaz that started the mission here for the team BSC Bopai Thoti while pick up the wickets. Oh, it's a gain. Another terrific delivery from Fayaz, but this time the batter straight away finds a run. And off the mark by Farviz, the captain of HN Tigers. It's in the air. One more opportunity. Well, it was landed very safely on the ground without giving any kind of chance. What a beautiful five deliveries by Fayaz. A fabulous, fantabulous Fayaz, who just working and already grabbed a second. Here comes the last ball of the over, number 1. Farviz nicely opened the face of the bat and just timed it straight to the field. Gets a single comfortably. The over passed by the batters, but there is a tighty over on the other side by the bowling side of BSC Bopai Thoti. 4 for the loss of 1 after 1 over. Interesting start given by the strike bowler Fayaz. ഒരൊറ്റ വിക്കറ്റ് 4 റൺസുകൾ മാത്രം ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആധികാരികമായി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഫയാസ് എന്ന സ്ട്രൈക്ക് ബോളർ. 39 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റാണ് മറുഭാഗത്തെങ്കിൽ മത്സരം കടുത്തതായിരിക്കുമെന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോടുകൂടി ഫയാസ് മണ്ണൻകുഴിയുടെ മൈതാനത്ത് ആരംഭിക്കുന്നു തന്റെ ബോളിംഗ് വിസ്മയവുമായി. Here comes Shabir, the star face from BSC Bopai Thoti, the captain coming with the over number 2. A fantastic future star of one-round cricket. Shabir already emerged some big and major tournaments successfully as a captain. Here is the man ready to load the action for the over number 2. Coming with the over the wicket in front of the right-hander. Farviz keeping the strike. Actually left, but this time wide is the call. Wicketkeeper delighted when he collected the ball, but it was just marginally outside from the guideline says by the umpire. Asking for a review by the fielding team captain. Have a look at that one. And it's up to third umpire. We have Mohan Yadi as a third umpire. Harish Patel and Saifuddin standing on the middle as an on-field umpire for this match number 6 of MPL 10.
What a wonderful tournament. 15 lakh for the winners, 7 lakh for the runners. Wide is the confirmation received from the third umpire. On-field decision stands. Review lost by the bowling side. Nicely takes it that one, placing that one nicely by Farviz. Gets a single. He knows that singles can win this game for H and friends Hidayatnagar. The man is working and concentrating with some singles, watchfully giving the treatment when through the line. Fantastic batting in the top order by Farviz. He was comes as a one-down batter and generating the scorecard with some singles. Little bit furious delivery. It was the opportunity, but very well landed in between the wicket keeper and the fielder. Safely ball landed. And there is a single taken by Harris. Captain and icon player are in the middle for the team. H and friends Hidayatnagar. On the other side, captain of BSC Bapai Toti. He just searching for the wicket. They demand some wicket in the starting session. Well ball, very well controlled one, tighty one looks to be, but easy way the bat is moving between the wicket while calling and response that looks outstanding from these two batters. Innings is building in a steady way. Exactly 31 required from 27 balls. Not a difficult task in wickets in hands. It's an average target. We have seen a pretty decent bowling performance by BSC Bapai Toti in the previous innings by all the bowlers. Trying to loft and catches a call and taken. That is a big wicket. Oh man, singles can win this game for the team H and friends Hidayatnagar, but this man is trying for a glamour. Coming back into the process. Just scored 38 runs in the previous innings. But what an important way two bowlers they were making and producing the breakthrough as a wicket. Front line 2 wickets down. 8 for the loss of 2 by H and friends. Here is Preetham. A very strong bottom hand player comes in at number 4. Oh, tried and missed on this occasion. Inches close from off stump. It is a stunner from Shabir Bapai Toti. He just making his explosion of deliveries right on the track, that not giving any kind of clue for the batter to react. Fabulous bowling. A brutal bowling from the master of BSC Bapai Toti. Here comes the last ball. That's again a beauty. Wow. Bapai Tottiയുടെ കൊസ്രാങ്കൊള്ളി ഓവർ ഗംഭീരമാക്കുന്നു. 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 8-2 എന്ന നിലയിൽ game is on, my dear cricket lovers of Mannamkuzhi. 8 for the loss of 2 in a decent score. That puts on the board by the team BSC in the first innings. They were rightly sitting in the game and they were ready to conquer a game against H and friends Hidayatnagar. What a way the match is turning. 24 balls, 31 required.
Outstandingly well completed. 2 overs of power play by the bowling side. Batters are not in the picture of the frame. It is completely holding and shining. Brighter than the floodlights. The bowlers of BSC Bapai Thoti. Here is Fayaz coming with his second over. What a thriller of previous over. He just bowled while just conceding a 4 runs and grabbed a 1 big wicket in the top. He coming back into the attack. Farviz on strike, the captain of HN. Oh man, big appeal there. Electric quick delivery from Fayaz. Oh, just staggering genius. Making his variation perfectly with his stellar talent. Nyettikkunnu Mantarigal of Mannamkuzhiye with a typical tremendous bowling display. It's again watchfully gives a treatment while up on the face of the bat. Farviz looks so cool on the other side. When his partners are losing on the one end, Farviz is keeping calm, cool as a cucumber, making this night eventfully and fruitfully for the team. HN friends Hidayat Nega. 30 required, 22 balls remaining. Preetham Kasargod. Known for big hits. Trying for big hits. Not gets a right elevation on this occasion. Straight to the long on field. Is gathered really nice way. Just allowed a single travel on this occasion for the team. HN friends Hidayat Nega. Expecting a tighty encounter in this night. You are watching the day number 1 of Mega Cricket Carnival of Underarm Cricket MPL Season 10. Just pushing that one. How well the man directing. Just giving in the late moment and working it finely. Wonderful cricketing stroke. Always ready to open the face of the blade and grabbing some runs while the sharp blading is just opening. Consecutive singles after the first ball dot. Makes it beautifully by the batters. 11 runs നിൽക്കുകയാണ്. Trying for a lofted shot, not gets the right connection on this occasion, right from the middle of the bat. It gets a single only for that lofted shot. Going in a decent way, this over of Fayaz. Shot in the air. That is landed safely. Just allowed another single. What an outstanding 2 overs of spell by Fayaz Gori, the icon player completed. Only 9 runs conceded in 2 overs and he grabs 1 important wicket. End of 3, 13 for 2. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 13 റൺസ് മാത്രം അനുവദിക്കുന്നു. ഇനി 3 ഓവറുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. 26 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗറിന് BSC ബപ്പായ തൊട്ടിക്കെതിരെ. രണ്ടായിരം MPL Season 10 is progressing. 13 for the loss of 2. 26 required from 18 balls of cricket. Cricket at its level best here in Mannamkuzhi. വമ്പൻ സ്കോറുകൾ അവസാന പന്തിലേക്ക് നീളുന്ന ത്രില്ലറുകൾ. Low scoring game that going and giving the excitement of building. Wide ball to start the proceedings by the new bowler. Riaz, the experienced bowler from Kumbala. Was start and gives a wide. It was gone way outside from the gate line. Farviz always looking for a off.
But this time, he was tried to close the face of the bat, but not gets the connection over there. Just a single in form of leg by that given by the umpire. Steady way the innings is moving. But slowly the bowlers are tightening the screws and bolt and doors of the game. They were grabbing it slowly, working it wonderfully, keeping the game tightly in their hands. Absolute mind-blowing bowling display that showcasing by BSC Bapai Toti bowlers in the front line. But still, we have half a stage of cricket remaining in this innings. 24 required in 17. Pritham on strike. Nicely up on the face of the bat once again through the off-stump line. Oh, there will be a little bit confusion, and in the end, Devak looks close and safely completed a couple of runs. Yes, no was the call. Little bit confusion in the middle, but safely they were completed. An important 2 runs for the team. HN Friends Hidayat Nagar. Game is traveling, and that giving a goosebumps. Excitement is absolutely building here in Mannamkuzhi. Completely balancing a game that you are witnessing between BSC versus HN. To oldest club in the city, BSC Bapai Toti and HN Friends Hidayat Nagar. They were fighting in the match number 6 of MPL 10. Just watchfully left that one by Pritham. It's away from the leg stump. Gives another run in form of extra. Second wide of this over by Riaz Maria. 18 on card. Watchfully left by Pritham. Was just standing, and wides are coming from the hands of Riaz. Just some runs are leaking from the bowling side. We have seen 3 top-class bowling performance in the first 3 overs by BSC. After that, some runs are leaking from the bowler's hand. Batters looks to change the gears. 16 balls, 20. Trying that one into the straight region. Nicely taking the control by Pritham. Very well experienced 2 cricketers are in the middle for the team HN. We have seen all the first innings that makes a good score, and the second innings chase was not easy so far in this MPL 10, and this time 2 is a call. Comfortable double without any trouble for the batters of HN Friends Hidayat Nagar on this occasion. Very, very good understanding between the wicket by these 2 batters, making and building and scoring for the team HN Friends in this crucial time. Important knock by Farviz, runnable 9. On the other side, Pritham is playing a part with runnable 5. What an excellent cricketing stroke this is. Waiting for the slow delivery of Riaz Bari, and treated that one while up on the blade nicely. Excellent cricket, controlled cricket by Farviz. All singles, no boundaries, no sixes so far. You have seen 2 top-class wickets that down early. But these 2 are making the partnership. These 2 are building a strong unit for the team HN Friends. Another very good work from the batters to complete the action. Over number 4 comfortably completed by the batting side. 24 runs for the loss of 2. ഇനി 15 റൺസുകളുടെ ആവശ്യം മത്സര വിജയത്തിന്. 12 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുന്നു. 12 balls remaining. 15 required to win this match for the team HN Friends Hidayat Nagar in front of BSC Bapai Toti. Expecting a mercurial magic of over from BSC Bapai Toti to stop the encounter of momentum. On the other side, looking to keep the momentum with some singles by these 2 batters. How good innings that showcasing by Farviz the captain. Captain's knock. That giving lot of hopes and dreams for HN Friends. 2 overs of cricket remaining. 15 required. 5 മത്സരങ്ങൾ കണ്ട MPL സീസൺ 10.
രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമുകൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും സാധ്യതകൾ നൽകാത്ത ആദ്യ 5 മത്സരങ്ങൾ ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ വേണ്ടി HN ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പുലിക്കുട്ടികൾ ഇത്തവണ ഉറപ്പായും ചേസിംഗ് നടത്തുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഫർവേസിന്റെ ബാറ്റ് കൃത്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രീതം ഒരു യഥാർത്ഥ പാർട്ണറായി മൈതാന മധ്യത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് HNന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ വാനോളം ഉയർത്തുന്നു. 15 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് അവസാന 12 പന്തുകളിൽ. Mahroof Chowki is coming into the attack with an important penultimate of over. Pritham on strike. Both are from the same city of Chowki. Mahroof is make sure the right fielders are in the right position. And here is ready with over around the wicket by Mahroof Chowki. Lovely delivery right on the block. Oliver stride, and this time the bat is crossed between the wicket, leg by the signal that gives by the umpire on centre. Excellent start by Mahroof as a bowler. Beautiful piece of cricket that's showcasing here. 11 പന്തുകൾ 14 റൺസുകൾ. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം അവസാന ഓവർ വരെ ആവേശഭരിതമായി ഈ ഒരു മത്സരം ത്രില്ലടിപ്പിക്കുമെന്നൊരു സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് ബൗളേഴ്സും ബാറ്റേഴ്സും തമ്മിൽ അണുവിട വ്യത്യാസം അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആക്രമണോത്സുക ക്രിക്കറ്റിന്റെ മാന്ത്രിക ചെപ്പുകൾ തുറക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന BSC ബപ്പായി തൊട്ടി HN ടൈഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം. അതിനിടെ വീട്ടമ്മ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് ഫർവേസ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ട്രോക്ക് ഓവർ there. Lot of hard work. What a wonderful work in the deep by the fielder. You just done absolutely saving some runs for the team in an important time. My goodness, what an effort by the fielder. Have a look at that slide save. Oh, you better my dear cricket. Have a look at that one. Fires you beauty. Mangalore cricket in the standard fielding il endaanennu theliyicha Fayasinte oru quality kande കാണികളുടെ കിളി മാറുന്നു. Here comes the over. 10 balls. Down the leg stump. It will be tight or what? No. Escape the batter. Wide +1. It costly from Mahroof. On this occasion, runnable 10 is a target. 10 from 10. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിന് വേണ്ടി I request the captain of team RGB Bekur and HB Papila. Please report for toss. Trying for a safe shot. Need a miracle for the team. BSC Bapai 32 coming back. Just takes a single. Very well settled. രണ്ട് ബാറ്റേഴ്സും വളരെ നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അനായാസമായി സ്കോർ ബോർഡിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. തുടക്കത്തിൽ വീണ 2 വിക്കറ്റുകൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെയുള്ള controlled cricket by Farvis and Pritham Kasargod. They were showcasing an incredible fighting ability. Lovely shot by Farvis. What a beauty when this man playing some shot while up on the face of the bat. It looks gorgeous. He is playing a runnable 13. On the other side, runnable 8 by Pritham Kasargod. Runnable 8 is a target right now for the team. HN friends Hidayat Naga. Here comes Mahroof. Absolutely a classical piece of delivery and chance in the non-strikers end that escaped. Nobody to receive the ball on that non-strikers end. Pritham Kasargod is escaped over there. An important run between the wickets that added by the team HN friends Hidayat Naga. 7-7 ഒരൊറ്റ മാന്ത്രിക ഡോട്ട് ബോളിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന BSC മറുഭാഗത്ത് ഓരോ ഷോട്ടും പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത് നഗർ. ലോ സ്കോറിംഗ് ഗെയിം ഗിവിംഗ് എ ത്രില്ലർ ഹിയർ ഇൻ മണ്ണങ്കുഴി. സിക്സറുകളും ബൗണ്ടറികളും കണ്ട് കോരിത്തരിച്ചിരുന്ന കാണികൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു ലോ സ്കോറിംഗ് ഗെയിം ഒരു ത്രില്ലറിന് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കുകയാണ്.
Lovely placement. There is no protection over there. Plenty of time to cover the distance. And fielder coming to chase down. Oh, what a leg. Absolutely saving some important runs for the team in this important, crucial phase. That is the end of the over. There will be 3 runs between the wicket completed by the batters of HN Tigers. 35 on card after 5 overs. 4 runs required in the final over. 4 റൺസുകൾ മത്സര വിജയത്തിന് ആവശ്യം. അവസാന ഒരു ഓവർ മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോൾ കായിക കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റ് എന്ന ഖ്യാതിയോടുകൂടി വിശ്വവിഖ്യാതമായ MPL മണ്ണംകുഴി പ്രീമിയർ ലീഗ് സംഘാടകരുടെ സംഘാടകൻ എന്ന പേരെടുത്ത അനീഫ് ഉമ്മങ്ങയുടെ സംഘാടകത്തിന്റെ മികവിൽ മറ്റൊരു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് മേള കൂടി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മണ്ണംകുഴി മൈതാനത്ത് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റുകളുടെ കേളീരവം മുഴങ്ങുന്ന മൈതാനത്ത് ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആവേശവും ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും എല്ലാം സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു MPL 10. 4 required in the final 6 balls. Who will win the game? Samad coming into the attack. White ball to start. HN Francis close. They were very close. ആദ്യമായ ഒരു ടീം ചേസ് ചെയ്യുമോ എന്ന കാഴ്ചയോടുകൂടി അത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാണികൾ. Absolutely a control shot through the gap and through the onside region. There will be the batters coming back for 3 and it will be the victory for the team. Yes, it is. HN Hidayat Nagar. Chase and comfortable chase for the team HN France. What an incredible victory. MPL-ന്റെ 10ാം പതിപ്പിൽ ആദ്യമായ ഒരു ടീം ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നു. HN Hidayat Nagar. They were back in the contest. The match award അർഹനാവുകയാണ്.
target of 39. Important contribution of 19 from 19 balls. What a controlled cricket that showcase. And he receiving the player of the match in the prestigious stage of selected Mannamkuzhi. Congratulations, buddy. Keep rocks. That's it from the match. And moving to the next match, match number 7. Welcome back, the voice of Underarm Cricket, Abdurrahman Bekur. धन्यवाद डीजे ऑपरेटर अजीज बेकू। धन्यवाद देना चाहता हूं डार्विन माइकल और इसी तरह प्रीतम कुंबला। एमपीएल सीजन 10वीं आप देख रही हैं। तब जो आज तक ऐसे दर्शक को नहीं देखे हैं पहले दिन में कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट में। एमपीएल के 10वीं सीजन है और 9 सीजन एचपीएल हो चुके हैं। पीपीएल 3 सीजन इसी मैदान में हो चुके हैं, लेकिन इतने बड़े दर्शक के सामने पहली दिन कभी भी नहीं गुजरे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस मैच के लाइव टेलीकास्ट देख रही हैं दुबई में बैठकर हमारी साथी कमेंट्रेटर। पिछले साल में सभी जो सीजन में हमारे साथ मौजूद थे, नौशाद बुराक दुबई में बैठकर हमारी इस प्रतियोगिता को रंगीन बना रही है, आनंद उठा रही है। उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। एमपीएल सीजन पहले से मेरे ख्याल में सीजन 9 तक हमारे साथ मौजूद थे, एचपीएल में मौजूद थे, पीपीएल में मौजूद थे। नौशाद आज दुबई में बैठकर हमारी मैच को आनंद उठा रही है। वेलकम मिस्टर नौशाद बुराक। अब मैच में जाना ही होगा। 7वीं नंबर मैच पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार है और रक्षात्मक तरीके के साथ इस गेंद को खेला गया है, दखल दिया गया है। तब तक 1 रन के साथ खाता खोले। नवाज लेफ्टी और उन्नी कृष्णन कुंबला गेंदबाज भी तैयार हो चुके हैं।
मसूद मुजिंगाव गेंदबाजी की शुरुआत ही की है, तब पहली गेंद में नवाज लेफ्टी ने अपने खाता खोल चुके हैं, जो बिल्कुल गली इलाके पर दखल कर गेंद को उन्नीस कृष्णन को मौका दिए हैं। जो पावर प्ले जारी है, पहली और दूसरी 2 ओवर पावर प्ले के रूप में खेलने के लिए मौका मिलते हैं। सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 दायरे के बाहर रह जाती हैं। 2 खिलाड़ी को खड़े किए लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर उन्नीस कृष्णन के लिए खड़े किए। अब तो तैयार है, दूसरी गेंद लेकर तैयार। दूर वाली चोट से मशहूद की गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थे, ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क तो नहीं हुए, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। 2 गेंद तो फेंक चुके हैं मसूद मुजिंगाव। दूर वाली चोट से तीसरी बार यानी कि बायर कैकम बरोडन से गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने उन्नीस कृष्णन कुंबला, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं अंडर आर्म क्रिकेट के कासरगोड जिला के, और इस बार बहुत खूबसूरत गेंद ड्राइव किए हैं। कवर क्षेत्र पर फील्डर मौजूद थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, वापस दिए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 2 रन, 3 गेंदें संपन्न हो चुके हैं। 3 गेंद के सामना किए, 2 रन बनाए बिना किसी नुकसान के साथ। मसूद लेफ्टी नवाज के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं। शानदार ऑलराउंडर के रूप में जाना जाती है दक्षिण कन्नड़ा जिला के नवाज लेफ्टी। फिर एक बार दूर वाली चोट से मसूद तैयार है। चौथी गेंद अपने ओवर की, और इस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थे। इस गेंद को अतिरिक्त के इशारा किए हैं, वाइड के इशारा किए, और इस वाइड की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 3 गेंदों पर 3 रन। आरजीबी टीम आरजीबी बेकुर और सामना कर रही है एचबी पापीला की आरंभिक बल्लेबाज है, और इस गेंद को उठा करके ला है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच 24 में गेंद 3 बाउंस के बाद गेंद जा रही है टन चौका। देखिए कितनी शानदार कदमों के इस्तेमाल किए हैं, इस शॉट को खेलने के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं। बिल्कुल जो ऑफ स्टंप पर थी गेंद, इस गेंद के सामना किए, जो दाना पैर को पीछे की तरफ हटाए और जगह बनाए, बहुत खूबसूरत ड्राइव थे। फिर एक बार तैयार है दूर वाले चोट से मसूद टू आवाज सिप की है, गेंद तो जा रही है तेज रफ्तार से, फील्डर पीछे जरूर है, रोक दिया गया है जो बाउंड्री लाइन के करीब। तब तक 2 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 9 ऑन द बोर्ड। 9 रन पहली ओवर जा रही है। 5 गेंदें फेंक चुके हैं, एक महत्वपूर्ण एक बाउंड्री के सहारे के साथ 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर नवाज लेफ्टी। फिर एक बार मसूद दूर वाली चोट से लेकिन बायर कैकम बरोडन से गेंदबाजी कर रही है मसूद टीम आरजीबी बेकुर के लिए। ओवर द विकेट, और इस गेंद को उठा करके ला हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद की एक शानदार शॉट, 1 बाउंस 2 बाउंस, और कोई मौका तो नहीं है मेरे ख्याल में, सीधा गई है इस ओवर की दूसरी टन चौका। बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट, देखिए जमीन को खोदते हुए गेंद को उठाए, कितने शानदार बल्ला घुमाए। देखिए 2 बाउंस के बाद फील्डर को पहुंचने के लिए कोई मौका नहीं दिए। रनों की संख्या 13 रन बिना किसी नुकसान के साथ उन्नीस कृष्णन और नवाज मिलकर यहां पर साझेदारी जा रही है। 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर उन्नीस कृष्णन, 4 गेंदों पर 11 रन बनाकर नवाज लेफ्टी, और इस प्रतियोगिता की 7वीं मैच देख रही है। और इस मैच के बाद 2 मैच निश्चित रूप में बचे हैं आज के दिन के शेड्यूल के प्रकार। अब दूसरी ओवर फेंकने के लिए नए गेंदबाज भी तैयार हो चुके हैं। अज्जू मुगराल के आगमन हुए हैं। अंडर आर्म क्रिकेट के मैदानों पर बिजी खिलाड़ी जाना जाती है, इनको बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में जाना जाती है। कासरगोड जिला के साई नमना कासरगोड टीम के सदस्य भी हैं। बहुत खूबसूरत योगदान है अंडर आर्म क्रिकेट के लिए। 13 रन के प्रतिशत शुरुआत की है। अब दूसरी ओवर पावर प्ले के रूप में खेलने के लिए मौका दिए हिंदुस्तानी स्कूलन से गेंदबाज के रूप में अज्जू मुगराल। उनके सामने स्ट्राइक पर उन्नीस कृष्णन मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टीम में खेलने वाले खिलाड़ी हैं जो अज्जू मुगराल और उन्नीस कृष्णन। साई नमना कासरगोड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं ओपन क्रिकेट टूर्नामेंटों में। ओवर द विकेट, और इस गेंद को बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन मेरे ख्याल में फील्डर ने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। अगर स्ट्राइक एंड नॉट स्ट्राइक एंड दिया होते तब निश्चित रूप में यहाँ पर उन्नीस कृष्णन को पहुंचने में कुछ दिक्कत हो जाती थी। देखिए यहाँ पर यंगेस्ट खिलाड़ी नवाज लेफ्टी ने तेजी के साथ अपने कदमों को चलाए,
नो स्ट्राइक एंड पर पहुंच चुके हैं। बहुत खूबसूरत रनों की संख्या बढ़ते हुए 14 रन, 3 गेंदे सामना किए, 2 रन बनाकर उन्नीकृष्णन अब तो तैयार है। नवाज के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं अज्जू मुगराल। दूरवाली चोट सेना के हिंदुस्तानी स्कूलन से गेंदबाजी करते हुए तैयार है। नवाज लेफ्टी दक्षिण कन्नड़ा जिला की प्रमुख खिलाड़ियों से एक है, बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं। उनके सामने फिर एक बार अज्जू मुगराल अराउंड द विकेट दूरवाली चोट से, और इस गेंद को ड्राइव की है, कोई मौका नहीं फील्डर को, कोई मौका नहीं, आंख खुलने तक मौका नहीं दिए, टन टना टन चौका। तीसरी चौका इस इनिंग्स के, देखिए शानदार, ओहो बिल्कुल मिडिल स्टंप पर थी गेंद। गेंद को कितनी शानदार के साथ जगह बना रही है नवाज लेफ्टी ने, शानदार प्रहार। तीसरी चौका इस इनिंग्स के। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 18 ऑन द बोर्ड, 18 रन। फिर एक बार अज्जू मुगराल नवाज लेफ्टी के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं। अपने ओवर के 2 गेंदे फेंक चुके हैं अज्जू मुगराल। फिर एक बार तैयारी है, देना हाथ में गेंद, अराउंड द विकेट। ओ अच्छी गेंद, फिर एक बार टन टना टन चौका। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ जगह बना रही है। 3 खिलाड़ियों को ऑफसाइड में पहलाए थे, फिर भी उस 3 खिलाड़ी के बीचों बीच में गेंद को जमीन को चुम्मा देते हुए गेंद जा रही है सीमा रेखे के बाहर। चौके के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 22 ऑन द बोर्ड। नवाज लेफ्टी, वाह भाई वाह, व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस हिम। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही हैं नवाज लेफ्टी ने। फिर एक बार दूर वाली चौसर ऑन द विकेट, और इस गेंद को घुमाए, झाड़ू बनाए अपनी बल्ले को, कुछ क्षण के लिए झाड़ू बनाए, शॉट तो नहीं के लिए स्वीप की है, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 23 ऑन द बोर्ड। दूसरी ओवर को सामना कर रही है। 4 गेंदे फेंक चुके हैं, 5वीं गेंद लेकर तैयार है अज्जू मुगराल। महंगी साबित होते हुए इस ओवर भी 23, अभी भी 2 गेंदे बचे हैं। 10 गेंदों में 23 रन बनाए। अब अगली गेंद, और इस गेंद को खेलना चाहा, चकमा का यहां पर रनआउट के लिए खतरा, और इसी के साथ नवाज लेफ्टी नो स्ट्राइक एंड पर दौड़ रही थी, लेकिन स्ट्राइक एंड पर थ्रो किए, तब तक कोई खतरा नहीं। 24 रन, 1 रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किए। 24 अब तक कंप्लीशन ऑफ 1.5 ओवर, दूसरी ओवर की चालती पर है। अब अगली गेंद दूर वाली चौक से अराउंड द विकेट अंपायर को कोच करते हुए हिंदुस्तानी स्कूल से गेंद लेकर तैयार है नवाज लेफ्टी के लिए। नवाज, हो बढ़िया गेंद, व्हाट ए डिलीवरी। आखिरी गेंद तो बहुत अच्छी तरह इन्होंने आखिरी गेंद फेंकी है, तब तक कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर 24 बिना किसी नुकसान के साथ, 24 विदाउट लॉस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर 12 की प्रतिशत यहाँ पर रन बनाए। पहली ओवर समाप्त हुए थे, 13 रन थी। इस ओवर में 11 रन के बड़े ओवर भी मिले हैं। टीम आरजीबी के सामना करते हुए एचबी पापीला। पहली ओवर में 13, दूसरी ओवर में 11 रन। पावर प्ले हटा दिया गया है। अब गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज के आगमन दिख रही है। न्यूमैन पुनीत के आगमन दिख रही है। पुनीत पीरियड का पुनीत राजकुमार, ही इज अ सेलिब्रिटी, फिल्म एक्टर। अब देखिए उन्नीकृष्णन अपने बल्ला बदलते हुए वापस आए हैं, नवाज लेफ्टी के साथ मिल गई है। 24 लाजवाब शुरुआत है, ब्रेक थ्रू की इंतजार कर रही है। पुनीत को लाया गया। अब देखना होगा कि पुनीत अपनी टीम के लिए, अपनी टीम के कप्तान के मालिक के विश्वास के ऊपर खड़े होकर गेंदबाजी करेंगे, ये तो वक्त ही बता सकते हैं। टीम आरजीबी के लिए तीसरी ओवर के रूप में गेंदबाजी के लिए तैयारी होते हुए उन्नीकृष्णन स्ट्राइक पर मौजूद है। नो स्ट्राइक पर नवाज, लाजवाब पारी है नवाज की, दूर वाली 400 विकेट।
और इस गेंद को खेला गया है, ड्राइव की है, फील्डर मौजूद है, लेकिन गेंद तो सीधा गए, बाउंड्री लाइन को चुम्मा दिए, बहुत बड़े बाउंड्री, टनाटन चौका, शानदार चौका है। देखिए इस खत्मों के इस्तेमाल देखिए, एज सिर्फ नंबर है, क्योंकि अबो 40 में पिछले 1 साल से खेलने वाले खिलाड़ी उन्नीस कृष्णन, अभी भी स्टैमिना देखिए, जो खेलने की शैली देखिए, बहुत खूबसूरत ड्राइव किए हैं। अब अगली गेंद दूर वाले चोर से ओवर द विकेट पुनीत, उन्नीस कृष्णन उल्टा बल्ले घुमाए, यहां पर 1 रन निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किए, नवाज को वापस लाया गया स्ट्राइक पर। नवाज के इस इनिंग्स में खेल देखकर ऐसे समझ रही कि एक जमाने थे भारत टीम के सौरव गांगुली, यानी कि द ऑफ इंडियन टीम, जो उनके याद आ रही, ज्यादा से ज्यादा चौका लगाते थे सौरव गांगुली। यहां पर बहुत खूबसूरत चौके लगाए, 3 चौके लगाए नवाज ने, बिल्कुल अच्छी साझेदारी भी है इन दोनों खिलाड़ियों के बीचों बीच में। फिर एक बार ओवर द विकेट नंबर को क्रॉस करते हुए पुनीत टू नवाज, हवा पर गेंद और इसी के साथ विकेट नंबर 1 डिपार्ट्स, नवाज बैक टू द पवेलियन। वासिम बाकर बैल ने कोई गलती नहीं की है, गेंद के पास गए हैं और गेंद के नीचे सही सलामत आए, और इसी के साथ विकेट नंबर 1 डिपार्ट, नवाज आउट। इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए पुनीत को लाए गए थे, ब्रेक थ्रू की बिल्कुल आवश्यक थे, जरूरी थे, अपनी योगदान तो निभाए, अपनी फर्ज निभाए पुनीत ने। 29 लॉस ऑफ 1 विकेट। नए बल्लेबाज की आगमन हुए हैं किरण, युवा खिलाड़ी है किरण बहुत कम लोग होते हैं अंडरआर्म क्रिकेट में, किरण और मुसोडी, एक किरण है ऑलरेडी और एक किरण अबो 40 में है, अब तो तीसरी किरण दिख रही है जो नौजवान खिलाड़ी है, जो भी हो। ओवर द विकेट पुनीत अपनी योगदान, और इस गेंद को खेलना चाहा, लेग स्टंप पर बीट हुई, तब अंपायर ने कहा कि गलत लाइन है भैया, वाइड के खरा दिए, और इस वाइड की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 30 रन पर पहुंच चुके हैं, 30 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। पुनीत 3 गेंदें फेंक चुके हैं, 6 रन कर चुके हैं, 1 विकेट, और इस गेंद को सिप किए हैं, बहुत आसानी के साथ सिप करना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में उछाल के साथ बल्ले की जो अंतरोनी किनारा लगकर जो वाइड मिड विकेट पर गए, वासिम बाकर बैल ने गेंद को वापस दिया, तब तक 1 रन और उन्नीस कृष्णन को मौका दिया, एक बाउंड्री के सहारे के साथ खेल रही है उन्नीस कृष्णन, 7 रन बनाकर 6 गेंदे सामना किए। फिर एक बार पुनीत अपने ओवर के 5वें बार, यानी कि 5th टाइम इन दिस ओवर, 5वें बार गेंद लेकर तैयार है पुनीत टू उन्नीस कृष्णन, दूर वाली चौक से ओवर द विकेट, और इस गेंद उल्टा बल्ले में खेला गया है, गली इलाके पर गेंद जा रही है, तब तक फील्डर मौजूद है, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 32 लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंदे बचे हैं, देखिए पहली ओवर में महंगी साबित हुए थे 13, दूसरी ओवर में 11, और इस ओवर में मेरे ख्याल में अच्छी कंजूसी गेंदबाजी करते हुए पुनीत, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, बहुत खूबसूरती के साथ खेले हैं, तब तक एकमात्र रन, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं, और इसी के साथ ओवर कंप्लीटेड। 33, यानी कि 7 रन के इस ओवर, क्षमा कीजिए 9 रन के इस ओवर, 9 रन के इस ओवर तो बहुत अच्छी योगदान है पुनीत। पहली ओवर में 13 थे, दूसरी ओवर में 11 थे, और इस ओवर में 9 रन के ओवर मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी ओवर है, एक ओवर कोई मैटर नहीं, और 9 रन 1 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट इन्होंने हासिल किए। वासिम ने कैच पकड़े थे, तब नवाज लेफ्टी को नुकसान हुए टीम को, अब तैयार है, और इस प्रतियोगिता को बेंगलुरु में बैठकर पूरी तरह शुभकामना दे रही है मक्कू एचन। हर प्रीमियर लीग में हमारे साथ मौजूद होते हैं, कोई भी प्रीमियर लीग हो, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ रह जाती है मक्कू एचन, उन्होंने बेंगलुरु में बैठकर इस मैच को देख रही है, धन्यवाद देना चाहता हूं।
वेलकम मक्कू एचन, मशहूर नाम के एचन मक्कू एचन बेंगलुरु में बैठकर हमारी साथ जो आनंद उठा रही है, धन्यवाद देना चाहता हूं। अब नए गेंदबाज साजिद आइकॉन खिलाड़ी हैं, उनको योगदान मिले हैं गेंदबाजी के लिए। उन्नीस कृष्णन मौजूद है स्ट्राइक पर। 34 लॉस ऑफ 1 विकेट। साजिद तैयार है दूसरी गेंद लेकर अपनी ओवर की ओवर द विकेट, और इस गेंद को उठाकर खेला है। गेंद तो जा रही है फील्डर की तरफ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच में खेलकर 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 35 लॉस ऑफ 1 विकेट। एकमात्र विकेट गवा दिए हैं। नवाज लेफ्टी की विकेट यहां पर पतन हुए थे। ब्रेक थ्रू तो पुनीत के ओवर में शानदार गेंदबाजी किए थे, पुनीत भी 9 रन खर्च किए थे। एक विकेट तो बहुत बड़े मछली अपनी झाल में फंसा दिया गए थे। फिर एक बार ओवर द विकेट साजिद, बढ़िया गेंद, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी। यहां पर बिल्कुल चकमा खाए बल्लेबाज ने, और सेलिब्रेशन देखते ही ऐसी लग रही कि, और अंपायर के इशारा आउट। बल्लेबाज को समझ में ही नहीं पाए, मालूम ही नहीं हुए थे कैसे आउट हुए हैं। यहां पर वापस जरूर आना ही होगा। किरण की ऑप्सी दिख रही है, किरण बैक टू द पवेलियन। बाउल्ड आउट हुए थे। बाउल्ड आउट हुए हैं, उनके जगह पर नए बल्लेबाज के आगमन दिख रहे हैं। न्यूमैन, सल मुसोडी, और एक नौजवान खिलाड़ी को मौका देते हुए। उन्नीस कृष्णन के टीम में हमेशा मैंने कहीं साल से देख रहा हूं, उन्नीस कृष्णन और गिरी कुंबला के साथ में हमेशा नौजवान खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका देते हैं। देखिए सबसे सीनियर खिलाड़ी उन्नीस कृष्णन, हर नौजवान खिलाड़ी के कंधे मिलाकर खेलते हैं। इन्होंने खुद अच्छे खेलते भी हैं। उन्नीस कृष्णन बहुत खूबसूरत खिलाड़ी, खूबसूरत योगदान है त्रिशूल कुंबला से के योगदान है अंडरआर्म क्रिकेट के लिए। कहीं साल हुए हैं गोरी यंग बॉयज पांडेश्वर में खेलने वाली खिलाड़ी भी है। केरला में ज्यादा से ज्यादा गुड लक पसोड के लिए खेलते हैं ओपन में, और ज्यादा से ज्यादा साई नमना कासरगोड के लिए खेलते हैं। और इस गेंद को खेला गया है, लॉन्ग ऑन की तरफ वो मोड़ लिया है। तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 36 लॉस ऑफ 2 विकेट। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। साजिद अपनी योगदान देखिए कितनी शानदार निभाते हुए, 4 गेंद में सिर्फ 3 रन 1 विकेट। साजिद तैयार है, सबसे कंजूसी गेंदबाज निकले हैं, और इस गेंद को उल्टा बल्ले पकड़े हैं, लेकिन नहीं। बड़े शॉट के लिए कोशिश जरूर की है, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क तो नहीं हुए हैं। साजिद वाटे बॉलिंग, देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी कर रही है साजिद ने। आइकॉन खिलाड़ी अपने ऊपर रखे हुए विश्वास, उस विश्वास के ऊपर खड़े होकर इन्होंने खेल रही है। बल्लेबाजी में शानदार शुरुआत किए थे पिछले मैच में। गिरी कप्तान ने आकर कुछ निर्देश दिए इनको, वापस अपनी अपनी जगह पर जा रही हैं। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। कवर क्षेत्र पर एक खिलाड़ी को लाए गए हैं लॉन्ग ऑफ से, और लॉन्ग ऑफ में और एक खिलाड़ी भी है उन्नीस कृष्णन। विकेट पतन हुए हैं। साजिद टेक द विकेट, उन्नीस कृष्णन बैक टू द पवेलियन। साजिद 1 ओवर, नो मेडन, 3 रन 2 विकेट। देखिए बस 1 ओवर दुनिया बदल सकते हैं, एक तो क्रिकेट के कहावत है। देखिए 3 ओवर में 33 रन 11 की प्रतिशत, आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन 2 विकेट। वाह भाई वाह, व्हाट ए बॉलिंग परफॉर्मेंस। साजिद आइकॉन खिलाड़ी, उनको जानते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रखे हैं आरजीबी, उस विश्वास के ऊपर खड़े होकर इन्होंने खेल रही है। बहुत बड़े योगदान दिए इन्होंने। अब नए खिलाड़ी की योगदान दिख रही है। न्यूमैन स्लोली वॉकिंग टू द क्रीज। किरण सीनियर, किरण कुंबले, यानी कि पहले आए थे किरण जूनियर, नौजवान थे, बिल्कुल छोटे थे। अब तो कुछ सीनियर दिख रही है इनको।
इसलिए किरण सीनियर का नहीं होगा, क्योंकि दो किरण है एक ही टीम में। अब पता चल गया कि किरण बहुत है, छुप छुप के खड़े थे। किरण मुसोड़ी, किरण अबो 40, किरण जूनियर, किरण सीनियर, 4 किरण निकले हैं अब तक 3 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज है मशहूद, अच्छी गेंद थी। अपने बल्ले को कुछ क्षण झाड़ू बनाए और स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे, और अंपायर के इशारा, नो बॉल भैया। देखिए साजिद ने पिछले ओवर में कमाल की गेंदबाजी किए थे। इस ओवर के शुरुआत में फ्री में 2 रन दिए, फ्री में 2 रन दिए हैं। मशहूद गेंदबाजी कर रही थी तब नो बॉल के इशारा तो जरूर किए हैं। फ्री हिट को सामना करने के लिए यहां पर किरण को मौका मिले हैं। किरण श्रीनिवासन, किरण पोलार्ड जी नहीं, ये तो किरण श्रीनिवासन है, सीनियर है। पहली गेंद, अच्छी गेंद थे यहां पर। पहली गेंद तो नो बॉल +1। अब तो 1 रन तो फ्री हिट में, एक गेंद में 3 रन तो मिल गई है। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 39 ऑन द बोर्ड। पिछले ओवर कितने भी तारीफ करूं उतना कम होगा। साजिद 1 ओवर 9 मेडन 3 रन 2 विकेट, व्हाट एन ओवर। अब मशहूद अपनी खोटे के दूसरे ओवर फेंकने के लिए तैयार है। दूर वाली चोट से ज्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करते बायर के कंबर रोडेंस, इन्होंने देखिए 2-3 कदमों के साथ। और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है। फील्डर मौजूद है, गली पर गेंद गए तब तक 1 रन। दूसरे रन के लिए यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन यहां पर निशाने पर नहीं लगे, निशाने पर नहीं लगे। इस वजह से 3 रन मिले हैं। 2 गेंदों में 6 रन भी मिल गई है। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 42 लॉस ऑफ 3 विकेट, 42 लॉस ऑफ 3 विकेट। देखिए 3 ओवर की समाप्ति पर 33 थी। चौथी ओवर साजिद ने कमाल की गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन, 37। अब देखिए 36 थे, क्षमा कीजिए 33 थे और 36 थे। अब तो 2 गेंदों में 6 रन कर चुके हैं। अब अगली गेंद मशहूद दूर वाली चोट से स्ट्राइक पर मौजूद है, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेलना चाहते थे, लेकिन कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं। खड़े हुए जगह से उल्टा बल्ले पकड़े हैं। अपने बल्ले को कुछ क्षण तक झाड़ू बनाना चाहते थे, झाड़ू बनाए थे, लेकिन बल्ले पर गेंद नहीं आए, अपनी झाड़ू पर नहीं आए। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। अब अगली गेंद मशहूद बहुत अच्छे कमबैक किए। चौथी गेंद लेकर तैयार है दूर वाली चोट से, और इस गेंद को उठाकर खेला है स्ट्राइट शॉट, यानी कि लॉन्ग ऑन पर गेंद गई तब तक 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 43। 4 गेंदे फेंक चुके हैं। इनिंग्स में 8 गेंदे बचे हैं। अब अगली गेंद लेकर तैयार है सल के लिए। सल इस गेंद को खेला गया है, लॉन्ग ऑन पर गेंद गई फिर एक बार। फील्डर मौजूद, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया तब तक 1 रन। राजेश थे वहां पर, 1 ही रन के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 44। क्षमा कीजिए, अज्जू गेंदबाजी कर रही है। अज्जू तो अपनी खोटे की दूसरी ओवर, फिर एक बार दूर वाली चोट से ओवर द विकेट। उनकी पहली ओवर तो महंगी साबित हुए थे, इस ओवर तो देखना होगा कि अच्छी तरह गेंदबाजी जा रही है। पहली गेंद में यहां पर वाइड, नो बॉल +1 थे, यहां पर रन आउट के लिए वाइड के लिए वाइड चेक करना चाहते हैं फील्ड अंपायर। तीसरी अंपायर की मदद मांगे हैं। सैफुद्दीन हमारे साथ तीसरी अंपायर के रूप में मौजूद है। अब तैयार सारे खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच में भरे हुए हैं, बातचीत जारी है, क्योंकि 45 लॉस ऑफ 3 विकेट फैसला आना बाकी है।
से वाइड। आखिरी गेंद फेंकना चाहते थे, फिर एक बार वाइड के रूप में निकले हैं। तब तक रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 46 लॉस ऑफ 3 विकेट। अब तैयार हैं आखिरी गेंद फिर एक बार फेंकने के लिए अजू ओवर द विकेट, और इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ रिसीव किए। देखिए शॉर्ट फाइन लेग में गेंद जाते हुए फील्डर सेजी के साथ पहुंचे हैं। तब तक के 2 रन के साथ इस ओवर पूरे हुए हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए 48 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 10 रन के बड़े ओवर, खोटे में इनके दूसरी ओवर थे। पहली ओवर में इन्होंने 11 रन खर्च किए थे। 2 ओवर में इनके ओवर की विशेषता है कि 2 ओवर 21 रन, 2 ओवर में 21 रन यहां पर खर्च किए अज्जू मुगराल ने। कोई विकेट हासिल नहीं किए, लेकिन उनके खाते पर 19 रन दिखा रही है, क्योंकि 2 रन तो बाई में ना लेग बाई में मिले होंगे। आखिरी ओवर फेंकना बाकी, यानी कि डेथ ओवर अब आना बाकी है। गेंदबाजी में नए गेंदबाज, नए चेहरा है, नौजवान खिलाड़ी उनको लाया गया है। विनीश कुंबला उनको लाया गया है, केएफसी कुंबला के सदस्य हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार है। स्ट्राइक पर किरण श्रीनिवास। അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് പുസ്തകം ഇതാ തുറന്നു വെക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. എല്ലാവരും വന്ന് സൈനപ്പിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മത്സരം ക്രമ നമ്പർ 8, ബിച്ചു ബോയ്സ് എച്ച്എൻ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ബിച്ചു ബോയ്സ് അതേപോലെ एचएन फ्रेंड्स 2 टीमों सैनअप ചെയ്യണമെന്ന് अभ्यर्थिക്കുന്നു. अगली गेंद लेकर तैयार है। इस गेंद को खेलना चाहा, लेग स्टंप पर बीट हुई, लेकिन कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। अच्छी गेंदबाजी की मजारा। विनीश कुंबला 2 गेंदे फेंक चुके हैं, सिर्फ एकमात्र रन कर चुके हैं। 1 शॉट 50 खाते पर। अब अगली गेंद दूर वाली छो से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है विनीश ने, और इस गेंद को बहुत खूबसूरत शॉट। देखिए शॉट फाइनल पर गेंद इतनी तेज नहीं थी शॉट पर। 1 रन तो निश्चित, 2 रन निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किए। 2 रन के सहारे के साथ 51 रन, 50 रन पूरा हुए हैं। टाइम आउट मतलब एक खिलाड़ी 30 दायरे के बाहर से अंदर की तरफ जाना ही होगा। 6 की जगह 7 बन गई है 30 दायरे के अंदर। सिर्फ 4 खिलाड़ी 30 दायरे के बाहर है। 3 गेंदे फेंक चुके हैं, 3 गेंद अभी भी बचे हैं। विनीश कुंबला जमीन पर टपकाने के बाद हल्के हल्के ओवर द विकेट, और इस गेंद को ड्राइव की है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद जा रही है। तब तक फील्डर तेजी के साथ आए, दूसरी रन के लिए दौड़ा जा रही है। 2 रन भी सही सलामत पूरा कर चुके हैं। 53 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट। 2 मोर बॉल लेफ्ट, कि 2 गेंदे अभी भी बचे हैं। 2 गेंद निश्चित रूप में बचे हैं। अब देखना होगा कि 2 गेंद में कितना रन बटोर सकते हैं। 53 मेरे ख्याल में इस आखिरी सेशन में बहुत बड़े स्कोर हैं। अब अगली गेंद लेकर तैयार है, दूर वाली 600 ओवर द विकेट, और इस गेंद को ड्राइव की है। फील्डर मौजूद हो, बहुत खूबसूरत कैच, जबरदस्त कैच, और इसी के साथ विकेट नंबर 4 डिपार्ट। देखिए कितनी शानदार कैच है। अज्जू मुगराल अपने जगह से जरा भी नहीं हिले हैं, बिल्कुल अच्छी कैच थी। देखिए कितनी शानदार नजारा है, झुके और वहीं बैठ गई और कैच हासिल किए। देखिए कितनी शानदार शैली है। ओहो, बहुत खूबसूरत कैच। अब सिर्फ ये गेंदे बचे हैं। सलाम पाउर की आगमन दिख रही है। सलाम पाउर सही सलामी बल्लेबाज है। स्टारगेज पाउर के योगदान है अंडरआर्म क्रिकेट के लिए। हर बड़े बड़े प्रतियोगिता में अपनी नाम दर्जा करते हैं इस खिलाड़ी। ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए विनीत अपनी योगदान आखिरी गेंद के लिए
लेकर गई हैं ओवर द विकेट। और उल्टा बल्ले में खेलने के लिए प्रयास किए हैं, अपील की है, लेकिन एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा भी किए और इसी के साथ इनिंग संपन्न हो चुके हैं। 55 विक्ट्री टारगेट। डिजिटल नंबर देखिए, शानदार। അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് പുസ്തകം ഇതാ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. മത്സരം ക്രമ നമ്പർ 8 HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ ബിച്ചു ബോയ്സ് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. രണ്ട് ടീമിന്റെയും മത്സരാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ 55 റൺസാണ് വിജയലക്ഷ്യം. ടീം RGBക്ക് നേടേണ്ടത് 55 റൺസാണ്. ഈ 55 റൺസ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും നേരിടുക എന്ന് ഇരു ടീമുകളും ഒക്കെ അക്കമിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു പ്രീതം കുമ്പള. Yes, thank you, Mr. Abdul Rahman Jibikar. We have enjoyed a lot by hearing your voice, the detailed analyzing of particular innings. Number 1 we have completed here. 55 is a victory target for team like team RGB Bekura. Yes, we have very good players in the both team that is RGB Beku versus HP Popular here. They have completed our first innings and we are moving towards the second innings of this particular match between those teams here. The match number 7 is on progress. We are watching MPL season 10 2026. A very good crowd at this particular moment of this match. The time is already heading towards 12 o'clock. Still, the crowd is eagerly watching this prestigious tournament of 2026, that is MPL season 10. Very beautiful, very nice to see all of you gather here to watch, to witness this beautiful tournament of this event which is organized by selected Mannamkuzhi Arts and Sports Club with the leadership of Mr. Anif Umanga, as well as the supporters, the sponsors, that is the name itself comes that Shamim Zaman Kalpar, one of the backbone of this MPL season 10 we hear. Yes, openers from the side of the team RGB Beko, that is Captain Giri Kumbale, as well as Sajid, the icon player from the side of team RGB Bekura. And the bowling mark we have Sandeep, the new bowler from the side of HP here. Very good delivery, nicely driven towards the mid-wicket region and taken comfortable single here upon their account with that single on this first delivery. Sudeep with the bowling mark taking the guard of right and over the wicket for Giri Kumbale. This time we are in the first over. First over is in progress. 55 runs is the victory target for team like team RGB Bekura. Giri, the running machine known as running machine, is on crease right now. Yes, very good delivery, slightly driven toward the final leg region and taken comfortable single here. Yes, just rotating the strike themselves in the initial first over of Sudeep from the side of HP Papila. They have collected 55 runs of good total for team
RGB Bekora. It is not easiest thing to take in within 6 overs in such condition of dark light over here. It is quite difficult to target 55 runs. Once again, very good delivery directed into the hands of wicket keeper. Only Kristen doesn't miss any chance over there, and a perfect caught it was. Meanwhile, dotted one first dot delivery in this first over from the side of Sudeep here. Very good start from the hands of Sudeep. We can see in this first over here. Once again, taking the guard of right and over the wicket for the icon man Sajid from the side of RJB here. We have seen Sajid bowling performance very beautifully bowled and taken 2 valuable wickets for the side of HB Papila, and he came with the batting mark here as an opener. Leading with Giri Kumla here. Nicely driven towards the covers region. Have a look at the delivery. Have a look at the placement of the bat was perfectly placed, and meanwhile very good running fielding from Nawaz lefty over there. Meanwhile completed couple of runs here. 2 more addition to the scorecard. Everything is just perfectly working over here in this particular match between those teams. Nice delivery, nice flicks towards the deep cover region, and nice collection from the fielder and direct towards the wicket keeper. Meanwhile taking couple of runs, adding to the scorecard. That is what a very good genius cricket we can see in this particular match between those teams. Once again for Sajid here from Sudeep. This time looking for the big shot, but there is no connection at all. Meanwhile ball moves to backside of the keepers and taken comfortable single here. 1 more addition. The scorecard is 5 on the board after completion of 5 deliveries. Last 1 more delivery left in this particular over number 1. Sudeep started very perfectly in the bowling mark for the team HB Papila has a last delivery for Giri Kumbala here. Yes, this time going for the sweep shot, but this time there is no perfection with bat. Meanwhile directly hitting the ball towards the pad and taking single. 1 more addition to the scorecard after completion of over number 4. The scorecard is 6 on the board. There is no loss of wickets here. Very good start so far. So they did a perfect job in the bowling mark here. Just left 6 runs and batsmen have been quite struggling in the middle in the first initial over from the hands of Sudeep because of 55 runs as a victory target for a team RGB Bekor. Still 49 more runs required to get the victory target over here. Yes, some extraordinary shots have been blazed by the batter, have been lofted over the fence from the batting side. Giri as well as Sajid having that capacity, having that caliber, having that experience in the under-arm cricket. Definitely we have just passed a single over and 5 more overs to come to finish 49 runs in the 5 overs to get their victory target of 55 runs. Once again the new bowler comes to an attack, Shaijesh Kumbala. Very good delivery, slightly away from the off-stump region. First delivery itself extra have been placed by the Shaijesh over here in this beginning of the second over. Saij is the young man, young talent who is playing the first time in the MPL season 10 for the first time. And this time reverse sweep, nicely flick towards the deep region and rushing towards the ball. Meanwhile, there is a good fielding by the deep region fielder and collected 3 runs here. What a good running between the wicket. Yes, going for the 4 runs. What a running between the wicket. That's what Abdul Rahman Ji mentioned, that Giri Kumbala is a running machine in under-arm cricket. That what he have shown in this particular delivery. Lofted nicely, swept nicely towards the deep region and collected 4 runs. What a good running between the wicket we can see from the batter. Beautiful understanding between each other. That is what Sajid and Giri is doing. Perfect job in this batting mark over there for the team RGB Beku here in this second over. That is a very good running between the wicket so far in this particular tournament, and we are witnessing beautiful match between those teams here. Once again charges to Giri Kumbala, looking for the big shot. Nicely driven. This time there is no fielder. Meanwhile ball rushing towards the boundary line. One more boundary here. The first welcome boundary from the side of Giri Kumbala. Have a look at that shot.
4 runs they have been collected by running between the wickets, and soon after that lofted nicely towards the deep final region and taken comfortable boundary over there. 8 runs jumping the scorecard towards the 15 on the board. Second over is in progress right now. This might be a expensive over from the side of Sajesh Kambale. Yes, once again Giri looking for the big shot here, slightly away from the off stump region. Yes, one more extra in the form of wide here. That is what the young man, a bit nervousness we can see from his face, because another end we have Giri Kumble, the trump card, the captain of RGB Beku here is on fire, looking for the big shot. Nicely won towards the deep onside reach, and this time 1, 2, 3 bounce boundary over there. One more boundary from the hands of Giri Kumbale here. What a terrifying start from the hands of captain of RGB Beku. This is a magnificent stroke from the hands of Giri Kumbale. What a jump of runs over there. 20 on the board after completion of 3 deliveries. Second over is in progress. We have seen 2 boundaries as well as 4 runs they have run between the wicket. Have a tremendous game. What a play, man. Giri, you beauty, naughty boy. What in a game we are witnessing. We are watching this particular match between those teams. Sajesh is in trouble right now because Giri is on fire in this second over. Once again, Rivasip nicely placed towards the deep square region. Meanwhile, fielders rushing and batters are rushing towards runs here. Completed 3 runs. What a good running between the wicket. We can see in this particular batsman. That is what understanding each other. That is what the concentration on ball and keeping the ball, concentrating the ball and taking the run between the wickets here. 3 more runs have been collected. 23 on the board. What in a batting you're performing over here in the second over of Sajesh here. Definitely it is going to be a expensive over number 2 here. Nicely flicked towards the deep long off reach, and a fielder rushing towards the ball. Meanwhile, crossing couple of runs. Have a look at the running between the wickets. Flicking the delivery is taking couple of runs. There is no chance for the batter to go for single runs. Only they have set on mind that is to take a couple of runs and to adding the scorecard here, gently pushing towards 25 on the board. 55 is a victory target. One more dotted delivery here. Very good end of this second over. Over number 2 completed. 25 on the board, and there is no damage at all from the side of team RGB Bekur. Yes, phenomenal start from the side of RGB Bekur. The captain as well as icon players are doing perfect job. And 55 is a victory, 55 is a victory target after completion of 2 over 25. Already they have been collected. There is no damage at all, and definitely very good start from the side of team RGB Beku here. And 30 more runs required in 4 overs of 30 more run required in 4 overs in front of Sajid as well as Giri Kumbale. Definitely breakthrough is required for a team like team HB Papila to break shackle between those players, that is Sajid as well as Giri Kumbale. They are very good settled in the middle right now. How to break their partnership to lead their team. Like HB Papila here, Unnikrishnan Kumbale, the captain itself, taken initiative to bowl over number 3 because already 25 on the board. 30 more runs are required to get the victory target of 55 over here. Unnikrishnan taking the guard of right and over the stumps to Giri Kumbale. Yes, Kumbale to Kumbale. Captain to Kumbale. Captain, first delivery. Nicely driven toward the mid-wicket region and taken comfortable single here. Yes, Unnikrishnan, have a look at that. Unnikrishnan, size of Unnikrishnan running towards the ball, collecting the ball, not giving the batsman to go for a couple of runs. Just tackling them in taking a single run and adding the scorecard as a 26 here. Second delivery for Sajid Dihari. A very intelligent game by Sajid. There is a chance of couple of runs. Yes, they have collected
That was an unnecessary throw from the fielder who is fixed in the short cover point region. It was not at all required in this moment because he knows that the batters are well settled down in the middle and they have collected lot of couple of runs in this particular situation of over number 3. Yes, nicely driven towards the deep onside region and going for a couple of runs. Call for a couple of runs reached. Yes, Giri reached very quickly. That is what it is quite difficult for the player running between the Giri, as Giri is known as running machine. Giri is known as cheetah. Yes, he is the deer of Antaram cricket in running between the wickets. That's what here he is doing in this particular match between those teams. Have a look at the cover drive. Have a look at the cover drive from the hands of Sajid. Nicely placed towards the covers region and taken comfortable couple of runs. Yes, as I mentioned, there is not at all single runs we have seen in this particular innings number 2. Giri Kumble as well as Sajid is doing tremendous work in the running between the wickets here. Very good leg, very good footwork from the both the batsmen. Yes, very good collection. That was a bit bomber and this is answer front of that. This time misunderstanding between the batsmen here. The ball which is caught by the point region fielder, mid-wicket region fielder, and given right throw towards the bowlers, and this was a misunderstanding between the batsmen here. They were well settled in the middle, and this time the icon man of RGB Backor, Sajid, walks back to the dugout here. Yes, they have break the shackle over here, and the breakthrough what is much required for the team like HP Papila here, and definitely in Unni Krishnan he have came to bowl as a third over in this particular match between those teams and have collected the trump card, the icon player's wicket. That is Sajid walks back to the dugout. Yes, never mind, 32 on the board. 55 is the victory target. We are in the third over. Last delivery of a third over is remaining here. We have already completed 5 deliveries. The new man introduced with Giri Kumble, that is Aju Magral. Yes, another one supportive batter came into join with Giri Kumble because Aju Magral is also known as a very good runner running between the wickets here. That's what Giri Kumble needs here in this particular situation. Last delivery, Unni Krishnan to Giri Kumble. Right over the stumps here. Nicely delivered towards the final region. Very good stroke from the hands of Giri Kumble. Meanwhile, he is satisfied with single run here. We are closing this over number 3 and the scorecard is 33. Over number 3 and the scorecard is 33. Very good numbers here. 3-3-3 we can see in this particular scorecard, and loss of 1 wicket. Very good start so far from the side of RGB Bakur. That is a very good start it was from Giri Kumble as well as Sajid, the icon, the trump card of RGB Bakur. Meanwhile, that was unnecessary running between the wickets by both the batters and have given his wicket to the bowler Unni Krishnan here. The scorecard is 33, loss of 1 wicket, and just 18 to go, 22 to get this equation. Yes, definitely 18 to go, 22 to get. That is the equation. Some magical overs have to be placed by the team like Team HP Popular to win this victory against team like Team RGB Bakur. And when comes to Team RGB, they just need 22 runs within 18 deliveries within 3 overs. Ball to ball runs is more than enough to get 55 runs of victory target, and obviously 3 to 4 runs will get in the form of extras over here within 3 overs. Yes, 33 is on the board right of 4th over. Samir Kaja, the bowling mark, taking the guard of Brighton over the wicket for Giri Kumble here. First delivery nicely driven towards the deep long of region and taken a single, going for a couple of runs. Yes, that is what collected couple of runs. Clean shot, clean running between the wicket. That's what Giri is doing for his team. Captain
captain's game we can witness in this particular match between those teams. That is what responsibility what is having by Giri Kumbale. He is having that very experience by playing lot of match in same as well as other different grounds. That what is putting over here. That what he is using over here in this particular situation of over number 4 here. Nicely driven towards the covers region, the deep cover region for fielder rushing over there. Meanwhile, cross single and going for a couple of runs. There is good fielding in the deep region and satisfied with couple of runs. Very good, extraordinary stop by the fielder who is presented in the deep covers region and taken a couple of runs in the side of batting mark here. 2 more addition to the scorecard. 37 on the board. Have a look at the Giri Kumbale there. Definitely he got tired by running between the wickets like a terrifying runner, running between the wicket like a machine. He is one of the running machine we can call of Andram cricket. That is what he's doing. Definitely he was tired a lot and he's struggling for a victory for his team as a captain here. Once again facing another delivery and a drive nicely towards the deep long off region and meanwhile going for a couple of runs. There's another run out and this time big appeal goes and yes, this time umpire goes for upstage for a third umpire for run out here. We have to wait. A very good quick running between the wicket we can see from Giri Kumbale. Meanwhile, there is a bit bumble, but the throw was perfectly placed towards the bowler, and there is no action. Second of action he have been taken directly towards wickets, and we have to wait for the upstage umpire here. Definitely Saifuddin he is doing yes. The call is not out. Very good. Live telecast which is helping for us to guide each and every situation of this match, especially with the use of live telecast. Once again, hats off to Shine Sports, the team members of Shine Sports who is working under this particular match, and definitely that which helps in such a condition, such a situation of a particular game here. The scorecard is 39 on the board. 4th over is in progress of 3 deliveries have been completed. Once again taking the guard of right and over the stamps for Giri Kumbale. Going for reverse sweep this time. There is no perfection. Meanwhile just add for the bat and completed single run over here. Yes. Single run have been completed. 40 on the board. Just 15 more runs required in just 14 deliveries, I guess. Yes, 14 to go. 14 to get. This is the equation here. What a match. Beautiful start from the hands of Giri Kumbale. Still he is on strike now. Still he is on crease. Aju Mogral joined with Giri Kumbale, the senior partner, the captain of Aju Bibekur here. Aju Mogral going for a sweep shot. Meanwhile, there's a call from the umpire here. One more extra. Yes, definitely. I have mentioned in the beginning of 4th over. That time it was the 18 to go. 22 to get. That was the equation. And now slightly changing on 13 to go. 14 to get, 13 to go, 13 to get. I guess this is the equation right now. And meanwhile, sweep nicely. And there is a couple of runs adding to this scorecard. What a good running between the wickets from both the batsmen. In this particular match, in this particular innings, second innings, we have seen lot of couple of runs and 4 runs in running between the wicket. 3 runs running between the wicket. 1, 2, 3, 4. Runs have been collected by running between the wicket. That's what very good coordination of players, batters over here. Nicely going for sweep shot. Meanwhile, there is direct hit for the pads, and meanwhile one more single in the form of leg by here. 44 on the board after completion of over number 4. Loss of 1 wicket. 3 extras have been placed in 4 overs, I guess. So far extras have been stimulated by the bowlers over here, and just 12 deliveries required. 12 to go, 11 to get. This equation ball to ball singles is much needed for the victory. Score of 55 runs and just 5 runs, just 5.5 run is required in 12 deliveries here. Very good play by Giri Kumbale. Giri Kumbale have been scored 26 out of 12 deliveries. What a good batting performance by captain of RGB Bekur here. We have seen MPL season 9. Giri was playing for
YFC Kannur. What a brilliant, as a captain, what a brilliant match he have showcased in last MPL season 9, and same the form he is continuing towards the MPL 10 as well. 26 on his private account in 12 deliveries. Yes, fifth over only Krishnan Kumble. Nicely drive towards the fine slip region and taken a comfortable single here. One more addition to the form of single 45 on the board. 10 more runs required for the victory target of 55 runs. Here Uni Krishnan Kumbale once again bowling to Giri Kumbale. Same thing, just direct towards the pad over here, and meanwhile, big call. This is this is out from official umpires, and one more wicket have been blown from the side of RGB Bekur. Giri Kumbale walks back to the dugout here. The captain's innings comes in, and never mind, he have been played very perfect role. 26 runs have been collected in 12 deliveries. Beautiful start have been given by Giri Kumbale. Now just need 10 runs out of 10 deliveries. Is quite easy for the batters to collect 10 runs in out of 10 deliveries. Another side, we have Vuni Krishnan Kumble, captain, have been taken captain's wicket. That is Giri Kumble have started very perfectly the second innings, and he have reached his team till 45 runs, and just 10 more runs are required for the victory of his team. Definitely his boys will do, and they will collect 10 more runs to get the victory target of 55 runs here. Once again, nicely drive towards the covers drive, placed, beautiful place. There is a chance of a couple of runs, and this time 2 runs have been collected, going for third run, and couple of runs added, and this time 3 runs, I guess. 3 runs have been collected by the batters. Very good running between the wicket. The throw was direct towards the officials' head. Umpire said Harish Patel. Yes, it's quite a funny moment over there in the middle. Meanwhile, batsmen have been completed 3 runs here. 48 on the board right now. The match is going to be very interesting in the last stage of this particular second innings. There is a chance of run out, and this from appeal. And that was not confidential over there. There is something discussion between main official Harish Patel, and yes, umpire goes for upstairs for the call for catch here. We have to wait for the decision from the third umpire. Very good appeal from behind the stumps. Definitely third umpire Mr. Saifuddin is on off the field here. Definitely he will take the call is for catch, and we have to wait for the third umpire decision in this particular moment of this match. Yes, definitely we have to appreciate the spectators, those who are watching this particular MPL season 10. Have a look at the crowd over here in this particular Mannamkuzhi stadium. A very happy moment for us, a very happy moment for the organizers to see such a spectacular audience, spectacular crowd in the middle of this tournament, and we definitely appreciate your support. We definitely appreciate your sportsman spirit. It is 12 hours 12 minutes, and we moved for the next day. We started this tournament yesterday at 3 p.m. and moved towards the next day, that is 28th of this month, and a spectacular crowd over here in this particular ground. Yes, definitely we have to wait for the decision. Third umpires are walking behind of this particular moment. Definitely they have to see each and every angles, and they have to take decision. It is not that much easiest thing to take each and every decision and the moment.
So Saifuddin, we have Saifuddin as the third umpire, taking all the angles and waiting for the decision over here for third umpires. Yes, umpire went for, it's called for not out from third umpire. Very good decision have been taken from third umpire, definitely, which helps a lot for the batting side in this particular moment. 48 is the scorecard right now. Krishnan to Ajumagral, nicely flicked towards the fine leg region and taking comfortable single, going for a couple of runs. There is a chance, and this time satisfied with single here. Single more addition, 49 on the board. We are in the fifth over. Last one more delivery left in this particular over number 5. Krishnan once again for the new batter, Pune. This time nicely driven towards the covers region and taken comfortable couple of runs. 2 more addition to the scorecard. Very good placement where there is no fielder fixed perfectly. Hitting the stroke towards there and collecting 2 couple of runs over here. After completion of over number 5, the scorecard is 51 on the board. Loss of 2 wickets. So just 4 more runs required in 6 deliveries. 6 to go, 4 to get. This is the equation right now. 6 to go, 4 to get. Definitely a very good starting from the side of a team like Team RGB Bekur. Yes, sir. Openers have been settled very perfectly. Giri Kumble as well as Sajid Mangalore, all the way from Mangalore, Dakshin Kannada, playing for the team like Team RGB Bekur. Yes, the next match between match number 8, Bichu Boys versus HN Friends. I'd like to call both the captains of those teams. Please come towards the commentary box for the tossing of upcoming match between Bichu Boys versus HN Friends. Yes, Bichu Boys, captain of Bichu Boys as well as captain of HN Friends. Please come towards commentary box here. Yes, very good stroke. Nicely defended the batsman and taken comfortable single. They knows that just 4 more runs required for the victory target of 55 runs. And they have collected 52 runs. Just 3 more runs required in 5 deliveries here. Last over is in progress. The Nawaz lefty with the bowling mark here, taking the guard of right hand, left hand over the wicket for Punita. Nicely driven toward the long of region and taken comfortable single. Call for a couple of runs from the side of Ajamogral, but never mind, no use of couple of runs here. Just singles is quite enough for the victory target of 55 runs. Just 2 more runs required in 4 deliveries. 4 to go, 2 to get. This is the equation here. Now as lefty left hand over the wicket for Ajamogral. Nicely placed towards the deep third man region and taken couple of runs here. Match going to be end. Congratulations Team RGB Bekur for their fabulous, fantastic win against a team like Team HB Papila. We have seen very good performance through batting as well as the bowling mark from the side of RGB Bekur. Have a look at the celebration from the side of Captain Giri Kumble, encouraging team members, and this is what we are witnessing. Super fabulous match of MPL Season 10 over here. Yes, the next match between Team Yes, I would like to call
Mr. Samud, please come towards the presentation box to hand over this man of the match gift to Mr. Sajid. Another one celebration from team, that is the cash award is from the team owner from the side of RGB Bekur. The cash award once again goes to Sajid from team RGB Bekur. Yes, Sajid have been played very fabulous team, the icon player of RGB Bekur. And once again I would like to call Mr. Giri Kumble, the captain of RGB Bekur, to receive his cash award from the team owner of RGB Bekur. That is what the celebration which comes from the captain, which comes from the owner of RGB Bekur. They are supporting, they are promoting their fielders, batters, players to play their effort, to put their effort throughout encouragement we can see from the owner from RGB Bekur. Yes, now the changes in voice. I would like to call Mr. Michael Darwin. Please join with me to analyze. Shafiq off the mark. Here comes Harris once again. That's a shot in the air. Dot ball there, and that was completely not giving any kind of chance for the batters of Bichu Boys. We have seen a victory to start by the team Bichu Boys in the opening game of MPL. Etchen on the other side comes back in the tournament. This is another very good rolling delivery from the bowler. Harris just working with a variation. Fantastic way the man executing his plan in front of both right-handers. Both are very familiar to loft the ball high in the sky.
Lofted shot through the covers, very well clears infield by Santhu Bandwal. It will be a long chase for the field. Wonderfully works over there. Very well cuts it some runs for the team. Outstanding effort over there by the fielder of HN Friends. Couple of runs comfortably completed by the batters. 5 runs on card in 5 balls. Beautiful game of cricket all around the ground here in Mannamkuzhi for MPL 10 Mega Cricket Festival in the history of Underarm cricket. 22 lakh for the finalists. Best ever cash prizes, 2 two-wheelers, 1 for the winning honor, 1 for the discipline team, and a lot of another exciting prizes like LED TV, gold coin, smartphone. Oh, waited for that delivery. It will just pass away from the leg stump. Wide signal received. 1 more run in form of extra. 6 on card. And is need to load that one again. Nicely drives it that one through the onside region. There is a protection in widest long on region. All looking for second. It's an excellent running between the wicket by the batters of Bichu Boys. Fabulous call and response by the batters. Over number 1 completed here. 8 without loss. Bichu Boys Mannamkuzhi. 8 റൺസിന്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ബിച്ചു ബോയ്സ് ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുകയാണ്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബാറ്റിംഗിന് അയക്കപ്പെട്ട ബിച്ചു ബോയ്സ് HN ഫ്രണ്ട്സിനെതിരെ കൃത്യമായി ഓപ്പണേഴ്സ് സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ വലിയ ഷോട്ടുകളുമായി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഹാരിസ് തൻ്റെ പ്ലാനുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി ട്രാക്കിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൗണ്ടറികളിൽ നിന്നും അന്യം നിർത്തുന്നു. എങ്കിലും മനോഹരമായി ഇന്നിങ്സിന് തുടക്കം നൽകുവാൻ ഓപ്പണേഴ്സിന് സാധിക്കുകയാണ് ബിച്ചു ബോയ്സിന് വേണ്ടി. 8 without loss. Here comes the over number 2. Captain coming into the attack. Farvis. He grabs a player of the match award from the previous match. In-form all-rounder cricketer from HN Friends Hidayat Nagar. Farvis Kunjatur. Santhu Bandwal on the other side on strike. Trying for a safe shot. It goes just far away from the leg stump. Left it really well by Santhu. That will start with a wide. Farvis start the over with a wide ball. 9 on card and here comes the ball. Nicely right on the track. Not gets a right connection from the blade of Santhu Bandwal. It was consecutive time to trying some big shot. But it was all in the hands of the bowler. 10 on card. Shafiq Etchen on strike. Very big time for Shafiq Etchen playing against HN Friends here in his home venue. Trying for a very big shot. Very good intention that showcased by Shafiq Etchen and completely disappointed. It's just showcasing the frustration. Aggressive cricketer. Always loves to hit some big shot. A fearless blade of Uppala. Sweep shot high in the sky. It will be a trouble. Oh, fielder takes it for Waze himself. Caught and ball. Shafiq Etchen is going back. First breakthrough for the team. HN Friends Hidayat Nagar. They got the Bacha of Uppala. Shafiq is going back without making anything on the top order. 10 for the loss of 1. Bichu Boys Mannamkuzhi. ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീഴുകയാണ്. കൃത്യമായി ക്യാപ്റ്റൻ ഒരിക്കൽ കൂടി തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. മറുഭാഗത്ത് HN ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഫർവീസ് എന്ന നായകൻ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിങ്ങിലൂടെയും ബോളിങ്ങിലൂടെയും മികച്ച ഓൾറൗണ്ട് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചും ഗ്രാബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മടങ്ങിയ ഫർവീസ് ഇത്തവണ ഫിയർലെസ് ബ്ലേഡ് ഷഫീഖ് എച്ചനെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വരുതിയിൽ ട്രാപ്പിട്ട് പൂട്ടിക്കൊണ്ട്
മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു എച്ച് എൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗറിന് വേണ്ടി. Here comes another star, another genius in batting from Kumbala. Pradeep joins in at number 3 for the team Bichu Boys Mannamkuzhi. Farvis coming, 3 more balls to go. Drives it, that one on to the straight region. There will be a protection in the deep. Straight away single to off the mark by Pradeep Kumbala. Both experienced batters. A very good bench of batting lineup by the team Bichu Boys have in this MPL 10. That giving lot of confidence. Sandhu sings and completely missed on this occasion. Absolutely a top class delivery once again executed with a perfection by Farvis Kunjatur. Is doing the business in the right way, in front of best in the business, standing on the other side, Sandhu Bandwal. Here comes the last ball of the over, turning out to be an outstanding one for the bowling side. Oh, he's done well, he's done really well. That's a masterpiece of execution from a class bowler from Kunjatur. Farvis makes his noise. Just 3 came from the over. Outstanding over comes to an end from a staggering genius. 2 done, 11 for 1, Bichu Boys Mannamkuzhi. 11 റൺസുകൾ, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. ടൈറ്റായി എറിഞ്ഞ ആദ്യ ഓവർ 8 റൺസുകൾ സമ്മാനിച്ചെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓവർ വെറും 3 എണ്ണം മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഫർവീസ് തൻ്റെ ബൗളിങ്ങിൽ ഫ്രണ്ട് ലൈനിലെ ഡ്യൂട്ടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എച്ച് എൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ straight away sitting in the driving seat with a fabulous 2 bowlers. Harris is back into the attack with his second over. Lot of variety for this man in bowling action. But on the other side, Pradeep Kumbala is another stunner of underarm cricket. Have a potential to change the game in any situation with any cause. Such a star. Nicely from the back foot, punches through the onside region. Straight to the long on fielder. Takes a single by Pradeep. A quality cricketing shot to start the over by the team Bichu Boys Mannamkuzhi. 12 on card. Need to change the acceleration. Sandhu Bandwal, we have seen his quality of 42 runs in previous encounter. Ready for a reverse action appeal from the wicketkeeper. It will be a quick one. Everything that making in the sense of the track by Harris TK, the icon star from Mangalore. For H and Tigers, he is just roaring as a tiger for H and friends here in Mannamkuzhi. Absolutely a visual treat of bowling dhamaka, that showcasing. Nicely punches from the backwood once again by Pradeep. He's so strong backwood player. And he can play some hard shot in the front foot as well. A very promising talent. He is ruling the kingdom of underarm cricket in 2 decades. 14 on card. Lovely, absolute peach of a delivery. That's a Jaffa. Not giving any kind of opportunity for the batter like Sandhu. Such a supremacy by Harris TK when he just implements some off-cutters. 3 singles after a dot ball. It is all working in favor of the bowling side. Here comes the ball. Trying for a different action. Sandhu is searching for a fancy shot, but this time Harris is won all the gun. He just exploring his quality, and that will entertaining the fans of H and Friends Hidayat Nagar. Bowling with lot of variety.
That creating huge pressure on the other side. Bichu boys, Mannamkuzhi. Here comes the last ball of the over. Oh, bowled him! That's a stunning missile. Absolutely a scud missile on that block of Santhu. He have no answer. It's an absolute gorgeous delivery that cracks the wicket of informed Santhu Bandwal. What a delivery, what a pace, what an excellent way had his TK close the end count. 3 overs done, 14 for the loss of 2. Bichu boys, Mannamkuzhi. What an excellent delivery. That was a rolling rocket right on the target that brings a wicket. Wonderful way, complete over number 3. 3 done, 14 for 2. Bichu boys, Mannamkuzhi. Dharma, the captain, joins. In at number 4 for the team, Bichu boys, Mannamkuzhi. In this crucial stage, it is a time to rebuild the innings. A crisis manager, Pradeep, standing on the other side. The young man with lot of quality, Dharma, joins as a all-rounder. Here is moving to the second part of the innings, Nitish, the man who comes into the attack with the over number 4. 14-2. ശക്തമായ ബോളിംഗ് പ്രദർശനം ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ. ബാറ്റേഴ്സിനെ കൃത്യമായി ട്രാക്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബോളിംഗ്. അതിനിടെ 2 വലിയ വിക്കറ്റുകൾ, 2 ഓപ്പണേഴ്സിന്റെ വിക്കറ്റും റാഞ്ചി എടുത്തുകൊണ്ട് ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ അതിഗംഭീരമാക്കുകയാണ് HN ഫ്രണ്ട്സ്. 3 ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുമ്പോൾ സ്കോറിംഗ് റേറ്റിന് വലിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള 2 താരങ്ങൾ ക്രീസിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നത് ബിച്ചു ബോയ്സിന് കോൺഫിഡന്റിന്റെ ധാരാളിത്തം സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ. Nitesh comes and that's a clever movement from Pradeep through the offside region when he comes as a reverse stroke. Makes it perfectly. Wonderful connection from his blade. Pradeep, who can generate the innings in a sublime way, is such a star, such a serious star of tennis ball cricket. 16 on card. 2 more runs comfortably added to the score of Bichu boys. They demand some score. They demand some boundary. Pradeep is capable to build an excellent way the innings. Dharma, the newcomer there. Nicely ball. Nice execution from Nitesh Sangadi. This time he's back in the process. Fantastic execution right on target on this occasion. It's again changes the length that works in favor of the bowling side. Appeal from the wicket keeper but not allowing. Umpire is unmoved. Oh, Preetham asking for review or what? Yes, it is. Looks to be a difficult. Have a look at that one. Looks to be. It's up to third umpire. Already 16 runs on card. We are giving it on to the third umpire. Not out is a signal from the third umpire. A very well gap between bat and ball. And there is back-to-back dot balls. Sixteen for 2. Through the onside region. He was straight. And gets a single into the straight region by Pradeep Kumbala. Steady way the innings is progressing. A massive tightening by on the other side by Nitesh Sangadi. Is ready to join in the party with his previous overs.
So far, it's fabulous way working in favor of HN Friends Hidayat Nagar. Absolutely a mind-blowing bowling. It's working again, working wonderfully, just like a well-oiled machine. Comfortable couple of runs between the wicket by the batters in form of leg by. Ferocious bowling. That not giving any kind of loose chance to freeze the arm. Tightening every chances. They were restricting the boundary. Absolute carnage of a fabulous bowling you are witnessing, my dear cricket lovers. 19 runs on card and moving to the last ball of the over, number 4. That's again star-studded over that completed. It's really a fruitful one for the bowling side. Just 5 came from the over. Another standout over from the bowling side of HN Friends. 4 overs done. 19 for 2. Bichu boys, Mannamkuzhi looks to be a little bit trouble in the first innings. ആധികാരികമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി HN Friends Hidayat Nagar മത്സരത്തെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റുകൾ ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തിരിച്ചുവരവിന് ഏത് നിമിഷവും സാധ്യതകൾ ഈ 2 ബാറ്റേഴ്സും നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രവചനം അത് അസാധ്യമാണെന്ന് കളിക്കളത്തിൽ പലതവണ പല ടൂർണമെന്റുകളിൽ പ്രദീപിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ രുചിച്ചറിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ he is ready to seal the deal for the team Bichu boys. Here comes Vijay coming with the over. Action-packed delivery to start the action. Reverse action not work in favor of Bichu boys. You have seen some bad selection over there. Here comes again Vijay. Vijay Mada with a full toss delivery on this occasion. Treated towards the onside region. First run completed. Oh, they were searching for second. It will be a trouble in the Lord striker's end. And it's easy for Vijay Mada. Dharma God. Unfortunate end for the batter. A very huge misunderstanding between the wicket by the batters of Bichu boys. Captain need to whack back. Yes, he is whacking. Another successful one that produced in the field for the team HN Friends Hidayat Nagar. Working wonderfully. The bowlers of sublime and the fielders of energetic. It's all working in favor of the team HN Friends, just like a very, very well-oiled machines. Ansar Kaja comes in at number 5 for the team Bichu boys. What a depth of batting lineup with just sitting like a Belgian shankles in the dugout of Bichu boys. 3 top orders down. Ansar Kaja comes in at number 5. He's a prominent top order. That's showcasing the balance of bench of Bichu boys. How big it is. They have a lot of potential. Lovely delivery once again. Blocked it, that one. With a defensive stroke by Pradeep Kumbala. Just moves between the wicket for a single. We are in the over number 5. 21 for 3. 3 more balls to go from the over. New man, Ansar Kaja on strike. He's having a very good form in this season. We have seen his form in a lot of major tournaments, OCM, all other tournaments. He just showcases vintage Ansar Kaja's type of innings. Lovely delivery once again, just nicely guided through the onside region. Not gets a right connection as he wanted. Just going between the wicket for just a single by Ansar Kaja off the mark. 22 on card by the team Bichu boys Mannamkuzhi. Pradeep is very well settled. Or trying for a big shot. Keeps the line away from the batter. That's a very good strategy from Vijay Mada. How well the experienced bowler working in front of the expert on the other side. Masterful execution.
with a superb way, the man using the line. It is again working. Batters move between the wicket in form of just a boy. Another successful over comes to an end. 5 overs done. 23 runs on card. Just 4 runs came from the over of Vijay Mada. What an exceptional over that bowled by an experienced Vijay Mada for the team. HN friends, Hidayat Nagar. 23 for the loss of 3 after 5. 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും ബാറ്റേഴ്സിന് ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അനങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധം മാസ്മരികമായി എല്ലാവിധ ചാൻസസുകളും ലോക്കിട്ട് പൂട്ടുന്ന ട്രാപ്പിട്ട് പൂട്ടുന്ന a tricky type of bowling performance that showcasing by HN friends Hidayat Nagar here in Mannamkuzhi for MPL season 10. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒരു പരാജയം രുചിച്ചറിയുന്നു. പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ ചേസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് HN ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിജയത്തോടുകൂടി ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ച ബിച്ചു ബോയ്സ് മണ്ണൻകുഴി വീണ്ടും വിജയ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ബിച്ചു ബോയ്സ്. അവസാന ഓവറിന്റെ ആദ്യ പന്തുമായി ബോളർ എത്തുമ്പോൾ സിറാജ് ബോർത്താനെ തന്റെ മുൻഗാമികളായ ബോളേഴ്സ് ചെയ്തതെന്താണോ അത് കൃത്യമായ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ ഓവർ ആരംഭിക്കുന്ന താരം ഡോട്ട് ബോളോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. Here comes the ball number 2. Gives it that one nicely, just for a 1 for sure. Yes, it is. Complete domination by the bowling side. In this midnight, HN friends versus Bichu boys, always a high voltage game in all the tournaments. But we can see a one-way traffic so far. Batters are very well restricted. Bowlers are ruling this paradise. That is Ansar Khaja straight down the ground and one bounce and what a save, you man! Man oh man, boy oh boy! Absolutely outstanding save we have seen from the long off region. Have a look at that one. Wow, wonderful. Staggering. Standing. Saving some important 2 runs for the team. HN friends Hidayat Nagar. Things all working. No boundaries so far. No sixes so far. It's all in the custody of the bowlers of HN friends. Here comes the ball. Absolute peach of a delivery right on the block all of Ansar Khaja. Well. The allocated time is over. That's a signal we have seen from the center. Need to stand one more fielder inside the ring. Siraj Aliaka from Mortane, the bowler from above 40, showcasing it's all the experience. Lovely, absolutely controlling everything right in the middle by Siraj, the man from above 40, just playing like a youngster. And he just giving the restriction for the experience Ansar Khaja and Pradeep Kumbhala. 5.5 is passed. Moving to the last ball of the innings, number 1. Last ball of the innings. Outstandingly well delivered by Siraj Aliaka. But this time a wide call just far away. He need to bowl again. Controlling the pace variation. Controlling the rollings. On the track, Aliaka loved to bowl. Well. A wicket drops in the middle. Ansar Khaja is going back. But won't mind on the other side. Aliaka is ready to close the encounter. HN friends വിഷം തുപ്പുന്ന ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി ടൂർണമെന്റിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് സ്കോറിൽ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി എതിരാളികളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ബോളിംഗ്. In the end, yes it is. One more time Pradeep Singh's and this time easily the man coming back for second but no chance over there. Electric quick throw with lot of accuracy onto the stumps and rest of the work done and dust by Preetham.
Wonderful way the innings is completed for the team HN Friends Hidayat Nagar. Outstanding game of bowling, visual treat we have tasted here in Mannamkuzhi innings. मैच होगा। इस मैच यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच, बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में, बड़े बड़े मैदानों में कहीं जगह में देख चुके हैं लो स्कोरिंग मैच कभी कभी जो आसान नहीं होते हैं, मुश्किल स्थिति बन सकते हैं। यहाँ पर 30 रन के लक्ष्य को यहाँ पर पीछा करना है। आरंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं हारिस और रंजू, गेंदबाज के रूप में बॉलर दरमा। पहली गेंद और इस गेंद को उठा करके ला है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद तो सीधा गई है सीमा रेखे के बाहर। टन टनाटन चौका। बिल्कुल अच्छी शुरुआत दी है, 30 रन की शुरुआत है। तो सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 रेखे के बाहर रहते हैं, बिल्कुल स्क्वायर लेग, बिल्कुल खाली जगह थे, उसी जगह पर इन्होंने टारगेट बनाए। हारिस ने चौके लगाकर अपनी सामने वाली टीम के गेंदबाज को स्वागत किए। दूसरी गेंद ओवर द विकेट धर्मा, और इस गेंद को उल्टा खेलना चाहते थे, उल्टा बल्ले में। तब 1 रन तो निश्चित रूप में मिले हैं, बल्ले के बाहर हिस्सा लगे हैं तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 5। फिर एक बार धर्मा दुर्बाली चौक से मध्य विकेट, उनको सामना करने के लिए रंजू निरचाल ओवर द विकेट, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है। गेंद तो तेज रफ्तारी से थर्डमैन सर्कल के बाहर फील्डर थे उनके तरफ गए हैं, तब तक 1 रन, रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 6 ऑन द बोर्ड। 6 रन 3 गेंदों पर सामना किए, 3 गेंदों को सामना किए, 6 रन बना लिया गया। हारिस 5 रन बनाकर 1 रन बनाकर रंजू। फिर एक बार धर्मा दुर्बाली चौक से, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है, फील्डर तो तैनात है वहां पर, सिर्फ 1 रन के इजाफा, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 7 ऑन द बोर्ड। 1 बाउंड्री 3 सिंगल, शानदार शुरुआती देते हुए देखिए 4 गेंदों पर 7 रन, 6 रन बनाकर हारिस और 1 रन बनाकर रंजू निरचाल।
फिर एक बार रंजू के लिए, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ इस गेंद को खेला गया है कवर के ऊपर, शानदार कवर ड्राइव, और कोई मौका नहीं फील्डर को। रंजू के तरफ से एक टन टनाटन चौका। देखिए कितनी शानदार शॉट थे, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थे, इस गेंद को ड्राइव किए हैं और इस जगह पे बिल्कुल खाली जगह थे, चौके मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 11 ऑन द बोर्ड, और इस गेंद को उठा दिए हवा पर गेंद, फिर एक बार ऑन बाउंस, टू बाउंस, गेंद जाते हुए सीधे सीमा रेखे के बाहर, चौका। അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിംഗ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്റ്റന്മാർ. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലെ അവസാന മത്സരം, ഇന്നത്തെ അല്ല ഇന്നലെ ദിവസം തുടക്കം കുറിച്ച ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ അവസാന മത്സരം. BSC बपाईतोटी अलिफ स्टार कैप्टन पहली ओवर संपन्न हो चुके हैं। स्कोर कार्ड पर लाजवाब शुरुआत दिए हैं 15 बिना किसी नुकसान के साथ। हारिस और मुस्तफा मींजा, मुस्तफा लेफ्टी എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും വേദിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. देखिए फिर एक बार शानदार चौके लगाकर जल्दी खत्म करना चाहते हैं इस मैच को। पिछले इनिंग्स में कोई चौके नहीं लगाए, कोई छक्के नहीं लगाए, लेकिन इस इनिंग्स के शुरुआत अभी अभी हुए हैं छक्के चौके के साथ। बहुत बड़े रोमांचक शुरुआती दिया गया है हारिस और रंजू ने मिलकर। अब स्टंप के बाहर वाइड। फिर एक बार दूर वाले चौक से ओवर द विकेट, और इस गेंद को लेग स्टंप के काफी बाहर थे, वाइड के करार दिया गया। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 21 ऑन द बोर्ड। 30 इज द विक्ट्री टारगेट, 30 इज द विक्ट्री टारगेट। और इस गेंद को खेला गया है सीधे मिड विकेट पॉइंट पर, फील्डर थे उन्होंने गेंद को केदार की वापस दिए। मुस्तफा मींजा कहीं भी हो रिपोर्ट कीजिए माइक पॉइंट पर। मुस्तफा मींजा എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. फिर एक बार तैयार है, सिर्फ 3 गेंदें फेंक चुके हैं। बढ़िया गेंद, अपील भी की है लेकिन अंपायर ने नकारा। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, अच्छी अपसी की है, लेकिन स्कोर तो देखिए 21 पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ 9 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए एचएन फ्रेंड्स को। व्हाट ए शॉट! गेंद देखिए, रफ्तार देखिए शॉट की, और शानदार फील्डिंग भी हुई यहां पर। 2 रन तो निश्चित रूप में मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 23, 7 मोर रन रिक्वायर्ड। पावर प्ले जारी है और भी 1 गेंदे बचे हैं पावर प्ले की। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर 23 बिना किसी नुकसान के साथ। സൈനപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചെങ്കിൽ ടോസിംഗ് നടത്തുക. ക്യാപ്റ്റന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരിക. 23, 7 मोर रन रिक्वायर्ड। तीसरी ओवर के रूप में गेंदबाजी में बदलाव दिख रही है। नए गेंदबाज संतु बंटवाल पहली बार गेंदबाजी में दिख रही हैं। तीसरी ओवर के रूप में गेंदबाजी करने के लिए मौका मिले हैं। उनके सामने बल्लेबाज भी मौजूद हैं। रंजू उल्टा बल्ले में खेलना चाहते थे और इसी के साथ अपने विकेट को गवा दिया गया है। 23 लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरी ओवर लेग कटर गेंद के गति को समझ नहीं पाए। देखिए लेग स्पिन गेंद थे
और इस गेंद को खेलना चाहते थे उल्टा बल्ले में और टेढ़े बल्ले में खेलना चाहते थे। कोई ताकत के साथ कोशिश तो नहीं की तब तक अपने बैट और पैड के बीच में गेंद गुजर गई। तब तक अलिफ स्टार ऑन द टॉस, बपाई तुटी, बीएससी बपाई तुटी ऑन द टॉस। संतु फिर एक बार नए बल्लेबाज के आगमन हुए हैं, रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। तब तक का 1 रन और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 24 ऑन द बोर्ड, 24 रन। अब सिर्फ 6 रन की समस्या है, 6 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। संतु तैयार है। फिर एक बार अच्छी गेंद, अपील, लेकिन जिस अपील को इनकार करते हुए अंपायर लेग बाय की इशारा भी की है। जरूर पैड पर लगे थे लेकिन स्टंप के सामने नहीं थे पैड, इस वजह से निराश के चेहरा दिख रही है संतु की, लेकिन निराश में कोई बात नहीं होंगी। (25) loss of 1 wicket after completion of 2.3 over. संतु फिर एक बार फरवेज के लिए, फरवेज ने उठाकर खेला है, शॉट फाइन लेग पर गेंद, तेज रफ्तार से, कोई मौका नहीं फील्डर को, सीमा रेखे के बाहर गेंद गई है। फरवेज के बल्ले से निकलता हुआ सुंदर शॉट, शॉट पे डिलीवरी थी बिल्कुल लॉलीपॉप के जैसे आए थे गेंद। तब तक आसानी के साथ इस गेंद को जगह बनाए शॉट फाइन लेग पर। और एक बार संतु, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। रन के लिए खतरा आते लेकिन तेजी के साथ करीबी मामला भी है, तीसरी अंपायर की मदद मांगे हैं। रनआउट के लिए तीसरी अंपायर की मदद मांग चुके हैं। 29, सिर्फ 1 रन की जरूरत है। नॉट आउट हो तो एचएन फ्रेंड्स जीत जाएंगे। स्कोर इस लेवल नॉट आउट, एचएन फ्रेंड्स ऑन द मैच। अगले मैच के लिए तैयारी होना चाहिए। यहाँ पर टॉस जीत चुके हैं बीएससी बपाई तुट्टी, 2 में 1 जीत। बीएससी बपाई तुट्टी आगे है अलिफ स्टार से। अलिफ स्टार तो 2 मैच से खेल चुके हैं, दोनों मैच में 0 अंक पर खेल रही है। अब देखना होगा कि इस मैच में कमबैक करना बिल्कुल जरूरी।
He's on strike and non striker. The Mustafa Ubala from the side of Olive Star Musuri. The openers from the side of Olive Star here already gather in the crease to face the opener bowler from the side of BSC. Babai Thodi has a heavy go with the first over number first. The first delivery with the bowling mark. We have the icon player to trump card of BSC Babai Thodi. That is fires with the bowling mark. The last final match of day number 1 of MPL season 10. Fires taking the guard off right and over the stumps for Chimi Yosangari. One key player from the side of Alif Star Musodi. Nicely placed the delivery. Flicked the delivery towards the covers region and taken comfortable cover single here off. It's a very good start. Very good start from the both ends. So that is batting as well as bowling mark here. Chimi Yosangari, one of the experienced campaigner in the Antram cricket. Playing as a captain for Alif Star Musuri in this particular tournament of 2026, that is MPL season 10. We have enjoyed the 8 matches that which we have completed on the day number 1. We have started yesterday and moving towards the next day of this month, that is today 28th of January, and definitely very good start from the bowlers mark. Nicely driven. There is a chance of running between the wicket here. Miss collection and taken advantages of that miss collection and taken comfortable single here. Is quite misunderstanding between the fielders over there present and in the back point region, and meanwhile completed single run in the middle over here. That is Mr. Chimi Yosangari as well as Mustafa for team Alif Star Musudi here. The final match number 9 is in progress. We are on the first over, completed 2 deliveries, 2 runs on the board. 4 more deliveries left in this first over number 1 here. Fayaz, the key player, informed player all the way from Mangalore, playing for BSC Babai Thodi under the captaincy of Shabir Babai Thodi here. Once again taking the card off right and over the stamps. Nicely delivered. Have a look at the sensational delivery from the hands of Fayaz. Chami is a bit quite finding difficulty to face that particular delivery from the hands of Fayaz. That is what very good line and lance towards the stick was placed perfectly for Chimi Yosangari here. Once again for Chimi Yosangari taking the guard off right and open the wicket. And now this time for going towards the boundary line. There is not at all a collection, and meanwhile 4 more runs in the form of by. Yes, definitely there is not at all connection between bat and ball. Meanwhile directly hitting the ball towards the pad and moving towards the boundary line. That is a plus point for the batting mark here. The scorecard is 6 on the board, that which is making advantages in the batting side for Alif Star Musori. Once again fires for Chemi Yosangari. This time nicely flick the deliveries toward deep long of region and taken comfortable couple of runs here. Very good clear couple of runs over here have been collected, and last 1 more delivery left in this particular over number 1. Very good hit from the hands of Chimi Yosangari. We have seen in the 5th delivery from the side of Fayaz, slightly driven towards the deep long of region and taken couple of runs here. Last deliver first over. Same stroke for the same region and for same fielder, and meanwhile taken completed single run here. 1 more addition to the scorecard after completion of over number 1. The scorecard is 9 on the board. A very good start so far from the side of BSC Bapai Thoti. Fayaz did a very good job in the initial over, but meanwhile there was not a perfect behind the stumps worked and left 1 boundary over there in the form of leg by that which was created. 9 runs on the board over here in the completion of over number 1. The final over, the final match of this first day. Have a look at the crowd. Still is watching this particular match of MPL season 10. What a match witnessing over here in this particular mini stadium of Mannamkuzhi. That is what selected Mannamkuzhi did a perfect organizing over here to conduct such a fabulous match, fabulous tournament in this particular
day and night. So definitely the audience, the crowd is enjoying this match between those teams. Shabir, the captain itself, taking initiative to lead his team in the over number second. Taking the guard off right hand over the wicket for Chemi Osangari. Captain to captain this time. First delivery for Chemi Osangari. Nicely flicked towards the long mid on Legion and taken comfortable single here. Definitely singles and couple of runs. Definitely doesn't make any big change in the scorecard. They have to go for big shots, and definitely the sixes and boundaries definitely makes the crowd and audience feel happy. And we haven't seen any big shot so far over here in this particular match between those teams. Shabir once again pitching the ball towards the earth and to the man Mustafa here. Yes, taking the guard, changing the guard for Mustafa. Right hand, left hand combination. One more dotted delivery. Very good delivery from the hands of Shabir. The young man, young talent, the young blood in action from the side of BSC Bapai Totti, the captain. Very fabulous game he is playing throughout the match. We have seen in previous matches as well. A very beautiful batting as well as bowling performance. He have been placed nicely driven towards the point region and taken comfortable. There is a bit fumble with the point region fielder Riaz Maria settled over there, but he couldn't able to collect that delivery perfectly. Meanwhile, crossed a single more run here. Very good rotation of strike we can see from Mustafa as well as Chemi Osingadi. Chemi, the dangerous man from the side of Alif Star Muso, the captain to captain once again, changing the guard off right and over the wicket for Chemi Osingadi. Goes for a big shot here, slightly edged the bat. Meanwhile, ball crossing towards short fine leg region and very good running between the wicket here. The scorecard is moving towards 11 on the board. No ball indication from the center here. Yes, no ball indication from the center. 1+1, 2 more runs adding to the scorecard. A very good judgment from the umpire there. Saifuddin doing perfect job. Free hit call. Yes, have a look at the hands of umpire turning into hands over there. The free hit indication from the center. Definitely, it is useful for the batter to go for maximum over here. Yes, this time Shabir to Mustafa. Mustafa facing the first free delivery from the hands of Shabir Bapai Totti, the captain, rotating the strikes, rotating the guard, because the left and right combination is quite difficult to bowl in such condition here. Shabir here, very good delivery, slow one, confusion one for the batter. Completely dotted one. That is what Shabir Bapai Totti is doing. Some tactic, some magical strategy using in this particular bowling mark here. What a rolling delivery. Have a look at the replay. Going towards the offside region and coming to inside the edge. This was a very brilliant bowling performance from Shabir Bapai Totti here. Once again, a couple of runs adding to the scorecard. A bit of fumble with the point region fielder Riaz Maria. What he is doing in the point region, couldn't able to collect the ball perfectly. Meanwhile, crossing couple of runs here. So far, a very good start from the side of BSC Bapai Totti, captain Shabir. Spelling second over, 5 deliveries have been completed. Once again, changing the guard for Mustafa here. And a very good delivery. Meanwhile, same stroke from the hands of Mustafa here. A very good delivery comes to an end. There is no chance for the running between the wicket. We have completed over number 1. After completion of over number 2, the scorecard is 15 on the board. Slightly match is going the side of BSC Bapai Totti. Very good start in the beginning 2 overs they have completed. Initial 2 overs they have completed, but they couldn't able to get the wicket of openers. That is Mustafa as well as Chemi Usangari. Chemi have to blow. Chemi have to do some extraordinary performance in this particular innings number 1 here for Alif Star Musodi as a captain. Captain Shabir perfectly spelled second over and just left 6-7 runs, I guess, in this particular second over. This after completion of over number 2. The scorecard is 15 on the board. A very good
start from the side of BSC Bapai Tutti. Definitely the young man having talent that what he is using in this particular match is setting up. Have a look at the young man setting up the fielding mark here, counting each and every player where they have to be settled in the fielding mark. That is what Shabir Bapai Tutti is doing for his team here. Once again, third over. Mehroof with the bowling marker. Captain brings Mehroof to face Chemi Osangari. This time a reverse sweep. Nicely played by Chemi Osangari, where there is no fielder fixed in this deep square leg region. One more boundary for Chemi Osangari here. 4 more runs addition to the scorecard. Very good stroke. It was from the hands of Chemi Osangari, the captain of Alif Star. Have a look at the reverse sweep. The point, the fielder who is inside 30-yard circle, that what have been taken advantages and sweep nicely towards the deep square leg region and collected 4 runs for his team. Score card is slightly moving, slightly jumping towards 19 on the board right now. A third over is in progress. Captain brings Mehroof with the bowling mark, taking the guard of right and over the stamps, nicely driven towards the deep leg region, and there is a bumble, and that bumble makes a couple of runs, adding to the scorecard. That is what slightly mistake, slight mistake definitely makes a big movement for the batsman to go for a couple of runs here. 2 more addition to the scorecard in the form of couple of runs. Third over is in progress. The opener still on the strike now. Very good batting performance they have been showcasing over here in this particular over number 3 here. This time once again going for big start. There is no connection at all with the bat and ball. Very good comeback by Mehroof in the particular third over. That is what we are witnessing, match between those teams. One side we have Chemi Osangari, another one we have the captain of BSC Bapai Tutti, young man Shabir Bapai Tutti, and the bowling mark we have Mehroof. Mehroof to Chemi Osangari, nicely plays towards the deep square leg region and taken comfortable single here. Very good single from Chemi Osangari. Definitely singles doesn't make any big difference, makes any big changes over here in this particular match between those teams. It is quite difficult to take a very good total in this such a condition of dark light. It is not at all easy for the big shot to hit throughout the ground, but still the openers Mustafa as well as Chemi Osangari doing a very good job for their team, and it quite very difficult for the bowler when the left and right hand combination works together in the middle of batting lineup. They have to change their line and lens towards the according to the batters, and that is what Mehroof is doing a very perfect job here. One more dotted delivery. Have a look at the condition of that delivery. Have a look at that lightning speed towards the stick was perfectly placing by the bowler here. Mehroof doing very good job in this particular over number 3. Just 22 on the board after completion of 5 deliveries. Last delivery for Mustafa here, just flicking the deliveries to the fine third man region and taken comfortable single here. Yes, completed over number 3. After completion of over number 3, the scorecard is 22 on the board. There is no damage at all from the side of Alif Star Musodi, but still the scorecard is just 22 on the board. Just 3 more overs are remaining so far here. They have to go for big shot. Definitely openers still is on crease. That is Mustafa as well as Chemi Osangari. They can go for a big shot any fraction of seconds. So that is what they have waiting for the easy over had to come in this particular 3 overs which is remaining from the side of BSC Bapai Tutti. Yes, 22 on the board after completion of 3 overs. 3 more overs remaining in this particular over number 4 is on progress here. Fayaz brings back captain brings back Fayaz into the attack because icon player from the side of BSC Bapai Tutti. Captain knows that his ability, his efficiency towards the bowling as well as batting mark. He is showing his bowling performance right now in front of Chemi Osangari. Looking for the big shot this time. A slight ledge towards the covers region and point cover region, and meanwhile cross single run here.
This is what we are seeing, not aggressiveness here. Just cool play, the calm play of last match we are witnessing in this particular match between those teams. We haven't seen any maximum still now. Only one boundary have been came from the bullet of Chemi Osingari, and so far no big strokes we haven't seen in this particular match between those teams. Once again changing the guard for Mustafa here. Very good delivery from the hands of Nawaz here, and this time goes for upstays here. Fayaz goes for upstays. For wide is the call from umpire, and definitely a review call by Fayaz, and we have to wait for the decision from the third umpire. Definitely it is not quite easy to judge each and every delivery by the bare eyes for officials. They have to go for upstates for the perfection, for the perfect decision, and live telecast Shine Sports. They are telecasting this particular tournament of MPL Season 10, and definitely it which makes all the cricket lovers, those who are in outside the district, those who are watching in abroad, they are supporting from abroad. Definitely they are watching this live telecast of MPL Season 10 in the form of Shine Sports Putura. Yes, it is call wide is the call from third umpire. Very good decision from Saifuddin. Have a look at the decision making capacity of main umpire. Saifuddin is doing perfect job in the on field over there. What a good decision here. We have to appreciate both officials. That is Rajesh Padil, Mohan Yari. Once again, one more extra addition to the scorecard. And Mr. Saifuddin all the way from Mangalore, especially introduced for the particular match of MPL Season 10. They are doing very good job over here in this particular match. Yes, slighted even towards the third man region and taken comfortable single there. One more addition in the form of single. That single score moves on 26 on the board. Fourth over is in progress. Fayaz, the icon man from the side of BSC Bapai 30, introduced. Captain brings back Fayaz into attack in the bowling mark, because he knows that openers they can go aggressive any time of the moment in this particular situation. Yes, once again, what a delivery, what a terrifying rocket delivery. It is lighting towards the wicket keeper's hand. Shabir, there is a very good collection by the behind stumps. Shabir did perfect job. There is no chance for the batter to go for singles and couple of runs. This time nicely flicked the deliveries towards the covers region and taken single and going for a couple of runs. There is a chance of run out, and this time is understanding between the batsman here. Very good collection from the deep covers region, right throw towards the Fire's hand, and fraction of second he have taken wicket of Mustafa here. Mustafa walks back to the dugout. Very good partnership they have built by both the batsmen, that is Chimi Osingari as well as Mustafa over here. But meanwhile the misunderstanding which leads for the run out in the last moment of this particular over number 4 here. What a match between those teams we are witnessing in this particular match. That is what Fayaz, the trump man, trump card, the key player, the icon man of BSC Bapai 30. That is what strategy which is used by the captain of BSC Bapai 30, Shabir, brings back Fayaz into the attack in the over number 4. He is doing perfect job. The scorecard is 27 on the board. Looking for the big shot, has a reverse sweep. Meanwhile, one bounce into the hands of fielder Ansar Sitangoli, rushing towards the ball and perfectly caught over there. 28 on the board. Slightly a calm, cool match we are witnessing. There is no aggressive shots. There is no powerful hits.
it's quite natural to see in such condition because MPL high voltage match we are witnessing, but the last match of first day, it's quite going to be a normal neutral match over here in this first innings. So once again, last delivery of Fayaza sweep nicely towards the deep region and taken comfortable single here. Rotated strike nicely, and this time after completion of over number 4, the scorecard is 29 on the board. Loss of 1 wicket. As I told, neutral match we are witnessing in the final match of day number 1. That is match between BSC Bapai Todi versus Alif Star Musodi. They have lost 1 wicket from the side of Alif Star. Mustafa walks back to the dugout because of the misunderstanding what the batsman did in the middle, that which leads for the wicket have been loose from the side of Alif Star. Here we have completed 4 over, 2 more over have to be bowled here from the side of BSC Bapai Totti, and just 29 run in the scorecard, but still the dangerous man Chemi Osengadi still is on strike. He can do some magical strokes, he can hit some magical strokes over here in this particular over number 5. Yes, bowler Samad, the captain, brings Samad in the bowling mark to attack the batters of Alif Star Musodi. Ishak Machampadi joins with Chemi Usengadi. Very good player. Both the players having that efficient ability, talent, experience, power that they have to showcase in particular situation of over number 5 here. First delivery, looking for the big shot. This time there is no connection at all. There is no connection at all. Pitching delivery, it was quite pitching delivery, but slightly went as the googliest delivery and the batsman completely beaten over there. What a good start in the first 5th over of first delivery here from the side of Samad Power here for Ishak Machampadi. Nicely flick the delivery towards the fine leg region and rushing towards the ball. Meanwhile, crossing and going for a couple of runs. This time a couple of runs added to the scorecard. Very good running between the wicket. Slightly driven towards the square leg. It's slightly driven towards the fine leg region and taking comfortable couple of runs. 2 more addition to the scorecard here. 31 on the board. We are in the 5th over. 2 ball we have completed. 4 more delivery have to remaining over here. Same stroke towards the same region. This time crossing the boundary here. 4 more addition. What a strike from the hands of Ishak Machampadi. As I told at the beginning of 5th over, both the batsmen having that caliber, both the batsmen having that capacity, experience, power to go for maximums and boundaries. So that's what Ishak Machampadi have did here. First delivery nicely driven towards the fine leg region and taken a comfortable couple of runs. Meanwhile, same time the next delivery placed nicely towards the square leg region and taken boundary here. 4 more addition to the scorecard. 35 on the board. Loss of 1 wicket. We are in the 5th over. Over number 5 is on progress. 3 delivery remaining in this particular. This time ups in the air. Big shot underneath. Rushing Kandam Star presented over there, and Kalela makes perfection in the deep onside region. Ishak Machampadi walks back to the dugout here. Ishak's innings comes to an end. Second down from the side of Alif Star Musodi. Ishak depart this time. And this is the big loss for the team like Alif Star Musodi. Have a look at the fielding set, which is set by Shabir Bapai Tutti, young man who is making everywhere perfection. He knows that which bowler has to be introduced in which condition. That is what plan, strategy, mind work who is doing over here. That is a small guy, young man, young talent of Andaram cricket, the captain of BSC Bapai Totti. That is Shabir Bapai Totti is doing perfect job over here in this particular match between those teams. Yes, a very good bowling mark. We have Samad Power doing perfect job in the bowling mark. The new man, the trump card, the icon player, I guess, from Alif Star Musodi. Ranjit introduced as a batter. Yes, captain Chimi Osengari brings Ranjit icon player into the batting mark here.
Samad facing Ranjit first time taking the guard off right and over the stamp for Ranjit all the way from Dakshin Kannada playing for Alif Star Musuri. One of the key bowler from the side of Alif Star Musuri. Ranjita into the batting mark here. Samad to Ranjita, right, and over this time for Ranjit first time. Yes, a very good delivery this time, nicely driven towards the one side region and taken a comfortable single here. Very good running quick action from the side of Shabir Bapai Toti. Have a look at the running collection from Shabir here, completely restricting the batsman to go for a couple of runs, and that is what here very good performance is showing in the fielding mark by Shabir Bapai Toti here. Last delivery of fifth over number 5 is in progress. Last one to go in this particular over number 5 for Chemi Osangari. Nicely driven towards the deep offside region and taken a comfortable single. Have a look at the collection from the deep fielders, not letting the batsman to go for a couple of runs. That is what a strategy, that is what a very good fielding setup have been set by the Shabir Bapai Toti, the captain of BSC Bapai Toti. Scorecard is 37 on the board after completion of 5 overs, a loss of 2 wickets here. Last one more over is remaining. Yes, definitely I think Riaz Maria will come into the attack in the bowling mark, because the lineup which is made by Shabir, we have seen in the last match the Riaz Maria, the trump key player from the side of BSC Bapai Toti, the key bowler from the side of BSC Bapai Toti, is putting him in the tail end bowler for BSC Bapai Toti here, because Shabir knows that complete the capacity about Riaz Maria. Definitely Riaz, the player of KFC Kumbalay today, playing for BSC Bapai Toti, taking the guard off right hand around the wicket, over the wicket for Chemi Osangari, looking for the big shot, nicely driven towards the long off region, and this time going for a couple of runs, completed a couple of runs. Meanwhile, very good stunning effort and the deep long off region, fielder fixed perfectly and collected beautifully over there. Very good effort in the deep region fielder. Meanwhile, a batsman completed couple of runs, 38-39 on the board right now. So far not bad, I guess, in this particular condition of night time. It is not actually night, it is early morning of 28th. Very good strokes to the same shot towards the same fielder. There is a chance of run out, and this time hitting the wicket. Yes, umpire goes for upstage here. Very good collection from the deep region fielder, who is fixed in the long off, and perfect throw towards the keeper's hand, directed from keepers to wicket. This time umpire goes for upstairs, because this is the critical moment. This is the quite critical moment to take a decision for the bare eyes, and definitely we have to wait for the decision of third umpire. Slightly bumble with the Chemi Osangari, I guess, because he was skid over there in the middle, and we have to wait for the decision. Definitely Harish Padilla did perfect job by going upstairs in this particular condition, because trump card key player is on the side, that is Chemi Osangari, the roaring lion of Antram cricket. We have to wait for the decision which will come from third umpire. Yes, out is a call from third umpire here. Chemi Osangari depart. Chemi Osangari depart from the side of Alif Star. The captain walks back to the dugout here. Very good innings have been built by Chemi Osangari. Very good partnership have been built by Chemi Osangari. At the end moment of the final over number 6, Chemi walking back to the dugout here. What a match, 39 on the 40 on the board after completion of 5.2 deliveries. Just 4 more delivery left in this particular over number 6 here. Last over with the hands of Riaz Maria, the key bowler from the side of BSC Bapai Toti, introduced as the last man in the bowling mark over here, and taken very good wicket off Chemi Osangari from the side of Alif Star Musori, the new man Inti Ani Pusuta.
Very good. Another one player of in Andram cricket. All-rounder of Andram cricket. Inti Pusota playing for Alif Star. Musori here. A very good batter from the side of Alif Star Musori. We have seen his tactic bowling style, cutter bowling style. And he came with bat right now to bat Riaz ball over here. Yes, this time going for sweep shot. This time there is another one pumble. There is another one pumble by Inte. And one more wicket. Consecutive wickets have been fallen in the regular intervals over here from the side of Alif Star Musori. Have a look at the celebration. Have a look at the celebration from fielding mark over there. All fielders are coming into the Riaz and appreciating for him. That is what very good work from the side of keeping a marker behind the stamps. Fayaz did perfect work over there. And Inti disappointed. Bad luck for Inti, I guess, in this particular condition. Walks back to the dugout. Very disappointment moment in the final over of over number 6. 40 we have stacked on 40 on the board. Loss of 4 wickets here. 3 more delivery left in this particular over number 6. That's what have been mentioned in the beginning of last over. Shabir kept Riaz Maria as the last bowler of this particular first innings, so that he knows that his caliber, he knows that tactics. Have a look at the style of his bowling here. Nicely bowled, nicely played over there, and meanwhile a shot towards the point region and taken comfortable single here. One more addition to this scorecard here, slightly moving towards 41 on the board. Just 2 more delivery left in this particular over number 6. We are winding up the over innings number 1 within 2 deliveries. Riaz Maria once again taking the guard off right and over the stamps for Ranjit here. Ranjit goes for a sweep shot, nicely driven toward the final leg region. Meanwhile cross single, and very good understanding by the batsman here. Couple of runs and couple of runs added to the scorecard, I guess. Yes, 2 runs, I guess. Some discussion is going between the main umpire as well as squad leg umpire, and we have to wait for the decision whether it is a single or a double. Yes, going for upstairs here. Definitely it is not at all easy to judge in this particular condition, and we have to wait for a third umpire decision to make a correct decision in this final stage of final over. Over number 6 is in progress so far. Riaz bowled perfectly here, taken 2 valuable wicket. That is Jimmy Osingadi and the wicket of empty Pusota. And just left 3 runs in this last final over number 6. Riaz Maria did perfect start from the hands of Riaz here. Bowled perfectly for team like team BSC Bapai 30. And this time we have to wait for the final decision from the side of third umpire. Definitely they are watching from each and every angle of particular live telecast. And they have to make some good decision over here in this particular match between those teams. The call is out from us. Third umpire. One more wicket have been fallen. Towards the wickets, the ball direct towards the wicket here. Ranjit walks back to the dugout here. The icon man from the side, Alif Star Musodi, struggling in the middle right now in the final over. That is for Riaz Maria. You are doing beautiful job, man. Riaz, your beauty, naughty boy. All the way from KFC Kimberley, playing for BSC Bapai 30 here. The scorecard is 41 on the board. Last delivery of final over. What an wickets have been fallen in the final over. Ranjit, Inti, Posoto, Jimmy Osingari. What a brilliant over have been coming to an end within last delivery. Beautiful placing delivery have been doing very good job by
Rias Maria in this final stage of final over. Yes, the last delivery of sixth over, taking the guard off right and over the stumps for Sujita last time. Yes, nicely flicked here. There is field fixed in the point race and there is also run after. Meanwhile, cross a single run here. Yes, we are winding up the first innings. The scorecard is 42 on the board and 43 is a victory target for team like team BSC Bapai 30. 45 is not that easiest thing. 46 is not that easiest thing to reach their victory total target of 46 run, and in such a condition 43, I beg your pardon, 43 in such a condition of dark light. 43 is a victory target. 43 is a victory target. 42 is a scorecard, and 43 is a victory target over here. And it is not quite easy to take in such a condition of dark light. They have to do some extraordinary skills over here in this middle. And we are completed first innings and moving towards the second innings of this particular match between those teams. That is Alif Star Musodi Tiksa BSC Bapai 30 completed first innings 43. They have built and given target of 43 runs to BSC Bapai 30. Yes, now the time to change in microphone. I'd like to call Mr. Darwin Michael to analyze second innings of this match between those teams. Thank you. Thank you very much, Preetham Kumbala. രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അവസാന മത്സരം ആദ്യ ദിന ഷെഡ്യൂൾ MPL സീസൺ 10 അതിഗംഭീരമായി കാണികളുടെ മികച്ച പിന്തുണയോടുകൂടി ആദ്യ ദിനം ആവേശഭരിതമായ അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് BSC ബപ്പായത്ത ടീം അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡിയും ആദ്യ വിജയം തേടി ഇറങ്ങുന്ന അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡി വിജയ വഴിയിലേക്ക് ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ മറുഭാഗത്ത് കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്ന BSC ബപ്പായ തൊട്ടി വിജയം കൊണ്ട് മടങ്ങുക എന്നത് തീർച്ചയായും ആദ്യ ദിനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ ദിനത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും കോൺഫിഡൻറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു രംഗം തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ടീമുകളും വിജയത്തോടുകൂടി മടങ്ങുക എന്ന കഠിന ശ്രമവുമായി അവസാന ഇന്നിങ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആവേശകരമായ ഒരു പോരാട്ടം, പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ തണുത്തുറഞ്ഞ രാത്രിയിൽ മണ്ണൻകുഴിയിൽ. "43 runs of target in 6 overs of next innings for team BSC Bapai Toti in front of Alif Star Musodi. മികച്ച പെർഫോമൻസുകൾ ടൂർണമെന്റിലുടനീളം കാഴ്ചവെക്കുന്നെങ്കിലും വിജയം അല്പം അന്യം നിൽക്കുന്നൊരു ടീമായ അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡി ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ മാറിയെങ്കിൽ താരതമ്യേന പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു ടോട്ടലുമായി ചെമ്മി ഒസങ്കടിയുടെ ബാറ്റിംഗ് മികവിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ കത്തിക്കയറിയ ടീം ഒടുവിൽ റിയാസ് മാരിയയുടെ കിഡിലൻ ഓവർ ബാറ്റേഴ്സിനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിക്കൊണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ തുടരെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇന്നിങ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 43 റൺസിൻ്റെ താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ടൊരു സ്കോർ ബോർഡുമായി രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിങ്സിലേക്ക് BSC ബപ്പായി തൊട്ടി ഇറങ്ങിയാണ്. വാം വെൽക്കം ടു ദ സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്പർ 1 of MPL 2026 10th edition. It is the openers are all set. Others just promoted in the order. As the opener for the team BSC Bapai Toti along with Fayaz. Fayaz Gori, the man on strike. On the other side, Ranjit comes and this time plays it really well over the infield and no chance for the field. A wonderful way the man Fayaz Gori start the things in style with the first ball boundary. Such an excellent way the man clears the infield.
grabs it with a sweep shot and perfectly maintain the rhythm. What a way to start. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറി അടിച്ചുകൊണ്ട് ഫയാസ് ഗോരി എന്ന അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള കളിക്കാരൻ. മറുഭാഗത്ത് മറ്റൊരു മാംഗ്ലൂർ പ്ലെയർ രഞ്ജിത്ത്, who was coming with the over number 1. First ball boundary, always bringing the confidence while chasing the target. Here comes the ball number 2. Trying the similar range of action towards the onside region, but this time even quicker one from the bowler. Oh man. It was recalled. Well, that was a dot ball. Perfectly loaded one from Ranjit. Completely not giving any kind of room for the batter to freeze the arm. Excellent, exceptional. Stars are fighting in front of icon versus icon is a competition. That's such a speedy one, but gone way outside from the gate line. The bat is crossed between the wicket. Wide +1 in important runs for the team. BSC Bapai 30. What a way the batting order was shuffling by the team. BSC Bapai 30. Others sending in the top order and giving a free license, I believe. Oh, trying for a fancy reverse stroke straight away by others. And he just gets a connection but not convert into many. Just crossing between the wicket by the batters of BSC Bapai 30. Off the mark by others Periodica with that single. 7 on card for the team. Here comes the ball number 4. Big swing from the batter Fayaz Gori, but there is no connection on this occasion. This is perfectly persecuted rolling delivery right on the target. It was keeps away from the off stump. A good tactics that works. Ranjit once again. Into the reverse action by the man Fayaz. Oh, will be a trouble or what? No. Others Periodica who just escaped. When it comes down the track enough away, and it was tracked in the end, and others gets a lifeline. One more ball to go from the over. 5 balls passed in an excellent way. 7 runs on card. Here comes the last ball of the over number 1. A target of 43 runs in 6 overs. Very well approached in the very first ball by Fayaz Gori. After that, what a comeback, a tremendous comeback. Shot straight down the ground, fielder there in the deep and comes and gathered nicely, just allowed a single travel. It will be a casual effort and going for second. Unforced error from the fielding side that conceded another run for the team in an important competition. End of the over number 1 with 9 runs. 9 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 34 required from 30 balls of cricket. Now looks all easy in the hands of BSC Bapai 30. They started superbly in front of the prime bowler. Directed superbly, especially the man Fayaz, who had just created a boundary that gives a good confidential start for the team BSC to chase the target. They were keeping the big guns in the order down and send others on the top. That's another tactical brilliance from the team coach. Munna Bapai 30 have a lot of experience. Chemi Posot. The man Chemi coming into the attack.
Straight to the fielder. Easy single for the batters between the wicket. Others rotate the strike in the very first ball of Chemio Sangadi. Oh, he's ready for the all-round performance. Chemi was brilliant in the previous innings as a batter. And they were searching for the breakthrough. They need some wickets to coming back in the track of the contest. Lovely stroke up in the sky. There is no man in that region. It is all done and dust by the man. Fayaz Gori, such a big strike. That's a fascinating hit from Fayaz. Going absolutely outside of the ground for 6 runs. Such a serious hit by a serious star. Now the asking run rate comes under 6. 27 required from 28 ball. How well the man treated that one for a 6 runs. Tried again, but this time right in the channel. That execute by Chemio Sangadi. The man have a lot of experience in Mannamkuzhi as a bowler, as a batter. Back with a dot ball by Chemi. Oh, that is another big one high in the sky and landed safely. That not giving any kind of chance for the fielder to react. Absolutely a well-coordinated one from Fayaz Gori, who just making the innings in style. Shot of authority. The man just making the signature shot here in Mannamkuzhi to raise us the scorecard of BSC. Oh, he's done well. That is an early swing from the bat of Fayaz. Ball comes a bit of later. Reduce the pace completely off by Chemio Sangadi on this occasion. But a safe single by the batters between the wicket in form of a leg bite. What mind? The count runs. 21 on card. Last ball of the over. Other swings right in the channel once again by Chemio Sangadi. Little bit expensive in this contest. End of the over. 2 done. 21 without loss. Wicket നഷ്ടമില്ലാതെ 21 റൺസുകളുമായി ശക്തമായ അടിത്തറയിട്ടുകൊണ്ട് BSC ബപ്പായ തൊട്ടി. ഇനി 22 റൺസുകൾ. 22 required from 24 balls. ഒരു താക്കോൽ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു താക്കോൽ, വണ്ടിയുടെ താക്കോലല്ല, ഒരു ഡോറിൻ്റെ താക്കോൽ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻട്രി ബോക്സിൽ ഒരെണ്ണം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് കം ആൻഡ് കളക്ട്. Ranjit coming into the attack with his second over. Over number 3 begins. Need a wicket. That is strategy, prime strategy from the bowling side of Alif Star. He is done brilliantly. Beautifully start on this occasion by Ranjit in front of Fayaz Gori. Excellent way, clutching the accelerator by Fayaz. He's on 16. Premeditated for a slip shot. Moving between the wicket by the batters. Another run in form of by. 22 on card and 22 balls, 21 runs. Looks under the custody in keeping all 10 wickets in hands. Trying to open the face of the bat, but very well in the popping crease by the batter. It was completely beaten. Ranjit, who is electric, who can changing the bowling precision and restricting the batter really well. Here comes again. Lofted shot over the infield. Man in the outfield takes a single. Others is giving a very good supportive role on the other side as a standby along with Fayaz. Partnership is building. Watchfully gives a treatment by Fayaz Gori. Such an easy way they were making the innings.
and wonderfully keeping the wickets in hand. On the other side, all the way, the bowlers are working. They were working for the breakthrough. Others beats it. Completely beats it. That's the beauty of a delivery. Excellent over comes to one, and just 3 came from the over of Ranjit. 24 on card after 3. 19 required from 18 for BSC Bapai Toti to register at another victory. Selected Mannamkuzhi, Hanif Umanga, one man army. 2020 തുടങ്ങിയ ജേണി സംഘാടന മികവിലേക്ക് 26 വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹനീഫ് ഉമങ്ങയുടെ 10ാമത് MPL മണ്ണങ്കുഴി പ്രീമിയർ ലീഗ്. ഷമീം സമാൻ കൽപ്പാറയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ കൊണ്ട് അതിഗംഭീരമായി മുന്നേറുന്ന ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ആധികാരികമായി എ ഗ്രൂപ്പിലെ മത്സരങ്ങൾ 9ാമത്തെ മത്സരം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക്. 19 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ് 18 പന്തിൽ നിന്ന് BSC ബപ്പായി തൊട്ടിക്ക് അലിഫ് സ്റ്റാർ മുസോഡിക്കെതിരെ. ടൂർണമെന്റിന്റെ 2ാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൃത്യം 2:45 മുതൽ ആക്ഷൻ പാക്ഡ് ബി ഗ്രൂപ്പ് സജീവമാകും. പുതിയ 7 ടീമുകൾ പുത്തൻ പോരാട്ട വീര്യവുമായി കാണികളെ കോരിത്തെരിപ്പിക്കാൻ കളിക്കാരിലേക്ക് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആവേശം വീണ്ടും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ 7 പുതിയ ടീമുകൾ ഇന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി വീണ്ടും കളിക്കളത്തെ ആവേശഭരിതമാക്കാൻ തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. Nicely implementing a cutter of a delivery from Imtiaz. Man have a lot of experience, regularly playing above 40 cricket in Kasaragod district by Imtiaz. 28 on card by the team. Nicely up on the face of the bat, through the offside by Adarsh Periodika, looking for second. It will be an easy one. Yes, they were ready to 3, but others were settled there on the strike run while complete 2 runs. That's enough for the team BSC Bapai Toti, driving the game safely by the openers. Fayaz is the driver, and in the moving bus, Adarsh is travelling comfortably. Absolutely a good piece of a delivery by Inti Posot on this occasion. A dot ball in the middle. That gives a little bit to cherish, and nicely plays. Watchfully gives the treatment. First run completed. Fayaz calls for second, and others respond really well. Important way the partnership is moving. Unbreakable opening combo of BSC Bapai Toti. The change in the opening that works for the team BSC in this scenario. They were finding the runs in the late night and chasing their dream target. Absolutely well. What a cricket by Adarsh Periodika, the young man who just showcasing the mature. A mature cricket that showcasing by youngster from Kasaragod, Adarsh. Such a way, the man stealing the show along with Fayaz Gori. A little bit dancing shoes by Fayaz Gori in front of the wicket, completely missed on this occasion. But anyway, there were gets cross between the wicket in form of bye. That's the end of the over. 4 overs done. 34 without losing any wicket. 9 runs in the Duram. 9 required from 12. Twelve balls of cricket, 9 required. Looks easy and simple, right in the custody of BSC Bapai Toti. Alif Star need to fight hard to bring the first victory. Very well settled openers right in the middle.
Not giving any kind of chance, that's very important. Giving the right treatment while watching the ball. A very careful cricket, that's showcasing by the openers. Fayaz, who was start with a fearless blade, but in the end joins with others. And together they were making a party tonight for BSC Bapayatoti. Here comes the bowler, Nizar coming. Oh man, there will be close. Oh, go on the first wicket. Fayaz Gori was outstanding so far. In this time, Nizar picks up the wicket. What a breakthrough it was. Have a look at that one. Completely missed it by Fayaz Gori. It just moves a bit from popping crease. Have a look at the energy. Inti Enni Posod, the wicket keeper, done and does the job in style and produce a wicket number 1. But what a steal of a show that's set by Fayaz in the top order for the team BSC. Received a claps and support from the dugout. Absolutely well deserved. What an innings played by Fayaz. 34 for the loss of 1. 9 required from 11. New batter comes in. It is Shabir BSC Bapayatoti, always coming in at number 3 for the team in all the matches. Straight away on strikers end. Nizar how planning to coming back. The action for the team, Alif Star Mosodi. Chemi Osangadi is seriously involved to set the fielders. Captain Des setting the right fielders in the right position after getting 1 wicket. That bringing the confident level high and handsome way for the team Alif Star. 11-9. Have a look at the field placement. It looks very attacking way set. Sip shot. Fielder there in that region. Easily works by Shabir Bapayatoti. Takes a single and off the mark. Moves on 35. Just 8 runs away. Another victory is awaiting for the team BSC. But need a miraculous miracle on the other side. Through the onside. Takes it that one nicely by Adarsh Periodika. He's playing a gem of an innings here. How well the man timing, how well the man planning it, and how well the man realizing the field placement and breaking and filling some runs. This is extraordinary cricket by the top order. Adarsh Periodika. The name you can trust in runnable situation. Absolutely well proving the man with a quality stroke. 37. 6 runs away the victory. Others once again perfectly placed a single. Intelligent batting, using brain and playing cricket. Others in the top order for the BSC. Things are simple. 8 balls of luxury, 5 runs of target. In a reverse action, Chemi stops it nicely in front of the circle, but takes a single. Every run is very valuable, and every run will makes a target alive for the team BSC Bapayatoti. Last ball of the over. Have a look at the control behind that stroke once again by others. Lot of maturity showcasing by the youngster from Periodica. End of the over, number 5. 40 on card. 36 runs came from the over. Now 3 required to win this match. 3 required to seal the deal of this game for the team BSC Bapayatoti. Only 1 wicket lost. The wicket of Fayaz Gori. But how well the man Adarsh and Shabir, they were controlling the things. Who will be the last over bowler?
It is experience Ishaq Machambadi, the all-rounder cricketer coming. ആദ്യ ദിനം അതിൻ്റെ അവസാന ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിരവധി വ്യക്തികളോട് നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിനെ മനോഹരമാക്കിയ സ്പോൺസേഴ്സ്. ആദ്യ ദിനം അതിഗംഭീരമായി അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പിന്തുണ, ഷമീം, സമാൻ, കൽപ്പാറ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ സ്പോൺസേഴ്സും ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിനെ കളർഫുൾ ആക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ആൻഡ് ദി ഓഡിയൻസ്, യു ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിഫൈഡ്. The audience makes this tournament colorful. Now the scores are level on the ground. Missed it over there. It's on the body. A dot ball in the middle. ഏത് പന്തും അവസാന പന്താകാം. That's it. Nicely bats on it by BSC Bapai Thoti Shabir, captain. And that's a victory for the team. BSC Bapai Thoti won by 6 wickets in this ease encounter against Alif Star Musodi. Congratulations BSC Bapai Thoti. What a victory for the team. A perfect bowling display that showcased with a marvelous way by the team. And they were comfortably chased down the targets. BSC have registered their second victory out of 3 matches. Many congratulations. And we are moving to the presentation of the post-match. It was an easy game for the team BSC. They were chased the target comfortably, a 43 runs of target, easily chased down by the team BSC Bapai Thoti against Alif Star Musodi. And the player of the match award goes to, with an excellent all-round performance of Fayaz Gori, elected as a player of the match award from BSC. And welcome Fayaz Gori, the icon player, to receive the player of the match award. I request Sulaiman sir to give away the player of the match award. Kindly requesting to Sulaiman to give away the player of the match award. Yes, Fayaz Gori is ready to receive it. What a performance. Receiving yet another player of the match award by the icon player of BSC Bapai Thoti. What a stellar performance by a staggering genius from Mangalore, who just generate another victory for BSC. Congratulations, many congratulations, Fayaz Gori and BSC Bapai Thoti. What an incredible day of cricket we have witnessed here. A cricket at its level best here in Mannamkuzhi. Selected Mannamkuzhi's MPL 2026. With this presentation, the day number 1 comes to an end. Yes, we can see Fayaz is receiving the award. And also, Fayaz, stay there. You have a cash award of 1,000 that's sponsored by Tahir Dubai. Thank you, Tahir Dubai, for making this event colorful with your wonderful presentation. And it will be given away by Munna BSC. And that's it from the presentation. That's it from the day number 1. And what a wonderful day of cricket concluded. And that's it from all 9 matches of the day number 1. See you in the afternoon with B group matches. Another exciting encounter is coming up. Stay tuned in the next afternoon. Bye-bye. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello,
Welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.